to kind of put all those updates out there about her life. What is the latest that you can tell us about this coming in? So there are three major points which we have just heard from our sources in just trying to make sure that how Aaftab, even after killing Shraddha, was trying to lead a normal life and was trying to make everyone of people around him and people who knew him and Shraddha that everything was fine. And this first point which you just raised is absolutely apt, that he's used the accounts of Shraddha to make sure that Shraddha was there, even though she was dead long time back. He used the social media accounts of Shraddha to make sure that she was alive and she was there around everyone. The second major point, which is more important to realize, is that Aaftab had also got into relationship with another girl. Now, this is the thing which we are getting to hear from our sources. And third is that even after murdering Shraddha, he led a normal life. He was trying to get in touch with most of his other friends in Delhi. So yes, these are the three major points which we have come across from our sources in realizing that how Aaftab led a normal life even after committing this heinous, brutal and gory act. Yes, back to you. Right, Piyush, stay with us. We're also going to be showing our viewers that particular reaction, rather conversation that Shraddha's friend Rajat Shukla had with Arnab Goswami. Let's listen in to what he had to say. When were you last in touch with her? I can hear you very well. What can you tell us about Shraddha? Were you in touch with her? Did you know of her relationship with Aftab? Yeah. Shraddha Walkar used to be a very active girl during our college days. We were doing BMM together. And this is surprising. I mean, a girl who was very active, we used to do theatre together. And few days later, we see a sudden change in her behavior. This was towards the end of our graduation 2018. And we were surprised that why is Shraddha, I mean, where's the spark that she had? And, 2018 was last when we saw a sudden change in her. And we got to know that she got into a secret relationship with Aaftab in the year 2018. And in 2019 was when she made it official, announced to all our friends that she is in a relationship with him, and it was like a lovely relationship as shown in the start. But then it was informed to us by Shraddha herself that this boy Aftab is being violent to her. He beats her up. She's mentally affected. But she is in love, and that love is maybe a reason how did she share this to sacrifice her mental health, and she's staying there. She used to talk to a very close friend of her, and she told us, she was not revealing it to everybody, of course, because it's a personal issue. But thoroughly, this thing can lead to such a heinous crime is something of a concern now. Yeah, obviously. When was the last contact you or any of your friends had with her? It was during the time when Aftab and Shraddha had decided that they are going to shift to Delhi. And the reason that was informed to us was that she wanted to, both of them were looking out for a job change, and they were wanting to settle there in Delhi and do a job there. However, right after Shraddha shifted there, we lost touch. Her brother tried to contact her. We tried to contact her, but there was no signs of contact. And is the reason we started, finding her. She was all lost. And months after, we get to know that any contact with Aftab. Did any of you or your friends meet Aftab, so we can get a sense of what this person is like? Yeah. A lot of my friends met Aftab, and Aftab used to be a poker face. By seeing him, you won't be able to judge that he can be such a criminal. This is still a question that it was just Aftab in the murder case or someone else too, because
it seems impossible for me to digest that one person, Aaftab, who was not that very strong and Shraddha was not that very weak that Shraddha could not retaliate in the murder and she cannot shout or something. This seems like a very pre-planned murder and a big one. Well, in fact, we were showing you visuals earlier of the fact that Aaftab was in that police station. Earlier, my colleague Priyanka Sharma did file a report from there. Let's listen in. ऐसी खबर हम आपको बताएंगे, आप मेरे पीछे देखेंगे, आपको मैं दिखा, ये देखिए ये आफ्ताब है। तो आपने देखा मेहरौली थाने में है और यहाँ पर ये आफ्ताब, हाँ सॉरी आप सर से बात, तो आपने देखी वो तस्वीरें किस तरह से वो आफ्ताब अभी जेल के अंदर हैं और यही वो शख्सियत है जिसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बर्बरता की। एक ऐसी खबर हम आपको बताएंगे, आप मेरे पीछे देखेंगे, आपको मैं दिखा, ये देखिए ये आफ्ताब है। तो आपने देखा मेहरौली थाने में है और यहाँ पर ये आफ्ताब, हाँ सॉरी आप सर से बात, तो आपने देखी वो तस्वीरें किस तरह से वो आफ्ताब अभी जेल के अंदर हैं और यही वो शख्सियत है जिसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बर्बरता की। Well, we also have Piyush Ori who's continued to track this particular story for us. Piyush, just to give us a sense of, the chain of sequence of events, because we do understand that this is a 6-month-old case which the Mehroli police was able to crack on one hand. But on the other hand, if you could talk to us about how did these two come in contact? All right, we'll try connecting with Piyush Ori to give us the latest on that. But like my colleague Priyanka Sharma was also reporting from the particular police station where, of course, Aaftab has been put in that particular lockup. And on the other hand, of course, horrific details are continuing to emerge after the Delhi police did arrest Aaftab for killing his 28-year-old live-in partner, Shraddha, who met on a dating app while working in Mumbai. Of course, there are many details that are emerging and coming, or coming on social media as well regarding the incident. In fact, we're also understanding that the accused, that is Aaftab Amin Poonawalla, had Googled method of blood cleaning and read about human anatomy after murdering his live-in partner Shraddha. We'll of course continue to track that particular story right here on Republic. Now, horrific details. Well, moving on, Republic spoke to the secretary of the Mumbai residence of Aaftab. Now, let's listen in to what he had to say. कितने दिनों से परिवार जो है वो गायब है? एक्चुअली वो यहीं पे रहते थे। वो लड़का तो काफ़ी दिनों से यहाँ नहीं है, लेकिन उसके मम्मी पापा जो है ना पिछले 15 दिन से यहाँ से दूसरी जगह गए और जो फ्लैट है वो रेंट पे दे चुके हैं। कहाँ गए हैं, कुछ अता पता? बॉम्बे साइड में कहीं गए हैं, मतलब काशी मीरा साइड में, लेकिन अब पूरा परफेक्ट आइडिया नहीं है कि उनका एड्रेस पता कुछ दिए नहीं वो। एक बात बताइए कि आप कितने सालों से इस परिवार को जानते हैं? मैं तो फिलहाल मेरे को 10 से 11 साल हो गया, तब से जानता हूँ। वो लोग 15 ईयर से पहले से रह रहे हैं। ऐसा इन लोगों का व्यवहार रहा है, चाहे वो परिवार में पिता की बात करें या भाई बहन की बात करें या उनकी माँ? नहीं, उसके मम्मी पापा तो एकदम उन लोग का अच्छा है, एकदम रॉयल आदमी थे। बाकी वो लड़के लोग थोड़े थे मतलब, लेकिन फिलहाल समझो लॉकडाउन के पहले वो लोग रहते थे यहाँ पे, लेकिन घर में आपस में लड़ते झगड़ते थे। लेकिन उसके बाद से तो वो बंदा यहाँ आया ही नहीं, कभी कभार आता जाता है, बाकी यहाँ रहता नहीं था वो। तो आफ्ताब पहले से ही नेचर में अग्रेसिव था? हाँ, थोड़ा था, वो लड़का था, थोड़ा झगड़ालू टाइप थोड़ा था। लड़ाई झगड़ा होता था घर में? नहीं, घर में तो सुनने में आता था, बट किस मसले में वो लोग लड़ रहे हैं ये आइडिया नहीं। बाकी हम लोग को सुनने में आता था, कभी वीकली एक आध बार लड़ाई झगड़ा होते रहता था उसका। तो पहले से उसका स्वभाव जो है वो लड़ाई झगड़े का, झगड़ालू नेचर क्या है ना। वो लोग बिल्डिंग में किसी से बातचीत ही नहीं करते थे, अपने में ही रहते थे। कभी बिल्डिंग में आना हुआ, कहीं कुछ हुआ, ऐसा अपने में ही रहते थे हमेशा, ज़्यादा किसी से लगाव नहीं। जबकि उसके मम्मी पापा वो लोग का सबसे अच्छा बातचीत, उठना बैठना सबसे अच्छा था वो। तो एक बात बताइए, जिस प्रकार की घटना हुई, कभी आपको उसके व्यवहार से ऐसा शक हुआ कि वो इस प्रकार की कृति? हम लोग को बिल्कुल शौक लगा ये सुन के भी कि ये मतलब इतनी अच्छी फैमिली थी और इस तरह कैसे हो सकता है। बिल्कुल लड़का लेकिन पहले से ही थोड़ा वायलेंट नेचर का था। हाँ, यहाँ पर झगड़ा फसाद कर? नहीं, बिल्डिंग में कभी कुछ नहीं किया। सोसाइटी में गलत भी नहीं किया, किसी से झगड़ा भी नहीं किया। फादर थे वो भी इधर पे खुद कमेटी में हमारे मेंबर है,
लेकिन वो भी कभी ऐसा नहीं, हमेशा हर वक्त आगे आते थे काम के लिए, कुछ भी काम होता तो आगे आके काम करते थे, वो कभी ऐसा किए नहीं। और लड़का उनका कभी नीचे आता भी नहीं था और ज़्यादा किसी से मिक्स होता भी नहीं था, वो अपने में ही रहता था। हाँ, अकेला अकेला रहने का स्वभाव था। हाँ, शांत स्वभाव का था एकदम, बोले तो अपने में रहता था, किसी से कुछ लस्ता का ही नहीं, लगाव था ही नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर वो ये सारी चीजें वो कर रहा था। कभी वही चीज तो अभी हम लोग भी सुनने के बाद एकदम शॉक लगा कि ऐसा कैसा कर गया वो। Well, where Piyush Hori is, of course, continuing to track this particular story for us. Piyush, I was asking you earlier as well, if you could take us through the sequence of events as well, because we understand the Mehrauli police on one hand has been able to crack a 6-month-old case. But if you could talk to us about how Aaftab and Shraddha met and, of course, the sequence that followed after that. So what we've been told is that, they first met in Mumbai, through a dating app, and following which they also met in a workplace. Now in Mumbai, as rightly been pointed out by my colleague Sandeep in Mumbai of having interviews, that they did not get on well with each other. And plus, because Shraddha's parents were not very happy with this relationship, what they did was they came to Delhi. Now in Delhi, at least there are 3 important dates that needs to be remembered. 15th May. 15th May is the date when they rented a flat in Chhatarpur, Mehrauli, where they lived and where apparently Aftab strangulated Shraddha to death and also cut her body pieces and stored it in a freezer. On 18th May, actually, this fateful incident happened where Aftab strangulated Shraddha and murdered her. Now, another date is that November. November is the date when actually Shraddha's father came from Mumbai to Delhi and filed a complaint of his daughter being missing. And 12th November is the date when Aftab was finally and formally arrested by Delhi police. So these are the 3 important events that needs to be considered as we are still investigating the several layers that are involved in this case. Yes, back to you in the studio. Right, Piyush, of course, as you're pointing out as well, on the other hand, we understand that, the mindset of Aaftab, because, like yesterday, even Republic was on the ground covering that particular story, where we understand that he was staying in the same room after murdering Shraddha. You can definitely think of it, Nivedna, what kind of monstrous mindset would Aaftab be having. Now, as of now, what we've been told by our sources is that even though Aftab was aggressive in nature, he never had a criminal record. But what we are getting to hear from the incidents of how he actually committed the crime does make us realize that, this person did have a kind of criminal mindset. So there are again 3 major points which I would just like to tell you about how actually Aftab actually committed this murder. First, he got this example of committing this heinous crime through a OTT platform called Dexter, from where he understood that how a body after being murdered can be cut into pieces and then dumped. So this is the idea from where he got this idea from. Second is that he also got a freezer, he also purchased a freezer, he also purchased a chemical solution to make sure that all the evidences related to Shraddha's murder were eliminated. So you can understand that how shrewdly he committed this act. And finally, he deliberately, and this is where, one can understand that this can also be a pre-planned murder. He was staying in a flat that was just 15 minutes away from a forest area. So was this a flat that was being rented by him 3 days in advance to Shraddha's murder was done pre-planned, or it was all spontaneous? So all these aspects needs to be investigated. But in cutting this long story short, there is a criminal mindset which we can see as far as Aftab's behavior is concerned and the way he committed this entire murder. Yes, back to you. Right, Piyush, many thanks for joining us there. And as we had highlighted in that debate with our editor-in-chief Arnab Goswami yesterday, on the debate last night, it's the remarkable lack of outrage that we are seeing in the media particularly. And in a major update coming in now in the Shraddha murder case, as investigations continue,
Aaftab started dating after the murder. Grisly, cruel and callous, Aaftab used the same app to get in touch. And as the horrific details of the murder send shockwaves across the nation still reeling under their impact, we take a look at some major updates coming in now. Aaftab is the criminal who kept the body parts of his live-in partner inside a refrigerator that he had bought for the very purpose. A gruesome, grisly killing which has shocked the entire nation. And now reports suggest that he resumed dating other women after the murder. And he used the same app that he had used to connect to Shraddha, the 26-year-old whom he murdered and then cut into pieces and kept in a refrigerator in his room, the room in which he slept, and for 18 days. And various body parts have been scattered in various green areas across the city of Delhi, across the national capital. The two had met in Mumbai. And the murder of Shraddha Walker and the horrific details of her murder have sent shockwaves across the nation. Let's take a look at the shocking details mentioned in the complaint. The murder of 26-year-old Shraddha Walker, allegedly by her live-in partner Aaftab Poonawalla, has sent shockwaves across the country. Why did the 28-year-old chef murder his girlfriend? How was the relationship between the two? How did it all start? The entire nation is intrigued by the case. As per the investigators, Shraddha and Aaftab met while working in a Mumbai call center in 2018 and soon started dating. The two started living together in 2019 against her parents' consent. Shraddha's father has alleged that she broke off contact with the family. The couple of times Shraddha spoke with her father, she hinted at an abusive relationship. Initial investigation also revealed that the two went on a vacation to Himachal before moving to Delhi. Post-Himachal vacation, they stayed in a hotel in Paharganj and moved to the Mehrauli flat just 3 days before the murder. As per the police, on May 18th, Shraddha and Aaftab had a fight after Shraddha pressurized Aaftab to get married. From what has come in investigation so far, what we got to know is that night, that particular day, what happened was that they had a very heated debate, and the boy, tried to strangulate the girl with his hands, and he was successful in doing so, and thereafter he tried to dispose of the body. While speaking to Republic TV, the neighbors of Shraddha and Aaftab claimed that they heard arguments. एक दो बार मेरी बेटी ने झगड़ा सुना है कि झगड़े की आवाज़ आ रही है, और एक दो बार मेरी सास ने भी चिल्लाने की, झगड़े की आवाज़ वगैरह सुनी थी। पुलिस ने क्या आप लोगों से कोई पूछताछ की? आपको कब पता लगा कि यहाँ पर हत्या हो गई है, वो भी इतनी बेरहमी से मार दिया गया? हमें अभी 3 दिन पहले ही पता लगा है, जब यहाँ कम से कम 25-30 पुलिस वाले एक साथ आए हैं और पूरी बिल्डिंग को घेरा है। So is this a case of a relationship gone sour, or there is more to the crime than what meets the eye? Bureau Report, Republic TV. Time now for a short break, but on the other side, Delhi's Patiala House Court to pronounce verdict on Jacqueline Fernandez's interim bail plea in the 200 crore rupees PMLA case against her. Prime Minister attends G20 summit. Multiple bilaterals lined up on the sidelines of the G20. Amity has been ranked India's #1 not-for-profit private university for 10 years, with top 10 ranked institutions in management, engineering, biotech, law, masscom, telecom, hospitality, fashion and more. Yet another top ranking for Amity University. Here are the protesters who are getting very much violent, and they are clearly demanding to withdraw the case that has been registered against Jitendra Award.
The wife of Jitendra Award, she is now entering Mumbra police station, and she has also clearly mentioned it's a fake case. Aaftab, the man who has brutally butchered Shraddha, was seen covering his face after that brutal act. I'm just reporting from the forest area where the body pieces of Shraddha, who was killed by her lover, Aftab, was dumped. 18th May, reportedly, Aftab strangulated Shraddha to death, stored her body for a few days, and later he reportedly cut her into 35 pieces, stored it in a carton box, dumped it in several parts of this large forest area of Maroli Chhatarpur Aravali forest. Where the fire has engulfed several houses. This fire blaze took place today early in the morning. District administration along with the Jammu and Kashmir police, they are trying to douse the fire. 155 kgs of drugs were seized by police in Punjab's Pathankot. मौके पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर ब्लास्ट किया गया था। इन पटरियों के नीचे अब जो अधिकारी जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। हर छोटे बड़े पहलू पर जांच जो है वो चल रही है। There are the protesters and the supporters of Jitendra Award who have blocked the road. Not only this, but also the tires that was burned in the roads of Mumbra, where the supporters and the workers of Jitendra Award, they have been present right outside the police station where the FIR that has been registered. FIR that has been registered against NCP leader Jitendra Award. He huddled the woman's shoulder and also said that why are you standing in the middle, just move ahead. After which she went to file a complaint in Mumbra police station. Where a molestation case has been filed against Jitendra Award, and his supporters resorted to violence as well. Priyank Kharge has now issued an open statement to all the BJP cadres there, stating that no matter what, we will not let any BJP leaders to set foot into the constituency. Here are the protesters who are getting very much violent, and they are clearly demanding to withdraw the case that has been registered against Jitendra Award. The wife of Jitendra Award, she is now entering Mumbra police station, and she has also clearly mentioned it's a fake case. You're watching live and breaking here on Republic. Breaking news coming in now. Republic has accessed the FIR copy in the Udaipur explosion case. The explosion was carried out for the purpose of spreading terror and causing loss to public property. There's no doubt about that, as the FIR copy states in detail various aspects of the complaint that has been lodged. Amarjeet to joining us now with all the latest details. Amarjeet, what seems, give us more details about the FIR copy that has been lodged. Various recoveries also have been made at the site. Many leads that the police are following. But first, the FIR copy that you have with you, Republic has with it. देखिए, एक्सक्लूसिवली हमारे पास रिपब्लिक के हाथ एफआईआर की कॉपी लगी है। उस एफआईआर में साफ साफ लिखा गया है कि आतंक फैलाने और जनहानि के उद्देश्य से ये विस्फोट किया गया था और देश की सुरक्षा को खतरे में डालकर आतंक फैलाने की कोशिश की गई थी, यानी कि टेरर फैलाने की कोशिश जो थी वो उदयपुर में की गई थी। और इस तरीके की एफआईआर जो है उसमें बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। रेलवे के अलग अलग धाराओं को इसमें मेंशन किया गया है, अलग अलग धाराओं में इस केस को दर्ज किया गया है। पावर ब्लास्टिंग का चूंकि ये केस था, दूसरी तरफ एनआईए की टीम, एनएसजी की टीम, गुजरात एटीएस की टीम, राजस्थान एटीएस की टीम, तमाम टीमें यहाँ उदयपुर में मौजूद हैं और हर अलग अलग एंगल से जाँच कर रही है। कई अलग अलग सैंपल्स जो थे कल वो जुटाए गए थे मौके से, और उसके बाद में ये जानने की कोशिश की गई थी कि आखिर इन साजिश के पीछे, बारूदी साजिश के पीछे आखिर है कौन, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें सामने आई है निकल के,
उस हर एंगल पर जांच करने का काम जो है पुलिस, एनएसजी, एटीएस, एनआईए तमाम जो एजेंसियां हैं वो कर रही हैं। जांच एजेंसियां अब ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि क्या टारगेट महज पुल था या फिर वो ट्रेन और ट्रेन में बैठे हुए यात्री थे जिनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि इस एफआईआर का अगर जिक्र करें तो इसमें साफ साफ लिखा है कि देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डालकर आतंक फैलाने की कोशिश और आतंक फैलाने की जनहानि के उद्देश्य से ये पावर ब्लास्ट किया गया था, जिसमें साफ साफ जनहानि का उद्देश्य जो है वो मेंशन कर दिया गया है। तो इससे साफ समझ में आता है, इससे समझ सकते हैं कि एक ये पावर ब्लास्ट जो था वो सिर्फ और सिर्फ इंटेंशनली उस ट्रेन को टारगेट करने के लिए यूज किया गया था, जिस ट्रेन में लोग बैठे हुए थे। करीब 660 के करीब यात्री उस वक्त उस ट्रेन में थे। अगर वो ट्रेन सही समय पर गुजर जाती और उसे रोका नहीं जाता तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी जनहानि होती और किस तरीके का ये हादसा होता। फिलहाल जिस तरीके की एफआईआर में जिक्र है उसी तरीके से उसी कह सकते हैं कि उसी उद्देश्य के साथ में जांच एजेंसियां जो हैं वो काम कर रही हैं और जांच एजेंसियां लगातार उन्हीं इनपुट्स को खंगालने में जुटी हुई हैं जिन इनपुट्स के आधार पर ये टारगेट किया गया कि इस ट्रेन और इस पुल को किस तरीके से धराशायी करना है। जिस तरीके से डेटोनेटर की छड़ें, वायरिंग प्रॉपर एक काम किया गया था। सूत्र हमारे ये भी कहते हैं कि जिस तरीके की वायरिंग हुई थी इस विस्फोट को वहाँ पे जमाने के लिए, जिस तरीके से वहाँ पे वायरिंग मेंशन की गई थी, उस मेंशन को करने में एक मैनुअल व्यक्ति जो होता है, जो बिल्कुल ट्रेंड व्यक्ति होता है, उसका किया धरा ये सारा चीज़ें हैं। क्योंकि जिस तरीके से वायरिंग हुई और वायरिंग होने के बाद में ये सारा काम जो मैनुअल तरीके से होता है वो कोई अनट्रेंड व्यक्ति नहीं कर सकता, ट्रेंड व्यक्ति इस चीज़ को अंजाम दे सकता है। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के अब इनपुट्स जुटाने की और पॉइंट टू पॉइंट लीड लेने की कोशिश में जो है वो एनआईए, राजस्थान की एटीएस, गुजरात की एटीएस और एनएसजी की टीम लगातार कर रही है। दूसरी चीज़ ये है कि इंटेलिजेंस इस चीज़ का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उदयपुर को ही चूज क्यों किया गया, उदयपुर को ही सेलेक्ट क्यों किया गया, उदयपुर में ही ऐसी खास बात क्या थी कि वापस से इस तरीके की घटना को और यहाँ से मैसेज पहुँचाने की। क्या G20 की जो बैठक यहाँ पे होने वाली है दिसंबर में, उसको यहाँ पे टारगेट करना था या एक टेरर फैलाने की कोशिश थी या सिर्फ उदयपुर। So what is the message that the perpetrators of this attempted bombing of the Udaipur line, what was the message that they were attempting that was thwarted by the vigil of locals, by the vigil of our security forces? That is the big question now. Even as multiple angles are being probed, there's no doubt that there is a terror angle. Was there a foreign hand involved? This is a very crucial railway line. Many messages come across. It was inaugurated just a short while back, a few days ago, by the Prime Minister. This area is very sensitive, an area very close to Gujarat, and also were the materials accessed from the mines nearby? Is somebody who's working, are some people who are working in the mines nearby, were they involved in this as well? Many angles there. Amardeep, you keep your eyes on that story. Many thanks for joining us with those details. And 26-year-old Mumbai girl Shraddha is murdered and cut into pieces. India's most grisly crime unravels in Delhi. Citizens demand justice for Shraddha. All the updates and details on this major, shocking story that has shocked the entire nation coming up here in Republic. Stay with us. Also coming up, Delhi's Patiala House Court to pronounce verdict on Jacqueline Fernandez's interim bail in the 200 crore rupees PMLA case. I'm just reporting from the forest area where the body pieces of Shraddha, who was killed by her lover Aaftab, was dumped. 18th May reportedly, Aaftab strangulated Shraddha to death, stored her body for a few days, and later he reportedly cut her into 35 pieces, stored it in a carton box, dumped it in several parts of this large forest area of Maroli Chhatarpur Aravali forest. Where the fire has engulfed several houses. This fire blaze took place today early in the morning. District administration along with the Jammu and Kashmir police, they are trying to douse the fire.
155 kgs of drugs was seized by police in Punjab's Pathankot. मौके पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर ब्लास्ट किया गया था। इन पटरियों के नीचे अब जो अधिकारी जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। हर छोटे बड़े पहलू पर जांच जो है वो चल रही है। There are the protesters and the supporters of Jitendra Award who have blocked the road. Not only this, but also the tires that was burned in the roads of Mumbra, where the supporters and the workers of Jitendra Award, they have been present right outside the police station where the FIR that has been registered. FIR that has been registered against NCP leader Jitendra Award. He huddled the woman's shoulder and also said that why are you standing in the middle, just move ahead. After which she went to file a complaint in Mumbra police station. Where a molestation case has been filed against Jitendra Award, and his supporters resorted to violence as well. Priyank Kharge has now issued an open statement to all the BJP cadres there, stating that no matter what, we will not let any BJP leaders to set foot into the constituency. Here are the protesters who are getting very much violent and they are clearly demanding to withdraw the case that has been registered against Jitendra Award. The wife of Jitendra Award, she is now entering Mumbra police station and she has also clearly mentioned it's a fake case. Aaftab, the man who has brutally butchered Shraddha, was seen covering his face after that brutal act. I'm just reporting from the forest area where the body pieces of Shraddha, who was killed by her lover, Aftab, was dumped. 18th May reportedly, Aftab strangulated Shraddha to death, stored her body for a few days, and later he reportedly cut her into 35 pieces, stored it in a carton box, dumped it in several parts of this large forest area of Mehroli Chhatarpur Aravali forest. Where the fire has engulfed several houses. This fire blaze took place today early in the morning. District administration along with the Jammu and Kashmir police, they are trying to douse the fire. And in other news from across India and the world, Prime Minister Modi arrived at the Apurva Kempinski Hotel in Bali, welcomed by Indonesia's President Joko Widodo as the 17th G20 summit is underway in the island nation. NCP MLA and former Minister Jitendra Awad files anticipatory bail plea in Thane court following FIRs filed against him as a result of recent events. A court in Thane district is scheduled to hear the matter today. And coming up in a short while here in Republic, Delhi's Patiala House Court to pronounce verdict on Jacqueline Fernandez interim bail in the 200 crore rupees PMLA case. PM Modi attends G20 summit, multiple bilaterals lined up on the sidelines of G20. Stay tuned to Republic as we track all the major stories of the day. Where the fire has engulfed several houses. This fire blaze took place today early in the morning. District administration along with the Jammu and Kashmir police, they are trying to douse the fire. 155 kgs of drugs was seized by police in Punjab's Pathankot. मौके पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर ब्लास्ट किया गया था। इन पटरियों के नीचे अब जो अधिकारी जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। हर छोटे बड़े पहलू पर जांच जो है वो चल रही है। There are the protesters and the supporters of Jitendra Award who have blocked the road. Not only this, but also the tires that was burned in the roads of Mumbra, where the supporters and the workers of Jitendra Award, they have been present right outside the police station where the FIR that has been registered.
FIR that has been registered against NCP leader Jitendra Awad. He huddled the woman's shoulder and also said that why are you standing in the middle, just move ahead. After which she went to file a complaint in Mumbra police station. Where a molestation case has been filed against Jitendra Awad, and his supporters resorted to violence as well. Priyank Kharge has now issued an open statement to all the BJP cadres there, stating that no matter what, we will not let any BJP leaders to set foot into the constituency. Here are the protesters who are getting very much violent, and they are clearly demanding to withdraw the case that has been registered against Jitendra Awad. The wife of Jitendra Awad, she is now entering Mumbra police station, and she has also clearly mentioned is a fake case. Aaftab, the man who has brutally butchered Shraddha, was seen covering his face after that brutal act. I'm just reporting from the forest area where the body pieces of Shraddha, who was killed by her lover, Aftab, was dumped. 18th May reportedly, Aftab strangulated Shraddha to death, stored her body for a few days, and later he reportedly cut her into 35 pieces, stored it in a carton box, dumped it in several parts of this large forest area of Maroli Chhatarpur Aravali forest. Where the fire has engulfed several houses. This fire blaze took place today early in the morning. District administration along with the Jammu and Kashmir police, they are trying to douse the fire. 155 kgs of drugs were seized by police in Punjab's Pathankot. मौके पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर ब्लास्ट किया गया था। इन पटरियों के नीचे अब जो अधिकारी जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। हर छोटे बड़े पहलू पर जांच जो है वो चल रही है। There are the protesters and the supporters of Jitendra. And now the top stories we're tracking. Ukrainian President Volodymyr Zelensky calls upcoming G20 summit in Bali the G19 summit in his nightly address, preemptively cutting Russia out of the group. Zelensky commends the United States and China for rejecting any threats of nuclear strikes, adding that everyone understood to whom the words were addressed. President Joe Biden says he absolutely believes there need not be a new Cold War between America and China following a meeting with Chinese President Xi Jinping. Also says, despite China's recent actions, he did not believe there's any imminent attempt on the part of China to invade Taiwan. And coming up, on the other side of a very short break, Prime Minister Modi attends the G20 summit in Bali. Multiple bilaterals lined up on the sidelines. There are the protesters and the supporters of Jitendra Awad who have blocked the road. Not only this, but also the tires that was burned in the roads of Mumbra, where the supporters and the workers of Jitendra Awad, they have been present right outside the police station where the FIR that has been registered. FIR that has been registered against NCP leader Jitendra Awad. He huddled the woman's shoulder and also said that why are you standing in the middle, just move ahead. After which she went to file a complaint in Mumbra police station. Where a molestation case has been filed against Jitendra Awad, and his supporters resorted to violence as well. Priyank Kharge has now issued an open statement to all the BJP cadres there, stating that no matter what, we will not let any BJP leaders to set foot into the constituency. Here are the protesters who are getting very much violent, and they are clearly demanding to withdraw the case that has been registered against Jitendra Awad. The wife of Jitendra Awad, she is now entering Mumbra police station, and she has also clearly mentioned is a fake case. Aaftab, the man who has brutally butchered Shraddha, was seen covering his face after that brutal act.
just reporting from the forest area where the body pieces of Shraddha, who was killed by her lover, Aaftab, was dumped. 18th May reportedly, Aaftab strangulated Shraddha to death, stored her body for few days, and later he reportedly cut her into 35 pieces, stored it in a carton box, dumped it in several parts of this large forest area of Mehrauli Chhatarpur Aravali forest. Where the fire has engulfed several houses. This fire blaze took place today early in the morning. District administration along with the Jammu and Kashmir police, they are trying to douse the fire. 155 kgs of drugs was seized by police in Punjab's Pathankot. मौके पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर ब्लास्ट किया गया था। इन पटरियों के नीचे अब जो अधिकारी जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। हर छोटे बड़े पहलू पर जांच जो है वो चल रही है। There are the protesters and the supporters of Jitendra Award who have blocked the road. Not only this, but also the tires that was burned in the roads of Mumbra, where the supporters and the workers of Jitendra Award, they have been present right outside the police station where the FIR that is. Good morning and welcome. You're watching Live and Breaking on Republic TV. I'm Nupur Talwar Suri. We begin with a look at the top headlines at 10 o'clock this morning. 26-year-old Mumbai girl Shraddha is murdered and cut into pieces. India's most grisly crime unravels in Delhi. Citizens demand justice. More horrific details are now emerging. Aftab kept using social media accounts of Shraddha after the murder. Delhi's Patiala House Court is to pronounce a verdict on the Jacqueline Fernandez's bail plea in the 200 crore PMLA case. First-year student ragged, abused and then thrashed, but the lobby dons silence. The lobby hides again. Prime Minister Modi attends the G20 summit. Multiple bilaterals are lined up on the sidelines of the G20. Now, even as new details emerge in the ghastly crime that was committed in Delhi, we are now given to understand that the Delhi police has also now asked one of the friends of Shraddha Walkar to Delhi for questioning. Now, this is the friend who had actually informed the family of Shraddha about the fact that she wasn't replying to any of his messages. So he's now been asked to come in for questioning by the Delhi police. We are also, of course, given to understand that this is the particular friend who actually went and then asked her brother to start looking for it and informed her father as well of the fact that she had been incommunicado with him for over 2 months. Now, this common friend, of course, has been called for questioning by the police. We are given to understand that he also did know Aaftab Poonawalla well. New details, of course, have been emerging in terms of the murder, of course, and thereafter what happened. We were earlier being told that the police believe that Aaftab, of course, kept social media accounts of Shraddha alive because he feared that he would be suspected to have murdered her if he did not stop her social media presence. So in that sense, obviously, he thought of how to be able to cover up this crime completely. That's what the police say. Now, the police also say, of course, that it was after, it was about 3 days ago when they first went into the house and suspected that the grisly crime had been committed in this particular flat. Do remember that the couple had just moved into the flat 3 days ago, after which the police believed this murder was committed. There was an argument between the two.
and we are given to understand that it's after this argument that Aaftab actually strangulated her. Now, details that seem to be emerging suggest that the two of them did not have a great relationship, that there was trouble and that there was physical abuse involved. That's what at least Shraddha seemed to suggest to her friends over and over again. Now, we also spoke to one of the friends yesterday and he said that at one point in time they had to go to her house to rescue her. So these are all details that are now coming out. To remember that Aaftab, of course, has been sent to 5 days of police custody, where he is being interrogated by the police further. What the police seem to suggest is that after he murdered her, he cut her body up into pieces, kept some parts in the refrigerator as well, and thereafter tried to dispose them off slowly. The police are confident of being able to link up all the pieces in this particular murder. He has been remanded to police custody for the next 5 days, where he's going to be questioned by the police. But new details that are now emerging is that we are told that the Delhi police has asked a common friend of Aaftab Poonawalla and Shraddha Walkar to come in for questioning. We are given to understand that this is the friend who had actually intimated Shraddha's father and her brother about her not responding to his messages and calls. Right, so the police, of course, are going to question him also now, and what we are given to understand is that he was the one who actually intimated her brother as well as her father about the fact that Shraddha seemed to have gone missing and she wasn't returning his phone calls. He also seemed to have told the police that he kept calling her number, but there was no response from it. So the police, the police, of course, were notified about this by her father, who came down to Delhi to try and figure out where she had disappeared. We are given to understand that before moving from Mumbai, the two of them lived together in Mumbai as well for some time, and thereafter decided to shift base to Delhi. Now, the murder of Shraddha Walkar and the horrific details of this murder have sent out shock waves across the nation. Let's take a look at the shocking details that are now emerging. The spine-chilling murder in the national capital has shocked the entire nation. Some gruesome details have emerged in the crime. The father's complaint, on the basis of which Delhi police filed an FIR on 10th of November, has revealed some shocking details. As per the complaint, Shraddha spoke to her father a couple of times, where she revealed that Aaftab would beat her up. Her friends Shivani and Lakshman to confirm that Shraddha and Aaftab had a rocky relationship. And Shraddha's brother was informed that her phone was switched off for 2 months. Her father has said that he searched for Shraddha for months and suspected Aaftab's role in the disappearance. मीन टाइम जो बचपन का जो उसका फ्रेंड था लक्ष्मण करके, वो हमेशा उनके टच में था, वो लड़की के। उसने पिताजी को बोला कि बेटी का मई महीने से कांटेक्ट नहीं हुआ, तो आप ज़रा उसके बारे में पूछताछ करो। और फिर उन्होंने फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में एक एप्लीकेशन दिया था। वो एप्लीकेशन जरिए अपन उसका पिताजी को बोला कि पूछताछ किया। वो लक्ष्मण के हिसाब से और वो स्टेटमेंट के हिसाब से पिताजी के वो दिल्ली रहती थी, लेकिन वो लोगों ने बोला कि दिल्ली में उनको बोला जाने के लिए, लेकिन अपन वो नहीं गए। तो Delhi police arrested Aaftab based on the father's complaint, and after the interrogation, Aaftab admitted to his crime. These are the remains of the very place. The clothes are still lying here. These are Aaftab's clothes that you can see right now on the very stand. There is an incense stick that you see right now. Incense sticks that have been kept, and also the pot puree here. Police are basically indicating that he was constantly using the incense stick to ensure that the stench of the body does not go out, because remember, the body would have got decomposed. The accused Aaftab has now been sent to 5 days police custody for further interrogation. Bureau Report, Republic TV. Shraddha Walkar's friend Lakshman Nadar also spoke exclusively to Republic TV, and he revealed the fact that she was in an abusive relationship with Aaftab for quite some time. एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि
प्लीज़ यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। ऐसा भी झगड़ा हुआ है उनके बीच में और हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था और आफ्ताब को वार्निंग भी दी थी। यहाँ तक कि एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज़ यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। ऐसा भी झगड़ा हुआ है उनके बीच में और हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था और आफ्ताब को वार्निंग भी दी थी। All right, so that's one of the friends who we spoke to, and he seemed to detail the fact that the two of them were in an abusive relationship for quite some time, and that friends were aware of it. And in fact, we are also learning now that one of the friends who actually informed her brother and her father of her disappearance has now been called for questioning as well. We also spoke to another friend of Shraddha's yesterday, and he seemed to suggest that they were in a relationship from about 2018 and thereafter had moved to Delhi a short while ago. That's this year itself, where they wanted to find new jobs for themselves and relocate essentially to Delhi. And after that, they of course shifted to this apartment where this murder allegedly took place. Rajat, when were you last in touch with yes, her? I can hear you very well. What can you tell us about Shraddha? Were you in touch with her? Did you know of her relationship with Aftab? Yeah. Shraddha Walkar used to be a very active girl during our college days. We were doing BMM together. And this is surprising. I mean, a girl who was very active, we used to do theatre together, and few days later, we see a sudden change in her behavior. This was towards the end of our graduation 2018, and we were surprised that why is Shraddha, I mean, where's the spark that she had? And, 2018 was last when we saw a sudden change in her. And we got to know that she got into a secret relationship with Aaftab in the year 2018. And in 2019 was when she made it official, announced to all our friends that, she is in a relationship with him. And it was like a lovely relationship as shown in the start. But then, it was informed to us by Shraddha herself that this boy Aftab is being boiled into her. He beats her up. She's mentally affected, but she is in love, and that love is maybe a reason. How did she share this to information? sacrifice her mental health, and she's staying there. She used to talk to a very close friend of her, and she told us she was not revealing it to everybody, of course, because it's a personal issue. But thoroughly, this thing can lead to such a heinous crime is something of a concern now. Yeah, obviously. When was the last contact you or any of your friends had with her? It was during the time when Aftab and Shraddha had decided that they are going to shift to Delhi. And the reason that was informed to us was that she wanted to, both of them were looking out for a job change, and they were wanting to settle there in Delhi and do a job there. However, right after Shraddha shifted there, we lost touch. Her brother tried to contact her, we tried to contact her, but there was no signs of contact. And is the reason we started, finding her. She was all lost. And months after we get to know that Any contact Aftab with Aftab? Did any of you or your friends meet Aftab, so we can get a sense of what this person is like? Yeah. A lot of my friends met Aftab, and Aftab used to be a poker face. By seeing him, you won't be able to judge that he can be such a criminal. This is still a question that it was just Aftab in the murder case or someone else too.
because it seems impossible for me to digest that one person, Aaftab, who was not that very strong and Shraddha was not that very weak that Shraddha could not retaliate in the murder and she cannot shout or something. This seems like a very pre-planned murder and a big one. And Piyush Shori, of course, is joining us. He's reporting on this. Piyush, what we've been hearing from the police is that they have been able to conclusively establish the sequence of events, and they've also, now got him in police custody and will be questioning him further. Give us more details, please. So definitely, Nupur, yes, the Delhi police has been able to get the 5-day police custody of Aaftab, and they have been conclusively able to establish the sequence of events. Having said that, the challenges and the difficulties for Delhi police has not yet got over. There are several layers that are involved in this crime, and it would take a lot of taking of Delhi police to actually unlayer all the details and all the events in this horrific crime that has shocked us all. To begin with, the Delhi police would have to establish that was it only Aaftab to begin with who was involved in this crime? Were there some other people also involved who had assisted him? Because let us also understand that Aaftab had come from Mumbai to Delhi. Having done this crime so perfectly in a place that is quite stranger to him is something which now needs to be established. So all these things have to be investigated, and the biggest investigating point for the Delhi police would now have to be that how many people were there who would have assisted Aaftab in carrying out this heinous and very gory crime. Yes, back to you. You believe that the Delhi police will also perhaps be looking at an angle if there was any other involvement from anybody else. But what we are also given to understand at this moment is that a common friend has also been called for questioning in this particular case. And we are, of course, learning that this common friend was the person who actually informed her family of the fact that, he'd been trying to reach her for quite some time and that she seemed incommunicado. So yes, you rightly again pointed out, Nupur, that it is ultimately how the friends of Shraddha that actually made the law enforcement officials both from Mumbai as well as Delhi sit up and understand about what gory crime would have actually occurred. Now, even after Shraddha and Aftab moved from Mumbai to Delhi, Shraddha, through her social media accounts and through her phone, was in contact with her friends. But when she was not able to get in touch with her friends, the friends got suspicious, and then they asked Shraddha's father to come to Delhi and file a complaint, following which this complaint was filed, and subsequently what it resulted was us finding out about how actually a gory crime was occurred, where a woman, all of just 27 years of age, was first strangulated to death. Stay with us. In fact, we are getting more breaking news. We are now learning that there was a meat cleaver that was used to chop up the body. That's what we are beginning to understand. This is what sources within the Delhi police have said now. I think Piyush will have more details on this one as well. That Piyush, we are now given to understand that the police is perhaps looking at a weapon that was used to try and cleave off the body parts. So again, a very shocking detail that has come to fore, Nupur, of how a meat cleaver was being used by the accused to actually just mutilate the body parts and cut it into 35 pieces. Now let us just understand that Aftab had a background of being a chef, so maybe he used this knowledge of his to cut the body parts so perfectly, get it stored in plastic bags and then dump it in Aravali forests. Having said that, as I said, that the criminal record of Aftab has still not been ascertained, but the way this crime has been committed, it definitely shows that how criminal actually Aftab had in his mind, and what kind of monstrous mindset he had of committing this entire crime. Yes. Now, what we are given to understand is that the Delhi police sources also seem to suggest that he was a little confused about the timelines that were involved when the police actually questioned him in detail about the sequence of events. So what we have come to know, Nupur, is that Aftab has very shrewdly committed this entire act. Even after committing the murder, he made sure that no people around him knew about what
heinous crime he had committed. In fact, what we are being told is that he resided in that flat where he actually first strangulated Shraddha and then cut her into pieces. And he tried to act in a way that... यहाँ पर तैयार हो चुकी है जिसमें आफ्ताब को ले जाया जाएगा और देखिए उन जंगलों में जहाँ पर आफ्ताब ने बताया है कि उसने जो 35 टुकड़े किए थे, जहाँ जगह जगह उन्हें फेंका है, उनको दोबारा से कलेक्ट करने का प्रयास हो रहा है। और इसी बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। फौरन लौटेंगे क्योंकि किसी भी क्षण यहाँ से आफ्ताब निकलेगा। फौरन लौटेंगे, इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं कि आखिर श्रद्धा को इंसाफ कब। देखते रहिए रिपब्लिक भारत। All right, so we're going to cut across back to our Republic Bharat team in just a bit to understand whether the police are now going to be trying to take him to those places to ascertain the sequence of events. But coming back to you, Piyush, you were taking us through the fact that the police believe that perhaps there could be another suspect who was involved in this, because obviously it was committed, the murder was committed nearly 6 months ago, and obviously the body was very shrewdly disposed of. So in that sense, give us more details of what you're learning. All right, we're going to go across to Piyush in just a bit. I think he's also moving on with the police right now. But what we understand, of course, right now is that the police will be taking Aaftab out of the lockup. To remember that he is in police custody, even as the police are trying to establish the sequence of events. The police will also be scouring the jungles where Aaftab says he disposed of the body parts of Shraddha. Now, we are also given to understand that the police are going through all his call details, social media presence, etc., to be able to understand whether there was anybody. देखिए आफ्ताब पूनावाला यहाँ से निकलेगा और लाइव तस्वीरें हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे। ये देखिए चेहरा इसका ढका हुआ है सफेद रंग के गमछे से, चेहरा ढका हुआ है आफ्ताब का, और ये तस्वीरें हम दिखाने का लगातार प्रयास करेंगे। देखिए आफ्ताब यहाँ पे जाना है। आफ्ताब क्यों मारा? क्यों मारा? क्यों मारा? बाहर निकल के बाहर निकल। आफ्ताब क्यों मारा? आफ्ताब श्रद्धा को क्यों मारा? आफ्ताब श्रद्धा को क्यों? आफ्ताब कब से रिलेशन था श्रद्धा के साथ? आफ्ताब श्रद्धा को क्यों मारा? आफ्ताब श्रद्धा को क्यों मारा? आफ्ताब बता, देखो आफ्ताब दिख रहा है, देखो मुंह छिपा रहा है अपना, कुछ भी बोल नहीं रहा है, मुंह छिपा रहा है। अभी से पछतावा हो रहा है आफ्ताब को, लेकिन कुछ बोलने से बच रहा है। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी कहाँ है? गाड़ी देखिए हम चलो देखिए हम लगातार इस खबर पे हम हैं। देखिए लगातार इस खबर पे हम बने हुए हैं और ये देखिए तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं और लगातार उसको हम ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। आफ्ताब पूनावाला को इसी गाड़ी के पीछे स्कॉर्पियो के आगे पुलिस की गाड़ी है और उसी में आफ्ताब है। चेहरा उसने गमछे से, सफेद रंग के गमछे से ढका हुआ है। कुछ भी बोलने से वो बच रहा है, कुछ भी बोलने से एकदम बचता दिखा और चेहरा उसने नीचे कर लिया ताकि उसका चेहरा ना दिख सके। लेकिन लगातार हम कोशिश करेंगे जिस जगह पर आफ्ताब को ले जाया जा रहा है। देखिए पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट होगा, ये पूछा जाएगा कि उसने कहाँ उन शवों को, जो 35 टुकड़े इसने किए, उन टुकड़ों को कहाँ फेंका। तो उन कंकालों को कलेक्ट करने का प्रयास लगातार हो रहा है। 5 दिनों की कस्टडी में है और 201 और 302 ये आईपीसी की धारा लगी है। छेड़छाड़ की गई थी सबूतों के साथ। जल्दी देखिए लगातार हमारी कोशिश है कि हम एकदम आगे पहुंचे और थोड़ा तेज चलाइए, साइड में से लीजिए ताकि हम ये देख सकें कि कहाँ उसे ले जाया जा रहा है। देखिए आईओ आगे गाड़ी में बैठे हुए थे इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर, जिनसे हमने लगातार बातचीत की और पूछा तो उन्होंने कहा कि 5 दिनों तक जो कस्टडी में रखा गया है पूरा उसे एक जगह ले जाया जाएगा कि उसने इन दिनों इस वारदात को अंजाम देने के बाद पहले किस से संपर्क किया, किस से बात की, सोशल मीडिया श्रद्धा का चला रहा था, उस पर इसने क्या मैसेज आगे पहुंचाया, आखिर सबूतों को मिटाने के लिए क्या कुछ इसने प्रयास किए, ये सब कुछ पूछा जाएगा। वो सबूत इकट्ठे किए जाएंगे जिसको बाद में कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो इसी आधार पर
लगातार इस खबर पर ग्राउंड कवरेज रिपब्लिक भारत कर रहा है। और देखिए बहुत तेजी के साथ मेहरौली थाने से हम निकले हैं और उसके बाद इन गाड़ियों का पीछा कर रहे हैं और यहीं से हम आगे पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए कितनी सारी गाड़ियां हैं, ये पुलिस की गाड़ी आप हमारे आगे पीछे देख रहे हैं। भैया इस गाड़ी के पीछे आगे से निकालिए, साइड से निकालिए और देखिए लाइव हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ते हुए, ताकि हमें एक मूवमेंट पता चल सके आफ्ताब की। और उसी मूवमेंट को सुबह से भी हम ट्रैक कर रहे हैं, जब हमने एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को सबसे पहले दिखाई थी कि किस तरह से जेल के अंदर वो आराम से सो रहा था, उसके चेहरे पर कोई डर नहीं, कोई शिकन नहीं, कोई पछतावा नहीं। उसके बाद जब हम वहां दोबारा पहुंचे थे तो हमने देखा वो खड़ा भी हुआ था, आराम से वो वॉशरूम की तरफ गया, वहां पर भी कोई उसकी बॉडी लैंग्वेज में कोई डर या पछतावा हमें नहीं दिखा। लेकिन एक मूवमेंट हम ट्रैक कर रहे हैं और लगातार ये कोशिश भी करेंगे ये पूछने की कि आखिर उसने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया, क्यों जिस लड़की से वो प्यार का दावा करता था, जिस लड़की से वो डेटिंग ऐप पर मिला था, उसको मुंबई से बहला फुसलाकर वो दिल्ली लाता है, फिर मार्च और अप्रैल के महीने में वो इस वारदात को अंजाम देता है, श्रद्धा का गला दबा देता है। उसके बाद 35 टुकड़े बॉडी के आरी से काटकर 35 टुकड़े कर देता है और उसके बाद 300 लीटर का फ्रिज खरीदता है, फ्रिज में उन टुकड़ों को रख देता है। फिर गूगल पर ये सर्च करता है कि कैसे खून के धब्बों को साफ करना है, कैसे सबूतों को मिटाना है और कैसे कौन से केमिकल का इस्तेमाल करना है, ताकि जो 35 टुकड़े श्रद्धा के थे जो फ्रिज में रखे हुए थे उनसे बदबू ना आए, किसी को पता ना चले। ये जानकारी मिल रही है कि केमिकल के अलावा वो घर में अगरबत्ती का भी काफ़ी इस्तेमाल करता था, अगरबत्ती को सुलगाता था। किधर गई गाड़ी, किधर गई है? देखिए यहाँ पर अभी हमें ये रेड लाइट पर रुकना पड़ेगा और इसके बाद ये रेड लाइट हम क्रॉस नहीं कर सकते हैं। इस रेड लाइट को जैसे हम पार करेंगे उसके बाद आगे हम पहुंचेंगे और लगातार उस गाड़ी के पीछे हैं। क्या उतरे यहाँ? देखिए अभी हम लगातार इस कोशिश में हैं कि वो गाड़ी के पीछे हम लगातार रहें। और देखिए इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। देखिए सबसे हैरानी की बात ये होती है कि इतना शातिर है ये आफ्ताब, जो लगातार एक अमेरिकी क्राइम थ्रिलर मूवी देख रहा था और उससे सीख रहा था कि कैसे इस क्राइम को अंजाम देना है, कैसे। हाँ देखिए अरे वो गाड़ी कहाँ गई? All right, so pictures on your screen are coming to you from where the area where the Delhi police right now are scouring for the body parts. We are given to understand that the Delhi police is actively looking at this area to find the remains of Shraddha. Now we are also learning that after her father had filed a police complaint, the Delhi police had kept close surveillance on Poonawalla, and that is how they essentially swooped him and arrested him from his residence. And we are given to understand that the Delhi police right now, of course, taking him to be able to identify the spots where he threw away or disposed of the body parts of Shraddha. Inputs also seem to suggest that he actually bought a meat cleaver after the murder was committed. Now, the police say that their relationship turned sour after she pressured him to get married, and thereafter they continued to have arguments, and there were several arguments, and friends of Shraddha also seem to suggest that some of these did get physical, and that Shraddha had been in this abusive relationship for quite some time. The two of them, we are given to understand from our sources within the police, met in 2019 and thereafter started to stay together. They first lived together in
Mumbai and then shifted to Delhi, where they both were looking for new jobs. They shifted to this home, and barely 3 days after is what the police suspect in terms of dates when she was murdered. Now, the police are also looking into the angle whether there was anybody else who could perhaps been involved in this grisly murder, but that, of course, is a matter of investigation. The police are currently now taking the accused to the forest area where he says that he disposed of parts of Shraddha's body. We are going to try and go across to our reporters in just a bit to get more details into what really the police now believe. But what we are bringing to you, of course, is pictures of the area where the police believe Aaftab had actually disposed of some of the remains of the deceased. Now, the Delhi police, of course, arrested him yesterday after her family, of course, her father and her brother seem to have complained that she has gone missing. And there were several of her friends who have also spoken about the fact that they were very concerned because she wasn't answering their phone calls, wasn't replying to the text messages, and that's when they got in touch with the family and told them that there was something wrong. Now, the Delhi police say that this murder was committed in May, and it has, of course, been almost 6 months then to the date that this murder was committed. The main accused in this case, of course, is Aaftab Amin Poonawalla, who had strangled the 26-year-old Shraddha on the 18th of May. That's what police sources have been telling Republic TV. Now, according to the police, Poonawalla chopped her body into 35 pieces and brought a new fridge to store them and throw them at various locations over a period of 18 days. Now, to avoid any suspicion, he also used to leave the house with body parts in poly bags. That's what the police have said. The police, of course, now have him in police custody for the next 5 days. The court remanded him to police custody for next 5 days yesterday. Now, the deceased Shraddha and Poonawalla, of course, were staying in a rented flat in Delhi South Mehrauli area. Shraddha worked with a call center for a multinational company in Mumbai. When she had met Poonawalla, the two started dating and moved in together. However, the police seem to suggest that her family did not approve of their relationship, following which the couple eloped and came to Delhi. But the police also are still trying to piece together what really happened, and our reporters, of course, on the ground continuing to brief us of the latest that they are now understanding of how this murder was essentially committed. They've also called in for questioning one. उज्जवल गए, उज्जवल हाँ ये रहा। शव के टुकड़े कहाँ फेंके थे आफ्ताब? आफ्ताब देखिए, अरे आफ्ताब, आफ्ताब जवाब दो आफ्ताब। एक मिनट, आफ्ताब बोलो। देखिए आफ्ताब इसी गाड़ी में मौजूद है। यही आफ्ताब है जो गमछे पहने हुए आपको दिखाई दे रहा है। आफ्ताब गेट खोलो। आफ्ताब बताओ। आफ्ताब, आफ्ताब जवाब दो। आफ्ताब श्रद्धा को क्यों मारा? श्रद्धा को क्यों मारा? आफ्ताब जवाब दो। दूसरे वाले पे मिला। आफ्ताब क्यों मारा? आफ्ताब क्यों मारा? आफ्ताब श्रद्धा को क्यों मारा? आफ्ताब, आफ्ताब श्रद्धा को क्यों मारा? आफ्ताब, आफ्ताब श्रद्धा को क्यों मारा? आफ्ताब श्रद्धा को क्यों मारा? श्रद्धा को क्यों मारा? आफ्ताब, आफ्ताब श्रद्धा को क्यों मारा? आफ्ताब कुछ बोलेगा? आफ्ताब जवाब दो। आफ्ताब, आफ्ताब जवाब दो। आफ्ताब क्यों मारा? अच्छा बंद कर, बंद कर। देखिए आफ्ताब ये है, उज्जवल, उज्जवल, आफ्ताब देखिए, ये रहा आफ्ताब, ये बैठा हुआ है आफ्ताब, आफ्ताब यहाँ बैठा हुआ है। एक मिनट, आफ्ताब, एक मिनट, देखिए आफ्ताब ये बैठा हुआ है और यहाँ से कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। देखिए ये बैठा हुआ आफ्ताब, ये बैठा हुआ आफ्ताब, आफ्ताब जवाब दो, आपसे जवाब दें। आफ्ताब जवाब देना पड़ेगा। आफ्ताब जवाब क्यों मारा श्रद्धा को? आफ्ताब जवाब से देखिए ये बैठा हुआ है आफ्ताब और यहीं से पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। ये देखिए इसने सफेद रंग के गमछे से चेहरा ढका हुआ है, नीले रंग की इसने ये जैकेट पहनी हुई है, नीले रंग का ये पहना हुआ है टी शर्ट। ये देखिए आफ्ताब को निकाला जा रहा है। चलिए आगे ये देखिए आफ्ताब निकलेगा यहाँ से। आफ्ताब बोल, आफ्ताब क्यों मारा? श्रद्धा का दोष क्या था? श्रद्धा का दोष क्या था? देखिए कुछ भी बोलने से बच रहा है। आफ्ताब श्रद्धा को क्यों मारा? आफ्ताब क्या दोष था? आपने ऐसा क्यों किया? आफ्ताब आपको कोई शर्म है? प्यार का सिला
ये दिया, प्यार का सिला ये दिया, क्यों मारा? आफ्ताब श्रद्धा के साथ ऐसा क्यों किया? ये देखिए यहाँ से, कोई अफसोस है? अफसोस है आफ्ताब क्यों मारा श्रद्धा को? भाई हमको भी घेरोगे आप? ये देखिए कूड़े में। अरे यार मेरा पैर मुड़ गया। पर उज्जवल कहाँ है? देखिए यहाँ देखिए बिल्कुल हम जंगल के अंदर अरे आफ्ताब को लेकर आगे बढ़ रही है, क्योंकि यही वो देखिए जंगलों में, देखिए जिस जंगल में आफ्ताब ने देखिए कंगालों को छिपाया, हम वहीं पर आए हैं। ये देखिए जिस जंगल छिपाया, टुकड़े जो किए श्रद्धा के, इसी जगह से ला रहे हैं लाइव तस्वीरें। ये देखिए उज्जवल, ये देखिए लाइव तस्वीरें। यहाँ पर इतनी बदबू है इस जगह पर। ये कुछ तो बोल दो, कुछ तो कहो। चलते रहो अंदर। ये बैग आजकल खींचा मेरा। अरे मास्क मत खींचो उसका, प्लीज आप क्यों खींच रहे हो उसका? देखिए लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें। और देखिए यहाँ से उसी जंगल में ले जाया जा रहा है आफ्ताब को उसी जगह ले जाया जा रहा है। उज्जवल दिखाओ तस्वीरें। उसी जगह यहाँ से ले जाया जा रहा है जहाँ इसने कंकाल, यहाँ पर इसने उन शवों को डाला 35 टुकड़े करके। ये वो वही जगह है। देखिए आफ्ताब क्यों चेहरा छुपाने की नौबत आई? आफ्ताब तुम्हारे आफ्ताब पछतावा है। प्लीज एक मिनट। Are you ashamed of the thing? आफ्ताब कितना पछतावा है? जंगल में अंदर सर्च करेंगे आप लोग। क्या रहेगा? आफ्ताब कितना पछतावा है? मुंह छिपाने से क्या होगा? आफ्ताब जवाब दो। आफ्ताब जवाब चाहिए। सर कितना बड़ा जंगल है, कितने दायरे में? बस इतना बता दिए। कई किलोमीटर का दायरा है सर जंगल का। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज। सर कितना समय लग पाया? क्या उसने ये बताया? कितना बड़ा जंगल है, कितने दायरे में? बस इतना बता दिए। कई किलोमीटर में? कई किलोमीटर का दायरा है सर जंगल का। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज लेट अस डू आवर वर्क। सर कितना समय आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए अभी आप कितने अंदर तक जाएंगे? क्या बताया आफ्ताब ने प्लीज जंगल के बारे में? आफ्ताब ने क्या बताया? सर यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं सर आफ्ताब को? सर क्या सीन रिक्रिएट करने में लाया गया है? यहाँ पर भेजा गया है और पुलिस ने बहुत कॉन्फिडेंस किया आफ्ताब ये देखिए पुलिस यहाँ पे लेके गई है आफ्ताब को। पुलिस लेकर गई है आफ्ताब को और वहाँ पर देखिए पुलिस लेकर गई है आफ्ताब को। देखिए मेहरौली के घने जंगलों में देखिए वो आगे जो खबर आ रही है देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। अरे यार कैसे करें? निकाला जाएगा और
All right, so the police, of course, investigating the crime scene right now. We are given to understand that the police are trying to recreate what really happened. I do remember that the accused has been sent to police custody for the next 5 days, where the police will be questioning him. But the police seem to suggest that they have been able to put together the sequence of events as it happened. We are given to understand that the deceased and Aftab Poonawalla actually met in 2018. The accused, that is Aftab Poonawalla, had strangled the 26-year-old on May 18. Now, the police seem to suggest that the crime was committed on the 18th of May. According to the police, that thereafter, after strangulating her, Poonawalla then tried to dispose of her body and cut her body up into 35 pieces to avoid any suspicion. He used to leave in the dead of the night to try and dispose of the body, the remains. We are given to understand that the deceased Shraddha and Poonawalla were staying in a rented flat in South Delhi's Mehroli area. She worked with a call center for a multinational company in Mumbai when she met Poonawalla. The two started dating. The girl's family, that's Shraddha's family, of course, seemed to have some trouble with this relationship. They did not approve of it, and that the couple then went away and started to live in New Delhi. Now, the police also are still trying to put together various facts. We are given to understand that a common friend has also been called for questioning by the police. Now, friends that Republic TV has spoken to seem to suggest that they were aware at least of the fact that the two of them who were in a live-in relationship had problems, and there was a report of physical abuse that also took place during the relationship. Now, this is according to friends that we have spoken to. The police also seem to suggest that it was actually friends who had raised the alarm. अब देखिए, यहाँ पर चलना इतना मुश्किल हो रहा है. हम कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे रास्ते से पहुंचे, जहाँ पर आफ्ताब को ले जाया गया है, और लगातार रिपब्लिक भारत ने उससे पूछने की कोशिश की है इधर की तरफ. हम यहाँ पे दूसरी तरफ आए हैं. देखिए, पुलिस वहाँ पर लगातार रोक रही है मीडिया कर्मियों को, लेकिन हम दूसरे रास्ते से आगे निकलने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ पर आफ्ताब को ले जाया गया. लेकिन यहाँ पर रास्ता आसान नहीं है. हाँ, एक सेकंड, शायद हमें यहाँ पे एक जानकारी. ये देखिए, यहाँ पर ही पुलिसकर्मी मौजूद है, और यहीं पर आफ्ताब भी है. यहीं पर आफ्ताब, घना जंगल है ये, और यहीं पर उससे पूछताछ हो रही, तहकीकात हो रही है कि उसने कहाँ पर वो शव के टुकड़े, वो कंकाल छुपाने का उन्हें प्रयास किया. और ये इतना घना जंगल है कि यहाँ पहुँचना थोड़ा एक चुनौतीपूर्ण हो रहा है. लेकिन देखिए, थोड़ा अंदर को, अकेली जगह, सुनसान जगह पर आफ्ताब को ले जाया गया है, और वहाँ पर मीडिया कर्मियों को आने नहीं दिया जा रहा है. लेकिन हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम ट्रैक करें किधर ले जाया गया है आफ्ताब को. नहीं, उस तरफ है ना, बस हमें जगह दिखा दीजिए ना, किधर की तरफ है. इधर की तरफ ही है ना, देखिए इधर की तरफ ही है. और यहाँ पर उसने, सर यही है सर, नहीं सर, हम यहीं रुके हुए हैं, बस आप ही बता दीजिए. यहीं पर है, यहीं पर देखिए, यहीं से हम यहीं से उज्जवल दिखाइए कैमरे से, थोड़ा सा आगे, यहाँ पर इसी जगह पर आफ्ताब है, और उसके साथ आईओ है, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है, जो लगातार वो खोजने का प्रयास हो रहा है कि कहां पर उन टुकड़ों को आफ्ताब ने छिपाया. आप देखिए कितना शातिर दिमाग का ये व्यक्ति, इतनी कम उम्र में इतना शातिर दिमाग उसने रखा. ये घने जंगलों में वो टुकड़ों को दफनाने के लिए आया, उसने यहाँ पर फेंके, और जब हमने यहाँ पर एंट्री की, इतनी जबरदस्त यहाँ पर एक अलग सी महक आ रही थी. यहाँ पर आना आसान नहीं है, जगह जगह कीचड़ है, पानी है, पत्थर है, ये घना जंगल है. और हम कोशिश कर रहे हैं, धीरे से हम कोशिश कर रहे हैं ताकि हम आगे जाएं, और आगे जाकर थोड़ा नजदीक से स्पॉट के नजदीक आकर हम एक एक तस्वीर दिखाएं, कैसे आफ्ताब ने अपनी गर्लफ्रेंड के 35 टुकड़े करके मौत के घाट उतारा. और ये वही जंगल है, ये जंगल उसी दास्तां को बयां करेंगे कि यहाँ पर आफ्ताब ने अपनी गर्लफ्रेंड को 35 टुकड़ों में दफनाया, अलग अलग जगह पर फेंका. अब उन्हीं टुकड़ों को असेंबल करने का प्रयास हो रहा है. कुछ कंकाल मिले हैं जिनको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, लेकिन जब तक रिपोर्ट सामने नहीं आ जाएगी तब तक कुछ भी पुष्टि करना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा. अब तस्वीरों के जरिए, पूरा तस्वीरों के जरिए, अभी देखिए कितना घना जंगल है ये. और यहाँ पर इस घने जंगल में आप देखिए, इस तरफ देखिए, वहाँ आप देखिए, यहाँ वो रात के 2 बजे आता था.
रात के 2 बजे आता था, इसी जंगल में रात के 2 बजे आता था। तरीके से उसकी हत्या की, निर्मम तरीके से हत्या की और उसके बाद एक एक कर छतरपुर महरौली के इस घने जंगल में उसके शरीर के टुकड़े फेंक दिए। प्रशांत, ये सबसे अहम खबर है। इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली का छतरपुर चौपुर इलाका All right, so the police over there trying to recreate the crime scene as it happened. The police are taking the accused to the area where he has said in his statement to the police he disposed of the deceased's remains. Our reporters, of course, are tracking the latest for you. But the police, of course, have been able to establish largely the sequence of events as it unfolded. The police believe that this murder took place on the 18th of May, and the accused, of course, after that was able to hide it for quite some time. It's only when the friends of the deceased contacted her family that the police started to investigate this case, and we are also given to understand that the police suspected the accused to be behind this murder and had put him under surveillance for a while. He was nabbed from his home 2 days ago. He's now, of course, been sent to police custody for questioning. The police right now, of course, are trying to retrieve the remains of the deceased. That's Shraddha, a 26-year-old who was brutally murdered by Aaftab, the accused in this particular case. She was in a live-in relationship with him, and the two had been having some trouble for quite some time now. So pictures on your screen are of the police actually trying to take him to according to him in his confessional, of course, where he disposed of remains of the deceased. यहीं पर आफ्ताब पूनावाला आता था और रात के 2 बजे लगातार वो 20 दिनों तक यही करता था। अलग अलग जगहों पर उन कंकालों को फेंकता था, उन टुकड़ों को फेंकता था। आप तस्वीरों के जरिए समझिए, दूर तक देखिए सिर्फ घना जंगल है और यहाँ पर जगह जगह पुलिसकर्मी इसलिए तैनात है क्योंकि यहीं से 50 मीटर की दूरी पर आफ्ताब मौजूद है इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के साथ, और वो बता रहा है कि कहाँ पर उसने उन टुकड़ों को दफनाया है, कहाँ पर फेंका है, क्या वो पॉलिथीन के अंदर करके फेंका था, कोई केमिकल लगाकर फेंका, ये कहाँ पर, ये सब कुछ तहकीकात करवाई जा रही है, पूछा जा रहा है उससे और काफी अंदर उसे ले जाया जा रहा है क्योंकि एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 35 टुकड़ों में उसने अपने प्यार की पूरी दास्तां को बयां किया, खत्म कर डाला, उसका कत्ल कर डाला। ये देखिए यहाँ पर एसएचओ साहब हैं ये, और इनसे भी हम कोशिश करेंगे कुछ और जानकारी जुटाने की। सर ये बताइए यहाँ से कितनी दूरी पर है? सर ये बताइए यहाँ से कितनी दूरी पर है अभी आफ्ताब? नहीं, हम जा नहीं रहे, आप बस बता तो दीजिए। ठीक है, देखिए यहीं पर इसी पूरे एरिया में तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए इसी जंगल में इतना अंदर तक आता था आफ्ताब ताकि वो उसको किसी को शक ना हो, और उसने इन्हीं सभी सबूतों को मिटाने के लिए इतना शातिराना अंदाज पूरा अख्तियार किया ताकि वो इस वारदात को अंजाम भी दे दे और उसके बाद किसी को कुछ पता भी ना चले। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। All right, so the police, of course, are trying to recreate and be able to understand the sequence of events as it followed. We're given to understand that they are right now in the jungles where Aaftab has said that he disposed of the body. Now, just to give you a timeline of what we are understanding of what happened is that it was on the 17th of May that he allegedly committed this murder. Now, we are also told that the two of them had been in a relationship for nearly 2.5 to 3 years. And it was on the night of the 18th of May that the two of them got into a fight after and then he strangled Shraddha Walkar. That's what the police say. He chopped her body into pieces and brought a 300-litre fridge also to store the parts of the body. And the police say that for nearly 18 to 20 days, he kept on going to try and dispose of the body parts at different spots. Now, the couple had moved from Mumbai to Delhi between April and May. The police aren't very clear on the timelines. And according to the police, they had been fighting for weeks because Shraddha, who was 26 years age at the time of the murder, wanted to get married. Now, antecedents of what the police have been able to establish seems to suggest that
Shraddha was, of course, a call center worker. She was at a multinational firm in Mumbai. That's where she met him. Through a dating app, the two of them moved together against the wishes of her family and eventually then left Mumbai. Now, the crime was discovered after Shraddha's father told her brother that her mobile phone had been switched off for more than 2 months. Her social media accounts also seem to be sporadically active. Now, there are two versions coming to that. The police seem to suggest that the accused was active on her social media accounts and had her phone. But the police, of course, also investigating further in this. Now, it was in November, we are given to understand, that Shraddha's father actually filed a missing persons complaint, and he also arrived in New Delhi on the 8th of November to check in on her and found the apartment locked, then approached the police for filing a kidnapping case. Now, the police say that Poonawalla confessed that to the murder after he was detained for questioning. And the police right now, of course, are trying to essentially not just put together the sequence of events as they unfolded, but also trying to understand, what happened in these past 2 years that led to Aaftab killing her. We're also learning now that he actually was looking at various websites to be able to understand how he could keep the stench from coming. The police are also looking at the fact that if there was anybody else who was involved in this. So a lot of questions that are still unanswered in this particular case. But the Mehrauli police right now, of course, are leading this investigation, and they are trying to piece together what happened. Now, according to the police, of course, Aaftab's search history also has revealed that he looked up how to clean blood stains and dispose of evidence. He was reportedly also inspired by the series Dexter, which, of course, is based on a serial killer. So this is what the Delhi police so far have said. Do remember that the accused Aaftab Poonawalla has been remanded to police custody for the next 5 days. We are told that he's been monitored by the police 24/7. निशानदेही पर यहाँ पर खुद आफ्ताब को लेकर पुलिस पहुंची है। आफ्ताब बताएगा यहाँ पर पुलिस के सामने कि उसने कहां पर श्रद्धा के वो दर्जनों टुकड़े फेंके थे, जिसका जिक्र किया जा रहा है, जिसकी बातें निकलकर सामने आ रही है। पूरा देश ये देख रहा है तस्वीर, ये महरौली के जंगल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इन्हीं जंगलों में अंदर है आफ्ताब, और इन्हीं जंगलों में अंदर है पुलिस की वो टीम जो कि लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। आफ्ताब को 5 दिन की रिमांड पर रखा गया है। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए महरौली का वो घना जंगल जहां पर आफ्ताब को अंदर तक ले जाया गया है। क्योंकि रात में आफ्ताब यहां पर आता था उन टुकड़ों को फेंकने के लिए, इसलिए अंदाजा इतना नहीं है कि कितनी दूर तक आफ्ताब जाता था, लेकिन कहा जा रहा है कि आफ्ताब जो है लगातार यहाँ पर जो है टुकड़े फेंकता रहा। और तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, एक जानकारी, एक खबर श्रद्धा मर्डर से जुड़ी हुई। आफ्ताब ने टुकड़े किए। छोटा सा ब्रेक है, यहाँ पर लौटते रहिए। All right, so the police, of course, are trying to ascertain the facts. We are given to understand that the police, of course, was informed, was keeping a watch on Aaftab after her father, of course, filed a missing persons complaint, and Shraddha's father then arrived in Delhi on the 8th of November to check on her whereabouts, found the apartment to be locked, and then approached the police to file a kidnapping case. The police say that that is when they arrested Aaftab, and when they were questioning him, he confessed to the murder and also confessed to the manner in which he decided to dispose of the body. According to the police, Aaftab's search history, of course, also revealed that he had looked up how to clean blood stains and dispose of the evidence. And pictures on your screen right now are of the Delhi Police's investigating team, which is looking into this ghastly, gruesome murder, is trying to take Aaftab to the locations where he has confessed that he disposed of parts of the body. Now, the Delhi Police also, of course, have called a friend of theirs for questioning. The Delhi Police seem to suggest that he was the one who first rang the alarm bells. He called up her brother and her father, talking about the fact that she'd not been answering her phone, and that
She had not been responding to text messages that had been sent by him, and thereafter we are given to understand that the family then approached the police to file a missing persons complaint, and the Delhi police and the Mumbai police started to investigate what really happened. Aaftab, the main accused in this case, of course, has been sent into police custody for the next 5 days. The police are trying to get more details as to what happened. Now, even as we try and cut across live to our reporters in just a bit, what we are given to understand is that the two of them had been in a relationship since about 2019, and the relationship seemed to have soured after they moved to Delhi. And also what the police say is that Aftab, in his confessional statement, has said that she was pressurizing him to marry her, and that is why they got into a huge argument, and thereafter he strangled her. Now, spine-chilling revelations that have come in this case seem to suggest that Aftab was arrested on Monday by the police, and the food blogger has revealed that he'd been inspired by the American crime show Dexter to murder and then store her body. The police have also revealed gory details about the accused's search history, where he looked up methods for how he could essentially dispose of her body parts. Now, what we are given to understand is that the police is going through various locations which Aftab has said he used to dispose of her body parts. The Mehrauli police, of course, is currently at the Mehrauli forest, where it is trying to recover body parts dumped there, and have found some parts yet. That's what at least we are hearing from the police. The police of course, looking at various angles. We are also told that a common friend has now been asked to come in for questioning in this particular murder case. लाश के टुकड़ों को फेंका चलो 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 गाड़ी को फॉलो गाड़ी फॉलो 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 All right, so pictures on your screen are of the investigating team that is now taking away the accused back into police custody. Do remember that he's been remanded to 5 days of police custody by the police. The police, of course, are trying to track down the deceased's remains. Pictures on your screen are of the police team which accompanied him to the Mehrauli forest. Now, according to his own self-confession, that's what the police at least have told us, that he disposed of the body parts and the Mehrauli forest. The police, of course, are still trying to ascertain the timelines as to when this murder was committed. But initially, what they said was that it was on the 18th of May that Aftab strangulated her, and then over the next 18 days or so, was disposed of. Now, let's also play out for our viewers a detailed report on what methods Aftab used. Strangulated, body chopped into 35 pieces and stored in a refrigerator, and then dumped into the forest. Shraddha murder case has shocked the entire nation. How did Aaftab hide the murder of 26-year-old Shraddha for 6 months? As per police investigation, he murdered Shraddha on May 18th and chopped the body into pieces. The chopped body parts were stored in the fridge that was purchased in May. ये 19/5 को 2022 को डबल डोर का फ्रिज था LG का. ये बड़ा फ्रिज के लिए बोला था, डबल डोर का फ्रिज हमारे पास अवेलेबल होते हैं वो हम दे दिए. लेकिन जिस तरीके से बहुत प्लान तरीके से ये किया गया, फ्रिज लाया गया, और खासकर इस फ्रिज को सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हैं, ये इतना नया फ्रिज है कि इसकी जो लेयरिंग है वो भी अभी तक उतरी. वी आर नॉट टचिंग इट, पर आप देख सकते हैं कि इट्स अ ब्रांड न्यू फ्रिज.
a brand new fridge, and it's now being covered. The presence of incense sticks has revealed that Aaftab tried to cloak the stench. These are the remains of the very place. The clothes are still lying here. These are Aaftab's clothes that you can see right now on the very stand. There is an incense stick that you see right now. Incense sticks that have been kept, and also the pot puree here. Police are basically indicating that he was constantly using the incense stick to ensure that the stench of the body does not go out, because remember, the body would have got decomposed. As per the investigation, Aaftab disposed the body parts over a period of at least 15 days, dumping it in the forest. It was this area where the police, the Delhi police, was shocked to see when they found that 35 body parts of a person was spread into several areas of this forest, lying somewhere. The details of the murder and the cover-up has made the Shraddha murder case one of the most sensational cases of murder in recent times. Bureau Report, Republic TV. बताइए आपने क्यों किया? So there are the visuals on your screens right now of killer Aftab, who is being taken to the crime spot as we speak. Of course, blood-curdling details are just coming out of how Aftab strangulated Shraddha during a fight. He even sat on Shraddha's chest and suffocated her to death. So those are the details coming in as to how Shraddha was murdered. She was strangulated to death as a result of an argument that broke out between the two. In fact, what we are even given to understand that killer Aaftab sat on Shraddha's chest and suffocated her to death. In fact, first he put Shraddha's body in the bathroom. The parts were even kept in a cupboard, fridge and the kitchen. The body parts were kept in. और सबसे बड़ी बात, अभी जो है आफ्ताब को अंदर ले जाकर जंगल में जो है सारे सबूत को इकट्ठा किया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी हुई, जहां पर श्रद्धा के बॉडी पार्ट को ढूंढने के लिए पुलिस सीन को रिक्रिएट कर रही है आफ्ताब को साथ में लेकर। और यहां पर आफ्ताब बता रहा है पुलिस को कि उसने कहां श्रद्धा के शव के टुकड़े करने के बाद उस फ्रिज से निकालकर उन शवों को इन्हीं जंगलों में फेंका था। इन्हीं घने जंगलों में उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंके थे। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जरा तस्वीर दिखाइए मुकेश और बताइए लोगों को, देश जानना चाहता है कि वो जंगल कौन सा है जहां पर श्रद्धा के शव के टुकड़े करके आफ्ताब ने रात के अंधेरे में फेंके थे, बैग में भरकर पॉलिथीन मिलाकर। और इसके अलावा यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि अभी पुलिस रुकेगी, तकरीबन 1 घंटा और रुकेगी। सारी जानकारी पुलिस लेना चाहती है आफ्ताब से, सीन को रिक्रिएट करा के कैसे आफ्ताब आता था, कितने टुकड़े लाता था, कहां पर फेंकता था, ये सारी जानकारी आफ्ताब जो है पुलिस को दे रहा है। और पुलिस जो है आफ्ताब से सारे सवाल जो उसके पास हैं उनके जवाब ढूंढ रही है। प्रियंका भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, हमारी सहयोगी, उनकी तरफ भी चलेंगे। लेकिन पहले आप ये देखिए कि किस तरह से आफ्ताब को लेकर जब पुलिस यहां पर पहुंची, उसके बाद जो सवाल थे वो यही थे कि 5 दिन की रिमांड में कैसे जो है 5 दिन की रिमांड में सवाल क्या कुछ हाथ लगते हैं। तस्वीर दिखाइए आप जरा मुकेश, इन्हीं घने जंगलों में अभी हम यहीं पर मौजूद थे, अंदर काफी अंदर तक यहाँ पर रिपब्लिक भारत की टीम पहुंची हुई है। और हमने ये जानने की कोशिश की थी कि आफ्ताब कहां तक आ सकता है, क्योंकि मई के महीने में गर्मियों का मौसम होता है, लिहाजा इतना मुश्किल नहीं होता है रात के अंधेरे में। प्रियंका की तरफ चलते हैं, हमारी सहयोगी इन्हीं जंगलों के अंदर मौजूद है पुलिस की टीम के साथ। प्रियंका बताइए।
ये एक बार दिखा दें आपको, यहाँ पर पुलिस का एकदम घेरा है और इस घेरे के जो दूसरे भीतर हम देखेंगे वहीं पर आफ्ताब मौजूद है और उससे लगातार ये सवाल जवाब हो रहे हैं, पूछताछ हो रही है कि कहाँ उसने उन शव के टुकड़ों को फेंका है। 35 वो शवों के टुकड़े जो इसी जंगल में फेंके गए हैं, घना जंगल आप सोचिए। यहीं पर रात को 2 बजे आता था आफ्ताब ताकि सबूतों को मिटाया जा सके और किसी को शक भी ना हो। इसके अलावा जानवरों के सामने भी वो शव के टुकड़े फेंके गए। आप देखिए, हम तस्वीरों के जरिए इस घने जंगल की पूरी आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरीके से यहाँ पर आना दिन में ही जब असहज कोई व्यक्ति महसूस करे तो रात को कितना खौफनाक होगा। लेकिन एकदम बिना किसी डर के आफ्ताब यहाँ पर 20 दिनों तक लगातार आता रहा और जंगल के अलग अलग कोनों में यहाँ पर उसने श्रद्धा के 35 टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंका है। ये आप देख रहे हैं जो पुलिसकर्मी ऐसे ही जगह जगह पर यहाँ पर पूरा घेरा एक पुलिसकर्मियों का बना हुआ है और उसी के बीचों बीच यहाँ से 100 से 200 मीटर की दूरी पर आफ्ताब मौजूद है, जिससे पूछा जा रहा है कि उसने कहाँ वो टुकड़े फेंके हैं। देखिए, कुछ जो टुकड़े हैं, कुछ जो कंकाल हैं वो ले लिए गए हैं, उनको कलेक्ट कर लिया है, फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, डीएनए टेस्ट होगा, उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आएगी फिर ये पुष्टि होगी कि वो श्रद्धा के थे या नहीं थे। लेकिन अपना जुर्म कबूल किया है आफ्ताब पुणे वाला ने और उसने बोला है कि यही इन घने जंगलों में वो आता था। ये मेहरौली का वो घना जंगल है, इसी के नजदीक लिव इन रिलेशनशिप में एक किराए के फ्लैट पर आफ्ताब रहता था श्रद्धा के साथ। और आपको ये तस्वीरें जी विवेक बताइए, विवेक क्या अलग जानकारी आपके पास? विवेक, बिल्कुल प्रियंका, बड़ी खबर है। तकरीबन आधे घंटे का समय यहां पर हो चुका है। पुलिस आफ्ताब को लेकर पहुंची है इन्हीं मेहरौली के जंगल में, जहां से आप हमें रिपोर्टिंग भी कर रही, तस्वीर दिखा रही है और हम भी उन्हीं जंगलों में मौजूद हैं। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आधे घंटे का तकरीबन समय हो चुका है और पुलिस अभी भी यहां पर रुकेगी, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है कई दिनों तक किसी शव के टुकड़े करने के बाद फेंकना। तो लिहाजा बहुत दूर तक आफ्ताब ने शातिर दिमाग का इस्तेमाल किया था, अपना शातिर है वो, और उसने जो है उन टुकड़ों को काफी दूर तक अंदर जंगलों में फेंका था, इन घने जंगलों में, ताकि कोई उसे पकड़ ना पाए, ताकि कोई उन टुकड़ों को पहचान ना सके, ताकि किसी को भनक तक ना लगे। इसलिए 6 महीने के बाद जब पुलिस यहां पर पहुंची आफ्ताब को लेकर, तो उन घने जंगलों में, मेहरौली के घने जंगलों में अंदर तक पहुंचे। सीधे रुक करते प्रियंका की तरफ। प्रियंका, बड़ी खबर बताइए। देखिए, लगातार ये सवाल हो रहा है कि आखिर शव के जो एक श्रद्धा का जो पहले उसको मौत के घाट उतारा, उसके बाद किस हथियार का इस्तेमाल किया गया। ये जानकारी मिली थी कि एक आरी का इस्तेमाल किया गया था और आरी से लगातार 35 टुकड़े किए गए थे श्रद्धा के, और उसको लेकर भी लगातार जांच पड़ताल हो रही है, क्योंकि उस हथियार को इस्तेमाल करने के बाद भी इसी जंगल में आफ्ताब ने फेंका है और उसको भी ढूंढने का प्रयास हो रहा है। तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे थे कि कितने घने जंगल में हमें, और यहाँ पर तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, हम यहाँ पर लगातार मौजूद है। कोशिश हम कर रहे हैं आगे जाने की, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने पहरा बनाया हुआ है और कहा है कि आप आगे नहीं जा सकते क्योंकि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो, इस तरह की किसी को इजाजत नहीं है। और आफ्ताब को इसी पूरे जंगल के भीतर लगातार ले जाया जा रहा है। 5 दिनों के रिमांड पर है, 5 दिनों तक लगातार यहाँ पर लाया जाएगा और उन 35 टुकड़ों को इकट्ठा करने का प्रयास होगा। अभी तक कुछ कंकाल मिले हैं जिनको फॉरेंसिक जांच, डीएनए जांच के लिए भेज दिया। एक्सपर्ट्स के द्वारा ये जानकारी मिली है। जब ये पूछा गया था कि 3 महीने पुराना जब वो कंकाल हो गया है तो उसकी जांच कैसे होगी, कैसे पता चलेगा कि डीएनए वो मैच होता है या नहीं। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि 3 साल तक किसी भी कंकाल को आप डीएनए टेस्ट कर सकते हैं और उसकी एकदम सटीक जानकारी मिलेगी, सटीक जानकारी। और इसी बीच इन्हीं जंगलों के बीच से एक बड़ी खबर आ रही है। विवेक, बताइए बड़ी खबर क्या है? बिल्कुल प्रियंका, बड़ी खबर है क्योंकि जिस तरह से पूरे इस्तेमाल किया गया शातिर दिमाग का आफ्ताब के द्वारा, श्रद्धा के फोन को फेंका गया था। इस घटनाक्रम के बाद आफ्ताब ने श्रद्धा के फोन को फेंक दिया था, लेकिन इस घटना के कई दिनों के बाद वो उसको पहले इस्तेमाल करता रहा ताकि किसी को इस बात का अंदाजा ना हो कि श्रद्धा के साथ कुछ अनहोनी हो चुकी है। तो काफी दिनों तक उसने उसका इस्तेमाल किया और उसके बाद उस फोन को फेंक दिया था ताकि किसी को उसका मोबाइल फोन ना मिल पाए, ताकि किसी को श्रद्धा के बारे में कोई जानकारी, कोई इंफॉर्मेशन ना मिल पाए, ताकि कोई श्रद्धा तक पहुंच ना सके। इसलिए आफ्ताब ने वेल प्लान के जरिए पूरी प्लानिंग उसने की और उसके तहत पहले उसने श्रद्धा का मर्डर किया, फिर शव के टुकड़े किए, शव के टुकड़ों को जंगल में फेंका और फोन को कुछ दिनों तक इस्तेमाल किया और फोन के इस्तेमाल के बाद उस फोन को भी उसने फेंक दिया था ताकि किसी को खबर ना लगने पाए कि श्रद्धा कहां है। वो तो गनीमत है कि श्रद्धा के पिता सामने आ गए, पुलिस से उन्होंने शिकायत कर दी, नहीं तो ये मर्डर 6 महीने तक जो किसी की निगाह में नहीं था, किसी की जानकारी
गाड़ी में नहीं था वो ऐसा ही बना रहता। और जब पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर सीन रिक्रिएट कर रही है, आफ्ताब को ले जाकर उन जगहों को तलाश रही है और उन टुकड़ों को तलाश रही है जो श्रद्धा के शव के टुकड़े जहां पर आफ्ताब ने इन्हीं जंगलों में उनको फेंका था, तो एक बड़ी बात है। और आज अगर कुछ बरामदगी यहां पर पुलिस को होती है तो बड़ी सफलता इस मामले में पुलिस को मिलेगी। इस केस में महत्वपूर्ण तथ्य मिलेंगे पुलिस को और उन शवों के टुकड़ों को डीएनए के लिए भी भेजा जा सकता है। लेकिन पहली प्राथमिकता श्रद्धा के पिता की तरफ से ये गुहार लगाई गई है, आफ्ताब को सख्त से सख्त सजा हो। श्रद्धा के पिता ने फांसी की मांग की है। दिल्ली पुलिस की जांच सही दिशा में जा रही है, ये भी आफ्ताब श्रद्धा के पिता ने कहा है। दिल्ली पुलिस पर पूरा भरोसा, आफ्ताब से कभी भी संपर्क में नहीं रहा। देखिए आपको बता दें, बड़ा खबर श्रद्धा मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। आफ्ताब ने श्रद्धा का फोन फेंका, फोन की लोकेशन के आधार पर भी तलाश हो रही है। जून तक श्रद्धा के फोन का इस्तेमाल भी आफ्ताब ने किया। मई में देखिए उसे मौत के घाट उतार दिया और जून तक फोन का इस्तेमाल करता रहा। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर ये, आफ्ताब को फांसी की सजा मिले। ये उस पिता की गुहार है जिसकी बेटी को प्यार करने की सजा मिली है, एक विश्वास करने की सजा मिली है, जिसकी बेटी को 35 टुकड़ों में काट कर फेंक दिया, मौत के घाट उतार दिया। वो पिता पूछ रहा है कि उसकी बेटी का गुनाह क्या था, और अगर गुनाह कुछ नहीं था तो फिर गुनहगार को सख्त सजा मिले, फांसी से नीचे कुछ नहीं। फांसी की सजा की मांग की है श्रद्धा के पिता ने। और देखिए हम जंगलों में मौजूद हैं। ये वही घना जंगल है जहां पर आफ्ताब पूनावाला ने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा को मौत के घाट उतारा, फिर उसके शव के 35 टुकड़े किए और इन्हीं जंगलों में फेंका वो शव कुछ को जानवरों के आगे, ताकि पूरी तरह से सबूतों को मिटाया जा सके। देखिए यहाँ पर चलना इतना आसान नहीं है। हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट उज्जवल से कहेंगे, उज्जवल एक बार इधर आइए, देखिए ये तस्वीरें दिखाइए। यहाँ पर चलना आसान नहीं है। हम जब यहाँ पर एंट्री पॉइंट से आ रहे थे तो भी अलग अलग पत्थर है, ऊबड़ खाबड़ ये रास्ता है, घना जंगल है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि किसी भी जंगल में जाना है तो इतनी इजी एंट्री नहीं है, इतने आसान तरीके से आप नहीं जा सकते। जब दिन में ये हाल है तो आप सोचिए रात के 2 बजे कितना खौफनाक मंजर होता होगा। लेकिन आफ्ताब के अंदर कोई डर नहीं, किसी तरह का कोई डर नहीं, किसी तरह का कोई खौफ नहीं। और ये भी जानकारी मिली है कि वो एक अमेरिकी क्राइम थ्रिलर को लगातार देख रहा था लंबे वक्त से, और वहीं से उसकी साइकोलॉजी लगातार मजबूत होती गई, साइकोलॉजी कन्वर्ट होती गई और इसने इस वारदात को अंजाम दिया। और उसके बाद बिना किसी डर के, लेकिन हैरानी इस बात की होती है कि वो मार्च और अप्रैल के महीने में श्रद्धा को घुमाने के लिए ले जाता है सोशल मीडिया पर। वहां पर उसकी रील भी है, श्रद्धा की आखिरी रील उसी जगह की है जहां पर ये एक पहाड़ी इलाकों में घूमने के लिए गए थे। और फिर मई में जब वापस आते हैं तो मई में इस घटना को अंजाम दिया जाता है, श्रद्धा का गला दबा दिया जाता है। और उसके बाद आरी से, जिस हथियार से उसके 35 टुकड़े होते हैं, उस हथियार को भी ढूंढा जा रहा है। और फिर 300 लीटर का फ्रिज खरीद कर लाता है, उन टुकड़ों को फ्रिज में रख देता है ताकि किसी को शक ना हो। डेटिंग ऐप के जरिए अपनी किसी और दोस्त को घर में बुलाता है और तब तक फ्रिज में वो शव के टुकड़े रखे हुए थे। और फिर 20 दिनों तक लगातार रात के 2 बजे रात के उस अंधेरे में बाहर निकलता था, इन जंगलों की तरफ मुड़ता था और यहाँ पर घने जंगलों के भीतर आता था। आफ्ताब ने श्रद्धा का कत्ल किया और उसके बाद जिस तरह से उसने एक दिमाग इस्तेमाल किया, एक सीरीज को इंस्पायर करके उसने उससे सीखा कि कैसे किसी बॉडी को ठिकाने लगाया जाता है, कैसे किसी बॉडी के जो टुकड़े होते हैं उसको ठिकाने लगाया जाता है। उन सबसे सीख के बाकायदा पूरी प्लानिंग करके जिस तरह से एक खुलासा हम आपको लगातार दे रहे हैं। तस्वीर दिखाइए मुकेश, तस्वीर दिखाइए इन जंगलों की, घने जंगल जहां पर आकर आफ्ताब जो है श्रद्धा के बॉडी के टुकड़े फेंका करता था। आज पुलिस उसी आफ्ताब के साथ मौजूद है और वही आफ्ताब अब पुलिस को बता रहा है कि उसने कहां पर उसने टुकड़े फेंके थे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसको देखिए और अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी ये खौफनाक वारदात को अंजाम आफ्ताब ने दिया था 18 मई को। देखिए So those are the live visuals right now coming in from Mehruli forest. Now remember, this is the same forest where the body parts of Shraddha were dumped by Aaftab. So of course gruesome details that are coming in of how Aaftab carried out this heinous act. The body parts were stored in the refrigerator and it was over a period of time that these body parts were dumped in this forest and the nearby areas.
And more breaking updates that are coming in. This one on the demand of Shraddha's father, who demands nothing less than a death penalty for the accused. We also understand that Shraddha's father is suspecting a love jihad angle. So a capital punishment demand that has been made by Shraddha's father, and he's also suspecting a love jihad angle in this gruesome murder. So that is, of course, the demand of the family members of Shraddha, saying that they demand nothing less than death penalty for Aaftab, and also suspecting that there is, in most probability, a love jihad angle in this case. Remember the details that are just trickling in of how heinous the act was, and how Shraddha was strangulated to death. In fact, parts were kept, the body parts, after they were chopped by Aaftab. They were even stored in cupboard, not just the fridge, and in the kitchen itself. In fact, remember, we also got to know how there were parties that were also held in this particular residence, where the body parts of Shraddha were stored in the fridge. We also are getting to know that acid was used to wash the floor to avoid DNA detection. So very cleverly, the whole plot that was the whole murder that was plotted by Aaftab, and an attempt to erase all the evidence, as he used acid to wash the floor to avoid the DNA detection. He even threw Shraddha's clothes into the garbage van, is what we are given to understand. In fact, remember, Aaftab started dating after murdering Shraddha, is also what we're given to understand. So he was very much active in several dating apps and started dating right after carrying out this heinous murder. He used the same app to date after killing, and Aaftab even communicated with the police only in English, and that we also understand Aaftab told police, yes, I killed her. So that was an admission that was made by killer Aaftab to the police, having accepted the heinous act that he carried out. The body parts were chopped brutally in 35 pieces. They were stored not just in the fridge, but also in the kitchen, also in the cupboard. And in the very same room, incense sticks were used to prevent any foul odor from giving a hint to others that there is something fishy, and that there was an act such as this was carried out. We also understand that a cleaver was used to chop the body into several pieces, after which the body parts were consequently dumped in this particular Mehroli forest over a period of time. As you can see, those are the visuals coming in of Aaftab being taken to the crime location by the police. Of course, this is a 6-month-old case that has been cracked by the Delhi police. The visuals there coming in from that very village where the body parts were dumped by killer Aaftab. He's being taken there at the crime spot to recreate the scene. फिर उसको मौत के घाट उतारा, उसके शव को बाथरूम में रखा गया। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मिल रही है। देखिए, ग्राउंड जीरो से हम लगातार आपको एक-एक तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ चप्पे-चप्पे पर देखिए पुलिस का पहरा है, वो हमें आगे जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वहीं पर यहीं पर 50 से 100 मीटर की दूरी पर आफताब मौजूद है, जो कि सफेद रंग के गमछे से अपना चेहरा ढके हुए है। नीले रंग की उसने हुडी पहनी हुई है, टी-शर्ट पहनी हुई है, और पैरों में चप्पल है। उसी के साथ आगे बढ़ता हुआ जगह-जगह बता रहा है कि कहां पर उसने वो कंकाल फेंके हैं, और उसी के यहां पर लगातार नजदीक हम ट्रैक कर रहे हैं सुबह से इस खबर को। आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है, 45 मिनट के करीब हो गया है। और उज्जवल वीडियो जर्नलिस्ट अपने उज्जवल को हम बोलेंगे, इन जंगलों के बीच में हम खड़े हुए हैं। लगातार हमारी निगाह है कि जैसे ही यहां से जैसे आफताब निकलेगा, सीधा वो तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन बड़ी खबर ये कि श्रद्धा के सीने पर बैठकर उसने उसका गला दबाया, और फिर उसके शव को बाथरूम में रखा गया। विवेक के पास चलते हैं सीधा अगली बड़ी खबर के लिए। विवेक, ओवर टू यू। प्रियंका, जिस तरह से आप जानकारी दे रही, किस तरह से उसने हत्या की, श्रद्धा की, उसके बाद सबूत को ठिकाने लगाने की कोशिश की, लेकिन इस बीच खबर यह है कि तकरीबन 40 मिनट का समय हो चुका है। पुलिस आफताब को लेकर अंदर मौजूद है, और यहां पर एक-एक टुकड़े को ढूंढा जा रहा है। आफताब ने जहां पर, आपको बता दें, श्रद्धा के बॉडी पार्ट फेंके। देखिए पुलिस की तस्वीर, जरा जूम करिए जरा मुकेश, जरा पुलिस की मौजूदगी दिखाइए, क्योंकि यहां पर आप देखिए अंदर तकरीबन यहां से 20 मीटर दूर पुलिस मुझे नजर आ रही है। छोटा सा ब्रेक है, जल्द लौटते हैं। कातिल आफताब उगलेगा एक-एक राज। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। All right, so there you have the visuals right now coming in from Mehroli forest. The body parts were disposed of by Aaftab in the same jungle. He's been taken by the police to the crime spot where the body parts of Shraddha were disposed.
A very short break for now, but on the other side, we'll continue to get you live coverage and more on the other side from that crime spot where the body parts of Shraddha were disposed of by Aaftab. Fire that has been registered against NCP leader Jitendra Awad. He huddled the woman's shoulder and also said that why are you standing in the middle, just move ahead. After which she went to file a complaint in Mumbra police station. Where a molestation case has been filed against Jitendra Awad, and his supporters resorted to violence as well. Priyank Kharge has now issued an open statement to all the BJP cadres there, stating that no matter what, we will not let any BJP leaders to set foot into the constituency. Here are the protesters who are getting very much violent, and they are clearly demanding to withdraw the case that has been registered against Jitendra Awad. The wife of Jitendra Awad, she is now entering Mumbra police station, and she has also clearly mentioned is a fake case. Aaftab, the man who has brutally butchered Shraddha, was seen covering his face after that brutal act. I'm just reporting from the forest area where the body pieces of Shraddha, who was killed by her lover Aftab, was dumped. 18th May reportedly, Aftab strangulated Shraddha to death, stored her body for a few days, and later he reportedly cut her into 35 pieces, stored it in a carton box, dumped it in several parts of this large forest area of Mehroli Chhatarpur Aravali forest. Where the fire has engulfed several houses. This fire blaze took place today early in the morning. District administration along with the Jammu and Kashmir police, they are trying to douse the fire. 155 kgs of drugs were seized by police in Punjab's Pathankot. मौके पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर ब्लास्ट किया गया था। इन पटरियों के नीचे अब जो अधिकारी जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। हर छोटे बड़े पहलू पर जांच जो है वो चल रही है। There are the protesters and the supporters of Jitendra Awad who have blocked the road. Not only this, but also the tires that was burned in the roads of Mumbra, where the supporters and the workers of Jitendra Awad, they have been present right outside the police station where the FIR that has been registered. Fire that has been registered against NCP leader Jitendra Awad. He huddled the woman's shoulder and also said that why are you standing in the middle, just move ahead. After which she went to file a All right, getting in gory details of how Aaftab carried out this murder. The visuals there coming in from Mehroli forest where the body parts were dumped by Aaftab. He's being taken to the forest by the police officials as we speak. We have Vivek from Bharat joining us. Vivek, help us put this all together. What is known so far? How did he carry out this brutal act? And the very fact that all of this happened when nobody had a clue that the body parts were stored in this refrigerator for so long. How did all of this happen? बिल्कुल तनीषा, निश्चित तौर पर किसी को अंदाजा नहीं था कि इस तरह से फ्रिज में जो है 35 टुकड़े रखे गए हैं। हम इस वक्त रिपब्लिक भारत की टीम, रिपब्लिक टीवी की टीम वहां पर मौजूद है मेहरोली के जंगल में। मैं चाहूंगा कि मेरे विजय मुकेश आपको तस्वीर दिखाएं और आपके माध्यम से पूरा देश तस्वीर देखिए। ये घने जंगल की तस्वीर है जहां पर पुलिस जो है इस पूरे मामले में जो आरोपी है आफ्ताब, जिसने श्रद्धा का मर्डर किया, गला दबाया, उसके बाद उसके शव के टुकड़े किए और इन्हीं जंगलों में, इन्हीं मेहरोली के, दिल्ली के मेहरोली के जंगलों में, छतरपुर में उसने उन टुकड़ों को फेंका। अभी पुलिस की टीम, दिल्ली पुलिस की टीम आफ्ताब को लेकर अंदर गई है। सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। इसके अलावा यह पूछा जा रहा है कि उसने किस तरह से रात में आकर कहां पर उन टुकड़ों को फेंका है। हम इस वक्त उन्हीं जंगलों में मौजूद हैं और काफी समय हो गया है, तकरीबन 50 मिनट का समय हो चुका है यहां पर आफ्ताब को लाए हुए और अभी भी पुलिस अंदर मौजूद है। इसका मतलब सीधा यही है कि अभी पुलिस को और सारे सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। इसके अलावा इसका मतलब दूसरा यह भी
यही बनता है कि आफ्ताब ने काफी अंदर तक जाकर इन्हीं जंगलों में उन टुकड़ों को फेंका था। सवाल इस बात को लेकर भी है कि लगभग 6 महीने का समय हो चुका है इस पूरे घटनाक्रम को। ऐसे में उन सारे सबूतों को इकट्ठा करना इतना आसान पुलिस के लिए भी नहीं है। एक लंबा वक्त निकल गया है, इन्हीं जंगलों में उन टुकड़ों को फेंका गया था। लिहाजा पुलिस अब ये कोशिश कर रही है कि कुछ पुलिस के हाथ लगे। कुछ टुकड़े तो श्रद्धा के शव के पुलिस को हाथ लग चुके हैं, लेकिन अभी भी यहां पर आफ्ताब के निशानदेही पर आफ्ताब यहां पर लाया गया है। पुलिस के द्वारा सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। 5 दिन की रिमांड पर है आफ्ताब, और आफ्ताब से पूछा जा रहा है कि उसने कहां पर इन शवों को फेंका था, कहां पर शव के टुकड़ों को उसने यहां पर फेंका था रात में आकर। कहा यही जा रहा है, पहले उसने जब श्रद्धा का मर्डर किया 2 दिन तक उसने शव के टुकड़े किए, सबूत मिटाने की कोशिश की, रासायनिक पाउडर का किसी का इस्तेमाल किया, फ्रिज में टुकड़े रखा, और एक एक दिन करके एक इकट्ठा नहीं फेंका गया, एक एक दिन करके उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े इन्हीं जंगलों में फेंका है। हम चाहेंगे तस्वीर, जरा मुकेश इधर आइए, मेरे साथ आइए, हम दिखाएंगे आपको रिपब्लिक टीवी पर कि किस तरह से इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया। इन्हीं जंगलों में अभी पुलिस की टीम मौजूद है, इन्हीं जंगलों में पुलिस की टीम मौजूद है। आफ्ताब से सवाल जवाब कर रही है, आफ्ताब से पूछ रही है कि उसने कहां कहां पर श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंके थे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस जो सीन रिक्रिएट कर रही है उससे पुलिस को काफी सफलता मिल सकती है। हालांकि पुलिस के साथ आरोपी है, पुलिस के पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, लेकिन अभी जिस तरह से ब्रूटली श्रद्धा का मर्डर किया गया, उसके शव के टुकड़े किए गए, यह अपने आप में बड़ी बात है। और पूरा देश जो है इसको देखकर सुनने के बाद सन्न है। तस्वीर दिखाइए जरा गहराई इसमें, मुकेश जरा दिखाइए कितना गहरा ये जंगल है, जरा आप भी देखिए। ये जंगल बहुत गहरा है, बहुत घना जंगल है ये। और हम यहां पर पहुंचे थे अंदर तक जहां पर अभी आफ्ताब है, जो कि पुलिस ने अभी मीडिया को रोका हुआ है बाहर की तरफ, ताकि जो इन्वेस्टिगेशन है वो लगातार चलता रहे। और ये देखिए जरा इन्हीं घने जंगलों में रात में बताया जा रहा कि 12-2 बजे के आसपास यहां पर टीम जो है यहां पर आफ्ताब पहुंचता था और टुकड़ों को फेंका करता था। और उसके बाद उसने धीरे धीरे करके एक एक दिन करके श्रद्धा के शव के तमाम बॉडी पार्ट इन्हीं जंगलों में फेंके। और अब जो है पुलिस उनको तलाश कर रही है, पुलिस ये ढूंढ रही है। उबड़ खाबड़ ये रास्ता है, देखिए ये इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि आफ्ताब ने उस प्यार करने वाली अपनी श्रद्धा का मर्डर किया था, जिसके लिए उसने श्रद्धा ने अपना परिवार छोड़ दिया था मुंबई में, पालघर की वो बेटी जिसको इंसाफ दिलाने के लिए आज पूरा देश ये देख रहा है, रिपब्लिक टीवी को देख रहा है और ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर किस तरह से आफ्ताब ने श्रद्धा का मर्डर किया। क्यों किया? सिर्फ इसलिए कि श्रद्धा ने शादी के लिए कहा था। श्रद्धा ने कहा था कि हम प्यार करते हैं तो फिर शादी भी करी जाए, लेकिन आफ्ताब का मकसद कुछ और था। आफ्ताब ये चाहता ही नहीं था कि श्रद्धा के साथ उसकी शादी हो। कहा तो ये भी जा रहा है कि आफ्ताब किसी और के साथ रिलेशनशिप में भी था। जी Here are the protesters who are getting very much violent and they are clearly demanding to withdraw the case that has been registered against Jitendra Awad. The wife of Jitendra Awad, she is now entering Mumbra police station and she has also clearly mentioned is a fake case. Aaftab, the man who has brutally butchered Shraddha, who is seen covering his face after that brutal act. I'm just reporting from the forest area where the body pieces of Shraddha, who was killed by her lover Aftab, was dumped. 18th May reportedly, Aftab strangulated Shraddha to death, stored her body for few days, and later he reportedly cut her into 35 pieces, stored it in a carton box, dumped it in several parts of this large forest area of Maroli Chhatarpur Arabli forest. Where the fire has engulfed several houses. This fire blaze took place today early in the morning. District administration along with the Jammu and Kashmir police, they are trying to douse the fire. 155 kgs of drugs were seized by police in Punjab's Pathankot. मौके पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर ब्लास्ट किया गया था। इन पटरियों के नीचे अब जो अधिकारी जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। हर छोटे बड़े पहलू पर जांच जो है वो चल रही है। There are the protesters and the supporters of Jitendra Awad who have blocked the road. Not only this, but also the tires that was burned in the roads of Mumbra, where the supporters and the workers of Jitendra Awad, they have been present right outside the police station where the FIR that has been registered.
Fire that has been registered against NCP leader Jitendra Awad. He huddled the woman's shoulder and also said that why are you standing in the middle, just move ahead. After which she went to find. We're now cutting across to pictures that we have now accessed of the Prime Minister meeting the British Prime Minister Rishi Sunak at the G20 summit. Do remember that there was no bilateral that was lined up between the two leaders, but we are given to understand that there was some time that was there, and pictures on your screen are of Prime Minister Modi meeting the British Prime Minister Rishi Sunak in Bali. India, of course, takes over the presidency of the G20 at the summit, and there is a lot on agenda as far as this is concerned. So pictures on your screen are of Prime Minister Narendra Modi meeting with Rishi Sunak. Well, going back to the big crime story that we have been tracking over the past 2 days, pictures on your screen are of the accused in this particular case. Now, chilling details seem to be emerging every hour as the police continues with its investigation into this grisly murder. The police, of course, have now taken him to the crime scene. This is the place where the police say he disposed of the deceased's body parts. Let's go across to Tanisha. I think she has more details on this now. Tanisha, even as we speak, new details seem to be emerging into the manner in which this murder was conducted. Also, what we are given to understand is that the police have now called a common friend for questioning as well. Right, Rupan rightly said. A common friend has been called for questioning today, and right now we are at that very crime scene where Aftab threw the body parts, the 35 parts that he cut Shraddha's body into. The Delhi police has now taken him inside the crime scene. The media is stopped outside. He's been taken inside the forest to exactly locate about where he actually threw the body parts, and something if more skeletons could tumble out of this forest. The another angle that we're getting to know right now is when Republic talked to Shraddha's father, he was very saddened over the death, and he also demanded that strict punishment should be given. He has demanded death penalty for Aftab is what we are getting to know. Right now we are at that crime scene. The more information, new chilling details have now emerged, Nupur, where we are getting to know that it was that soon after Aftab murdered Shraddha, he called another girl via a dating app, and he spent a day, a night with her. And not just this, he also goes on to date her. So it was not just after killing, he lived a very normal life. So these are the chilling details that we're getting to know. Another details that we're getting to know is that he used acid to throw Shraddha's body. After throwing Shraddha's body, he used acid to clean the floor so that there could be no sign of the murder, because remember, blood stains are such that remains on the floor for a longer period of time. So this killer, he tried every possible way to make sure that there was no proof left after even after the police at some point of time gets to know that that Shraddha was killed. And remember, this is after 6 months that the case has been solved. So clearly very technical, very smart move by Aftab, wherein he used all his knowledge that he had about being a chef, about how to dispose of the body. He used all of these techniques to make sure that nothing was found after he had committed the grisly murder. These are the scathing details, very chilling details that we're getting to know from sources. Nupur.
Right, absolutely. Tanisha, as you're pointing out, of course, the police are investigating the sequence of events. But is the police also looking at the angle, perhaps, that there could be someone else involved in this murder? Because in this morning, during the course of the morning, we've heard from our sources within the police saying that it could be possible that there was someone else also who was in the know, because it's been about 6 months and he managed to conceal it well for 6 months at least. Right, Nupur. There could be an angle where the police could investigate if another friend was involved. And about this girl coming over to Aftab's place after Shraddha was murdered. Who was this girl? What were her links with Aftab? How did she met her? How did she met him over the dating app? How many days did they spend together? Is also a questionable topic. And about the common friend being questioned by the Delhi police is also raising several questions as to if the common friend could give out several details, if there was any other angle in the case, or if somebody helped Aftab in the murder. Because remember, he eloped with Shraddha from Mumbai, and soon after that they went to Himachal and then Rishikesh. So remember, there were 2 places that they halted at before coming to Delhi, and soon after that they had a brawl, and then he committed the gruesome murder. And now it is it is to be noted that Aftab actually sat on Shraddha's chest and then cut her into pieces. So he first strangulated her and then cut her into pieces. And then first he kept the body in the washroom, and soon after that he managed to take the body into the fridge that he bought. We also talked exclusive to the fridge owner yesterday, and soon after that the 35 pieces were disposed of in this very forest which we are right now, and other locations as well. So very smart move by this killer, where he is not just disposed. Absolutely. Tanisha, do stay with us. I think we've got Madhurima also joining us. She has more details. Madhurima, tell us what you're learning in terms of the new details that are emerging. We of course know right now the police are still with the accused, and they are scouring this area. अच्छा, रात के अंधेरे में भी लोग आते जाते हैं, कभी देखा आपने? नहीं, हम तो सर अंदर रहते हैं, हम बाहर निकलते नहीं, रात में हमें डर लगता है, तभी हम निकलते नहीं हैं। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, पीने खाने वाले, चोर उचक्के बहुत घूमते फिरते रहते हैं, तो हम डरते हैं, इसलिए हम यहाँ से जंगल से निकलते नहीं है। वहाँ से मेन गेट है, हम वहाँ से निकल के जाते हैं। आप भी यहीं रहते हैं? अच्छा, ये बताओ कि जैसा पूरा स्टोरी सुनी होगी आपने, कैसे मर्डर किया गया और श्रद्धा के शव के टुकड़े इन्हीं जंगलों में फेंका गया। ये जंगल इसके बारे में बताइए जरा कि यहाँ पर लोग क्यों आते हैं? ऐसे कुछ लाशें भी मिलती हैं? हाँ, लाशें मिलती हैं। एक बार वो मिली थी यहाँ पे, जो कि मैं रहता तो वहाँ हूँ, कुतुबना मेट्रो बार, वो बिल्डिंग, वहाँ से। अब टीवी पे देख रहे थे हम, अच्छा, कि पुलिस लेके पहुँच चुकी है। देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं वो टीवी पर देख रहे हैं, रिपब्लिक पर देख रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस जो है आफ्ताब को लेकर पहुंची हुई है। और ये जंगल के बारे में वो बता रहे थे कि जंगल खुला हुआ है, कोई भी कभी भी कहीं से भी आ सकता है। यहाँ पर चोर उचक्के, इस तरह की प्रवृत्ति के असामाजिक तत्व रहते हैं। रात के अंधेरे में इन लोगों को डर लगता है। लेकिन All right, so we are of course continuing to track the latest in the story. Tanisha has some more details now. Tanisha, we were of course speaking about new details that are now emerging. Take us through what you're hearing. Right, Nupur, right now we're getting to learn that the accused Aftab has been taken deep inside the forest to recreate the whole crime scene as to how he threw the body parts. But for now, I have these locals with me who commute daily to this forest. We would like to know from them if they saw something suspicious. आप लोग रोज आते हैं यहाँ पे? नहीं, रोज ही आते हैं, मतलब ड्रेस यहीं लोकल ही हैं, तो पता है। तो आपको कभी कुछ दिखा था, एक सस्पिशन, कोई आदमी आते हुए या फिर कोई बैग लाते हुए कभी भी? रात को हम तो 10 बजे तक घर ही चले जाते हैं नॉर्मली, पर ये रात को 2 बजे आ रहे हैं, तो लेट कौन देख रहा है? यहाँ पर ना कोई सिक्योरिटी रहती है ना कुछ रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे तो कोई ना कोई, तो ऐसे कोई इतना ध्यान भी देता कौन जा रहा है अंदर है, पर ऐसा दिखा नहीं कभी कुछ। तो
जब आप लोग थे यहाँ पे फॉरेस्ट में, क्या आपको कभी कोई स्मेल आया या फिर कभी आपको कुछ लगा कि शायद यहाँ पे कुछ हो सकता है? ऐसे इतने डीपली अंदर कोई जाता था नहीं, सब नॉर्मली बाहर तक ही रहते हैं, रोड तक ही, इतना अंदर कोई आता नहीं। कोई आएगा तो इतना बस थोड़ा सा अंदर तक ही आएगा और चला जाएगा, इतना अंदर तो कोई नहीं जाता। इसलिए जो कुछ स्मेल आ रही तो किसी को नहीं पता चलेगा अंदर क्या हो रहा है। मतलब ये फॉरेस्ट इतना डीप है कि अगर कोई अंदर चला जाए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा? नहीं मैम, कुछ पता नहीं चलेगा। काफ़ी एरिया है ये, और यहाँ मैदानगढ़ी गांव, पीछे साकेत, नीवसराय, तो काफ़ी फैला हुआ एरिया ये। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा लोकल नहीं है जिससे आपकी बात हुई हो, जिसने कुछ आपको बताया हो? लोकल तो हम ही है, पड़ोस में ही रहते हैं, लेकिन रात में तो 2 बजे कोई मतलब ही नहीं बनता कि घर से निकले और कोई किसी को देखे, ऐसा नहीं। अब जब आपको खबर ये पता चल रही है तो आपके दिल में एक दहशत तो बैठ ही गई होगी। कैसा लग रहा है आपको ये सब सुन के? बिल्कुल मैम, कल उनके साथ हुआ है, किसी के साथ भी हो सकता है ये, तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए कम से कम, इससे कुछ नहीं, कम नहीं चाहिए। There you have anger clearly coming out of people of these locals who stay here. They say they're already very petrified about the incident, learning about the incident, and they demand death penalty to be given to Aftab, because such a gruesome murder should not be left with just imprisonment or with just a few years of jail to the person who committed such a ghastly crime. Now remember, these locals have been telling us that this forest area is so deep that nobody will get to know if something is dumped here or something is thrown deep into the forest, because number one, there is no security, number one, there are no people who come and go around regularly at these forests. So a very clear move by Aftab. He knew how to take his stand, where to hide the body, where to throw and dump it. So these are the details that is coming out and this nearby area. So even when you talk to the locals, they have no idea if they saw any people here, because remember, this forest is Absolutely, as you're pointing out, Tanisha, the locals over there also seem to suggest that they had no idea what was going on, and that, that's something that everybody has spoken about. Madhurima, if I could come to you now. Madhurima, we are given to understand that the police is looking at various angles in this case. Also, what we are told is that they have called a common friend for questioning now. So tell us more about that. Well, yes, Nupur, the police is probing all the possible angles in this particular matter, but we'll first take you straight away to the visuals. As you can see that the police deployment here in this forest has been done. We are not allowed to move beyond this point where the police is deployed, and Aftab has further been taken from this particular point deep inside, so you can understand the mentality of a person who would butcher his live-in girlfriend into 35 pieces, Nupur, and then come into this very a very deep forest and then throw these body parts inside this particular forest. And what we are bringing for our viewers right now is these visuals that how this very deep forest, which is a very scary view at midnight and post midnight, this particular person in his 20s first chopped up the bodies and then brought those body parts for consecutive 15 to 18 days to dump in this forest. Stay tuned to Republic TV. We'll be right back after a very short break, bringing you all the details of the gruesome murder case of Shraddha. I'm just reporting from the forest area where the body pieces of Shraddha, who was killed by her lover Aaftab, was dumped. 18th May reportedly, Aaftab strangulated Shraddha to death, stored her body for a few days, and later he reportedly cut her into 35 pieces, stored it in a carton box, dumped it in several parts of this large forest area of Mehrauli Chhatarpur Aravali forest. Where the fire has engulfed several houses. This fire blaze took place today early in the morning. District administration along with the Jammu and Kashmir police, they are trying to douse the fire. 155 kgs of drugs was seized by police in Punjab's Pathankot. मौके पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर ब्लास्ट किया गया था। इन पटरियों के नीचे अब जो अधिकारी जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। हर छोटे बड़े पहलू पर जांच जो है वो चल रही है।
There are the protesters and the supporters of Jitendra Award who have blocked the road. Not only this, but also the tires that was burned in the roads of Mumbra, where the supporters and the workers of Jitendra Award, they have been present right outside the police station where the FIR that has been registered. FIR that has been registered against NCP leader Jitendra Award. He huddled the woman's shoulder and also said that why are you standing in the middle, just move ahead. After which she went to file a complaint in Mumbra police station. Where a molestation case has been filed against Jitendra Award, and his supporters resorted to violence as well. Karge has now issued an open statement to all the BJP cadres there, stating that no matter what, we will not let any BJP leaders to set foot into the constituency. Here are the protesters who are getting very much violent, and they are clearly demanding to withdraw the case that has been registered against Jitendra Award. The wife of Jitendra. All right, so pictures on your screen right now are of the crime scene. We are given to understand that the police over there scouring the forests in Mehroli in search of the deceased remains. The police has been inside along with the accused Aaftab for nearly an hour now, maybe about 45 minutes to an hour or so. They are still there, and we are given to understand that the police, even as we speak, is trying to recreate the crime scene to understand what followed the murder of Shraddha. Let's go back on the ground, I think, to Tanisha, who is tracking the latest for us. Tanisha, as we've been speaking, of course, the police still inside. It's been nearly an hour or so since the police team, along with the accused, went into the crime scene. Right, rightly said, Nupur. It's almost been an hour since Aftab was taken inside of the crime scene. We do see some movements. The Delhi police might soon be coming out now with the accused. And remember, it's day 2 of Aftab Punawala being grilled. The same man who murdered and chopped off his live-in relationship girlfriend into 35 pieces and very smartly threw the pieces all over the Aravali forest where we are right now in Mehroli. We'll be tracking all of those updates. The recent update right now is that his common friend, the common friend of Shraddha and Aftab, have been called in for grilling, and the father has been demanding death penalty. Many more scathing details, many more spine-chilling details coming up right after a very, very short break. Where the fire has engulfed several houses. This fire blaze took place today early in the morning. District administration along with the Jammu and Kashmir police, they are trying to douse the fire. 155 kgs of drugs were seized by police in Punjab's Pathankot. मौके पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर ब्लास्ट किया गया था। इन पटरियों के नीचे अब जो अधिकारी जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। हर छोटे बड़े पहलू पर जांच जो है वो चल रही है। There are the protesters and the supporters of Jitendra Award who have blocked the road. Not only this, but also the tires that was burned in the roads of Mumbra, where the supporters and the workers of Jitendra Award, they have been present right outside the police station where the FIR that has been registered. FIR that has been registered against NCP leader Jitendra Award. He huddled the woman's shoulder and also said that why are you standing in the middle, just move ahead. After which she went to file a complaint in Mumbra police station. Where a molestation case has been filed against Jitendra Award, and his supporters resorted to violence as well. Karge has now issued an open statement to all the BJP cadres there, stating that no matter what, we will not let any BJP leaders to set foot into the constituency. Here are the protesters who are getting very much violent, and they are clearly demanding to withdraw the case that has been registered against Jitendra Award. The wife of Jitendra Award, she is now entering Mumbra police station, and she has also clearly mentioned it's a fake case.
Aaftab, the man who has brutally butchered Shraddha, who is seen covering his face after that brutal act. I'm just reporting from the forest area where the body pieces of Shraddha, who was All right, so we are of course continuing to get you more details of this. What we are given to understand as is that input that seems to be coming is around 10 samples of the remains suspected to be of a human have been picked up by the forensics experts. They have been sent for a DNA analysis. This is according to what we are hearing from our sources, I beg your pardon, in the Delhi police. Now, this is information that we are just getting now. The Delhi police team, of course, is still scouring this Mehroli forest area for remains of the deceased. They took the accused inside the forest area a while ago. So the latest that we are getting is that they have recovered at least 10 samples that have been collected from this particular forest. Those appear to be human remains. That's what we are hearing from the police. Now forensics experts are examining these. They've been sent for forensics analysis. This, of course, would obviously include a DNA analysis as well. You're watching Republic TV. We will continue to bring you updates on this. Stay with us. There are the protesters and the supporters of Jitendra Award who have blocked the road. Not only this, but also the tires that was burned in the roads of Mumbra, where the supporters and the workers of Jitendra Award, they have been present right outside the police station where the FIR that has been registered. FIR that has been registered against NCP leader Jitendra Award. He huddled the woman's shoulder and also said that why are you standing in the middle, just move ahead. After which she went to file a complaint in Mumbra police station. Where a molestation case has been filed against Jitendra Award, and his supporters resorted to violence as well. Has now issued an open statement to all the BJP cadres there, stating that no matter what, we will not let any BJP leaders to set foot into the constituency. Here are the protesters who are getting very much violent, and they are clearly demanding to withdraw the case that has been registered against Jitendra Award. The wife of Jitendra Award, she is now entering Mumbra police station, and she has also clearly mentioned it's a fake case. Aaftab, the man who has brutally butchered Shraddha, who is seen covering his face after that brutal act. I'm just reporting from the forest area where the body pieces of Shraddha, who was killed by her lover, Aftab, was dumped. 18th May, reportedly, Aftab strangulated Shraddha to death, stored her body for a few days, and later he reportedly cut her into 35 pieces, stored it in a carton box, dumped it in several parts of this large forest area of Mehroli Chhatarpur Aravali forest. Where the fire has engulfed several houses. This fire blaze took place today early in the morning. District administration along with the Jammu and Kashmir police, they are trying to douse the fire. 155 kgs of drugs were seized by police in Punjab's Pathankot. मौके पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर ब्लास्ट किया गया था। इन पटरियों के नीचे अब जो अधिकारी जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। हर छोटे बड़े पहलू पर जांच जो है वो चल रही है। There are the protesters and the supporters of Jitendra Award who have blocked the road. Not only this, but also the tires that was burned in the roads of. It's day 2 of
questioning for Aftab Poonawala, the same man who murdered and chopped off his living relationship girlfriend into 35 pieces, and not just that, disposed her body parts into this very forest where we are right now. Aftab, as we're getting to know, is taken inside the forest. He's taken inside the crime scenes. There is police deployment over there, and in just some moments for now, it's almost been an hour since he's been taken to the crime spot, and about few moments from now is what we're getting to learn. He'll be taken out, and Republic will confront him for all of those details coming up next, and more chilling details of the Shraddha murder case. We have it for you, but right after a very, very short break. Fire that has been registered against NCP leader Jitendra Awad. He huddled the woman's shoulder and also said that, why are you standing in the middle, just move ahead. After which she went to file a complaint in Mumbra police station. Where a molestation case has been filed against Jitendra Awad, and his supporters resorted to violence as well. Kharge has now issued an open statement to all the BJP cadres there, stating that no matter what, we will not let any BJP leaders to set foot into the constituency. Here are the protesters who are getting very much violent, and they are clearly demanding to withdraw the case that has been registered against Jitendra Awad. The wife of Jitendra Awad, she is now entering Mumbra police station, and she has also clearly mentioned it's a fake case. Aaftab, the man who has brutally butchered Shraddha, was seen covering his face after that brutal act. I'm just reporting from the forest area where the body pieces of Shraddha, who was killed by her lover Aftab, was dumped. 18th May reportedly, Aftab strangulated Shraddha to death, stored her body for few days, and later he reportedly cut her into 35 pieces, stored it in a carton box, dumped it in several parts of this large forest area of Maroli Chhatarpur Aravali forest. Where the fire has engulfed several houses. This fire blaze took place today early in the morning. District administration along with the Jammu and Kashmir police, they are trying to douse the fire. 155 kgs of drugs were seized by police in Punjab's Pathankot. मौके पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर ब्लास्ट किया गया था। इन पटरियों के नीचे अब जो अधिकारी जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। हर छोटे बड़े पहलू पर जांच जो है वो चल रही है। The Shraddha murder case has taken a massive turn as the 5-day custody has been given to the police officials, and they have taken Aftab straight to these jungles from where we are reporting. From here, the police officials are going to unearth the truth that will reveal that what was the reason behind this gruesome act that was committed by Aftab. Stay tuned to Republic TV. We'll be right back after a very short break to keep you ahead of this story. Here are the protesters who are getting very much violent, and they are clearly demanding to withdraw the case that has been registered against Jitendra Awad. The wife of Jitendra Awad, she is now entering Mumbra police station, and she has also clearly mentioned it's a fake case. Aaftab, the man who has brutally butchered Shraddha, was seen covering his face after that brutal act. I'm just reporting from the forest area where the body pieces of Shraddha, who was killed by her lover Aftab, was dumped. 18th May reportedly, Aftab strangulated Shraddha to death, stored her body for few days, and later he reportedly cut her into 35 pieces, stored it in a carton box, dumped it in several parts of this large forest area of Maroli Chhatarpur Aravali forest. Where the fire has engulfed several houses. This fire blaze took place today early in the morning. District administration along with the Jammu and Kashmir police, they are trying to douse the fire.
155 kgs of drugs were seized by police in Punjab's Pathankot. मौके पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर ब्लास्ट किया गया था। इन पटरियों के नीचे अब जो अधिकारी जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। हर छोटे बड़े पहलू पर जांच जो है वो चल रही है। There are the protesters and the supporters of Jitendra Award who have blocked the road. Not only this, but also the tires that was burned in the roads of Mumbra, where the supporters and the workers of Jitendra Award, they have been present right outside the police station, where the FIR that has been registered. FIR that has been registered against NCP leader Jitendra Award. He huddled the woman's shoulder and also said that why are you standing in the middle, just move ahead. After which she went to file a complaint in Mumbra police station. Where a molestation case has been filed against Jitendra Award, and his supporters resorted to violence as well. Kharge has now issued an open statement to all the BJP cadres there, stating that no matter what, we will not let any BJP leaders to set foot into the constituency. Here are the protesters who are getting very much violent, and they are clearly demanding to withdraw the case that has been registered against Jitendra Award. You are watching Republic TV. Pictures on your screen are of the accused being taken to the crime scene in Mehrauli. We are told that the police team accompanying him, of course, is trying to ascertain what happened. You are watching Republic TV. We slip into a very short break. On the other side, we'll bring you more details of this spine-chilling murder case as they emerge. I'm just reporting from the forest area where the body pieces of Shraddha, who was killed by her lover Aaftab, was dumped. 18th May reportedly, Aaftab strangulated Shraddha to death, stored her body for few days, and later he reportedly cut her into 35 pieces, stored it in a carton box, dumped it in several parts of this large forest area of Mehrauli Chhatarpur Aravali forest. Where the fire has engulfed several houses. This fire blaze took place today early in the morning. District administration along with the Jammu and Kashmir police, they are trying to douse the fire. 155 kgs of drugs were seized by police in Punjab's Pathankot. मौके पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर ब्लास्ट किया गया था। इन पटरियों के नीचे अब जो अधिकारी जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। हर छोटे बड़े पहलू पर जांच जो है वो चल रही है। There are the protesters and the supporters of Jitendra Award who have blocked the road. Not only this, but also the tires that was burned in the roads of Mumbra, where the supporters and the workers of Jitendra Award, they have been present right outside the police station, where the FIR that has been registered. FIR that has been registered against NCP leader Jitendra Award. He huddled the woman's shoulder and also said that why are you standing in the middle, just move ahead. After which she went to file a complaint in Mumbra police station. Where a molestation case has been filed against Jitendra Award, and his supporters resorted to violence as well. Kharge has now issued an open statement to all the BJP cadres there, stating that no matter what, we will not let any BJP leaders to set foot into the. Welcome back. You are watching Live and Breaking, and as more details emerge of this gruesome murder case that has been reported from New Delhi, Republic TV spoke to the father of the girl Shraddha, and here's what he told us. आपको कब पता चला कि श्रद्धा मिसिंग है? आपने कब पुलिस से कंप्लेन लिखवाई? किसने आपको जानकारी दी थी? मैं 14 अगस्त को मुझे पता चला।
उसके दोस्त, श्रद्धा के दोस्त ने हमें बताया कि श्रद्धा का शायद ये ट्रैक नहीं हो पा रहा है मुझे, तो आप जरा कोशिश कीजिए। उसके बाद आपने पुलिस में श्रद्धा को? हाँ जी, नहीं श्रद्धा को नहीं, मैं पुलिस में फिर गया। आप पुलिस में गए? जी। अब जब पुलिस ने आफ्ताब से पूछताछ की, क्या उसने आपके सामने कबूला कि उसने श्रद्धा के बॉडी के टुकड़े किए, 35 टुकड़ों में उसकी बॉडी को काटा? जी जी। आप जिस वहीं दिन थे पुलिस तभी? दिल्ली, जी मैं वही था, मेरे सामने उसने डिक्लेयर किया। जिस दिन वो केस यहाँ से ट्रांसफर हुआ उसी दिन उसने डिक्लेयर किया कि मैंने ऐसे ऐसे श्रद्धा का किया। आप अभी इस लड़ाई को कैसे लड़ रहे हैं? आप क्या चाहते हैं कि प्रशासन कैसी कार्रवाई करे, कैसी सजा मिले? क्योंकि यकीन से परे है कि कोई इस तरीके से मर्डर कर दे और इतनी बुरी तरीके से बॉडी के साथ करे। नहीं, ये इसकी सजा तो मतलब उसके फांसी के अलावा कोई हो ही नहीं सकती है। बस आप फांसी की सजा की मांग करते हैं? नहीं, उसने जो किया है मेरे बेटी के साथ, अगर वो इतना घिनौना है कि और कोई सजा हो ही नहीं सकती उसकी। क्या आप आफ्ताब से पहले मिले थे? आपको उसके बारे में ऐसी जानकारी थी कि, या फिर श्रद्धा ने कभी अपने बताया था कि उसकी जान को खतरा है या आफ्ताब उससे बुरा बिहेव करता है? नहीं, श्रद्धा ने कभी नहीं बताया। ये जब ये मिसिंग हुई तब उसके दोस्त लोग मुझे बताने लगे कि श्रद्धा का ऐसे ऐसे वो तकलीफ देता था, मारपीट करता था। आपने क्या पहले कभी श्रद्धा को समझाने की कोशिश की थी? क्योंकि बहुत बार समझाने की कोशिश की कि ये ऐसा मत करो, इसके साथ मत रहो, हम लोग देखेंगे, तो वो मानी ही नहीं था। All right, so that was the conversation that Republic TV's reporter had with the father of Shraddha. It was Shraddha's father who actually filed a missing complaint with the Mumbai police, and thereafter the case was transferred from here to Delhi, and the Delhi police began investigating this murder case. Now, pictures on your screen are right now coming to you from the Mehrauli forest, which is being looked upon as a crime scene. We are told that a Delhi police team is along with the accused. They're scouring the area for remains of the deceased. What the police, of course, have been telling us is that they are investigating all angles to this. A common friend of the accused, that is Aaftab, and the deceased Shraddha, have also been called in for questioning. So the police trying to essentially piece together what really happened, what went wrong, and what led to this ghastly murder. And also thereafter, of course, questions being raised as to how he was able to keep it under wraps for so long. So all of those things being looked into by the police even as we speak. Madhurima is joining us right now. She's at the crime scene. She's reporting from the Mehrauli forest on this. Now, Madhurima, it's been over an hour or so, I think, since the police teams, of course, went inside with the accused Aftab in this particular case. So give us a sense of what you're learning. Well, Nupur, first let me take you to this particular forest, and this would also decipher the psyche of Aftab as to, because it wasn't an easy task to come into this forest, dive into this particular forest at 2 a.m. in the night and then dispose of the body. I request my camera person to just pan around and give you the sense of the area. This forest begins with nothing but a pile of garbage. It is like for around 100 to 150 meters, this forest is nothing but a pile of garbage on the brim of this particular forest. As you enter through a small opening that is adjacent to the road, there is a pile of garbage. You have to cross that 150 meters and then get inside this particular forest. And as you can see, the police deployment has already been put here to regulate the media, because further from here are the police team that are with Aftab, that are
accompanying Aaftab and are investigating the entire matter. And it is going to take some time, Nupur, because the parts of the bodies were disposed over here in this very vast forest. It is not a small area. Request my camera person will move around and show our viewers that the kind of area and aesthetics this place has. It would take a very courageous person to dive into such a dense forest in middle of nowhere to dispose of these body parts that Aaftab did. And now the police have taken him to inside in the depth of the forest because it is where Nupur these body parts have been disposed by Aaftab, and because it's been 6 months to locate to those small body parts would be a Herculean task even for police officials, and it would take Aftab as well to recollect all those locations. And even as you know, the police of course have accompanied him inside. There have been reports that seem to suggest that they are still trying to piece together the sequence of events, because in his confession he wasn't really clear on the dates. We are now learning that the murder was committed on 18th of May. I'm going to go across to Tanisha in just a bit. Tanisha, stay on with us, but first we're going to play out a phone interview that we had with Shraddha's father a while ago. आपको कब पता चला कि श्रद्धा मिसिंग है? आपने कब पुलिस से कंप्लेन लिखवाई? किसने आपको जानकारी दी थी? मैं 14 अगस्त को मुझे पता चला। उसके दोस्त, श्रद्धा के दोस्त ने हमें बताया कि श्रद्धा का शायद ये ट्रैक नहीं हो पा रहा है मुझे, तो आप जरा कोशिश कीजिए। उसके बाद आपने पुलिस में श्रद्धा को? हाँ जी, नहीं श्रद्धा को नहीं, मैं पुलिस में फिर गया। आप पुलिस में गए? जी। अब जब पुलिस ने आफ्ताब से पूछताछ की, क्या उसने आपके सामने कबूला कि उसने श्रद्धा के बॉडी के टुकड़े किए, 35 टुकड़ों में उसकी बॉडी को काटा? जी जी। आप वहीं थे? पुलिस दिल्ली, जी मैं वहीं था, मेरे सामने उसने डिक्लेयर किया। जिस दिन वो केस यहाँ से ट्रांसफर हुआ उसी दिन उसने डिक्लेयर किया कि मैंने ऐसे ऐसे श्रद्धा का किया। आप अभी इस लड़ाई को कैसे लड़ रहे हैं? आप क्या चाहते हैं कि प्रशासन कैसी कार्रवाई करे, कैसी सजा मिले? क्योंकि यकीन से परे है कि कोई इस तरीके से मर्डर कर दे और इतनी बुरी तरीके से बॉडी के साथ करे। नहीं, ये इसकी सजा तो मतलब उसके फांसी के अलावा कोई हो ही नहीं सकती है। आप फांसी की सजा की मांग करते हैं? नहीं, उसने जो किया है मेरे बेटी के साथ, अगर वो इतना घिनौना है कि और कोई सजा हो ही नहीं सकती उसकी। क्या आप आफ्ताब से पहले मिले थे? आपको उसके बारे में ऐसी जानकारी थी कि, या फिर श्रद्धा ने कभी अपने बताया था कि उसकी जान को खतरा है या आफ्ताब उससे बुरा बिहेव करता है? नहीं, श्रद्धा ने कभी नहीं बताया। ये जब ये मिसिंग हुई तब उसके दोस्त लोग मुझे बताने लगे कि श्रद्धा का ऐसे ऐसे वो तकलीफ देता था, मारपीट करता था। आपने क्या पहले कभी श्रद्धा को समझाने की कोशिश की थी? क्योंकि बहुत बार समझाने की कोशिश की कि ये ऐसा मत करो, इसके साथ मत रहो, हम लोग देखेंगे, तो वो मानी ही नहीं था। All right, that was Anamika Gaur of Republic TV speaking to the father of the deceased. I'm going to go across to Tanisha right now. Tanisha, you know, we are hearing several accounts which seem to suggest that the accused was still active on dating sites even after the murder. There are reports that seem to also suggest that, you know, he did date someone else also after this. So give us more details into how the police are looking at all the new information that we're now getting. Right, Nupur, we just got to know in the morning, early in the morning, there was this detail that came in that Aftab was still active on all social networking sites and especially the dating app. Remember, Aftab met Shraddha via a dating app in Mumbai.
And soon after, when he came back to Delhi, after he murdered her, he started living a normal life. He went on to that dating app again. He dated a girl, and that girl, it was what we're getting to know, also did come to his place, the same place where he had murdered, chopped Shraddha and kept the body pieces in the washroom, in the cupboards, and also in the refrigerator. Now, what we're getting to learn is a common friend, Shraddha and Aftab's common friend, has been called in for questioning today by the Delhi police. It'll be interesting to see what more skeletons stumble out of this very common friend. If he could release, tell the Delhi police some scathing details, some details about if there was some other person involved in the murder, or if it was just Aftab. What we're getting to learn from Aftab's nature about the friends that talked to Republic, even Shraddha's father who talked to Republic, everybody of them quoted that Aftab was very aggressive in nature. So it was not clearly anger of just a brawl, but it was his mental state of mind that he had. He did assault Shraddha in the past, he did hit her in the past, and all of that the family and friends of Shraddha has been quoting. So clearly Aftab, after he eloped from Mumbai to Delhi, because remember the couple eloped from Mumbai to Delhi because Shraddha's parents did not approve of this relationship. Now the question is, why did Shraddha's parents not approve of this relationship? Was the reason because Aftab was violent in nature? Were the parents aware about it? Did the parents smell something suspicious? Remember, the friend has also been telling the media channels, and he's also been heard quoting Republic that Aftab was quite aggressive in nature and Shraddha did fear for her life. So these are some details that are coming out which raises a question on the nature, the kind of nature that Aftab had, many of them pointing towards that Aftab was very aggressive in nature. Right now, we are at that crime spot where Aftab chopped Shraddha's body into 35 pieces. Let me just pan and show it to our viewers that remember this is a very, very dense forest. The forest spans to about hectares of land, and not just this. When we talked to the locals here, the locals confirmed to Republic that because it was such a dense forest, it was very, very difficult to track who comes at night, if somebody was continuously coming to this forest at night, and if somebody could throw or dump something here, because number one, Tanisha, there's you're no pointing security out, obviously. Today we see police personnel all over, security deployed. Right, I don't think Tanisha can hear me. Tanisha, as I was saying, of course, the police still scouring that area. They're going through the crime scene. I'm going to come back to you, but we are once again going to play out that phone conversation that one of our reporters has had with the deceased father. He spoke to Republic TV and said that he was present when Aaftab confessed to the crime. आपको कब पता चला कि श्रद्धा मिसिंग है? आपने कब पुलिस से कंप्लेन लिखवाई? किसने आपको जानकारी दी थी? मैं 14 अगस्त को मुझे पता चला। उसके दोस्त, श्रद्धा के दोस्त ने हमें बताया कि श्रद्धा का शायद ये ट्रैक नहीं हो पा रहा है मुझे, तो आप जरा कोशिश कीजिए। उसके बाद आपने पुलिस में श्रद्धा को? हाँ जी, नहीं श्रद्धा को नहीं, मैं पुलिस में फिर गया। आप पुलिस में गए? जी। अब जब पुलिस ने आफ्ताब से पूछताछ की, क्या उसने आपके सामने कबूला कि उसने श्रद्धा के बॉडी के टुकड़े किए, 35 टुकड़ों में उसकी बॉडी को काटा? जी जी। आप जिस वहीं दिन थे पुलिस दिल्ली, जी मैं वहीं था, मेरे सामने ही उसने डिक्लेयर किया। जिस दिन वो केस यहाँ से ट्रांसफर हुआ, उसी दिन उसने डिक्लेयर किया कि मैंने ऐसे ऐसे श्रद्धा का किया। आप अभी इस लड़ाई को कैसे लड़ रहे हैं? आप क्या चाहते हैं कि प्रशासन कैसी कार्रवाई करे, कैसी सजा मिले? क्योंकि यकीन से परे है कि कोई इस तरीके से मर्डर कर दे और इतनी बुरी तरीके से बॉडी के साथ करे। नहीं, ये इसकी सजा तो मतलब उसके फांसी के अलावा कोई हो ही नहीं सकती है। आप फांसी की सजा की मांग करते हैं? नहीं, उसने जो किया है मेरे बेटी के साथ, अगर वो इतना घिनौना है कि और कोई सजा हो ही नहीं सकती उसकी। क्या आप आफ्ताब से पहले मिले थे?
आपको उसके बारे में ऐसी जानकारी थी कि, या फिर श्रद्धा ने कभी अपने बताया था कि उसकी जान को खतरा है या आफ्ताब उससे बुरा बिहेव करता है? नहीं, श्रद्धा ने कभी नहीं बताया। ये जब ये मिसिंग हुई तब उसके दोस्त लोग मुझे बताने लगे कि श्रद्धा का ऐसे वो तकलीफ देता था, मारपीट करता था। आपने क्या पहले कभी श्रद्धा को समझाने की कोशिश की थी? क्योंकि बहुत बार समझाने की कोशिश की कि ये ऐसा मत करो, इसके साथ मत रहो, हम लोग देखेंगे, तो वो मानी ही नहीं था। All right. Even as we spoke to Shraddha's father, he seemed to suggest that it was his friends, Shraddha's friends rather, who'd alerted him about the fact that she had gone off the radar. So that is what made them suspicious. So I'm going to go back, I think, to Madhurima, who's tracking all the latest details now. All right, first we go across to Piyush, who has more details, I think, about what happened now. Piyush, there are grisly details that seem to suggest that he actually was inspired by the series Dexter. He went on to search the internet for ways in which he could get rid of the remains. So tell us more about what you're learning from your sources. So you rightly said that yes, there have been several grisly details that have now come to fore of how actually Aftab committed this crime, and you rightly said that he got inspired of how to first cut the body into pieces and then dump it through a OTT platform. Now, having said that, he also got to understand about several layers of how to make sure that the body does not stench, how to make sure that people around him do not get to feel that everything is normal. So what he did was that he bought a chemical solution, he bought a 300-liter freezer, and he made sure that people around him were not aware of what actually was happening. In fact, I'll just tell you that how shrewd and how clever this person actually was, that he continued to be in that flat and he continued to pay the rent in the same flat where he first strangulated Shraddha, cut her into pieces and put that body part in the freezer, and then from that flat he used to move around 15-20 minutes to the forest area where my colleague Tanisha is reporting from, and used to dump the body over there. So you can understand that how shrewdly the entire act was being carried out. And again, as I said, that this is going to be a big task for the Delhi police now to make sure, first, to recover all the body remains of Shraddha which is still not been found, and second, to make sure that Aftab gets punishment for the heinous act which he has reportedly done. Yes, back to you in the studio. All right, Piyush, do stay with us. I'm also going to go across to Madhurima. Madhurima, one of the things... Madhurima, what I wanted to ask you was that what we are given to understand is that he made several trips to dispose of the remains, is what we are learning now. So can you elaborate on that? Well, yes, absolutely. He chopped off the pieces into 35 like Piyush was pointing out, and then he kept them in the freezer so that the stink doesn't come out, and he kept on lighting incense around his house so that the neighbors, because if we see the house where he was living in Chhatapur area, that particular area is quite tight knit, and it would not be very difficult for people to recognize such a foul smell coming from somewhere. So he took all the measures, but as far as the disposal is concerned, he took around 15 to 18 days, slowly and steadily. He used to wrap first with the 1 or 2 body part. He used to pick every day. He used to wrap them in plastic, put it in his backpack, and then travel all the way from Chhatarpur, where he was living, to this particular Mehruli forest from where I'm reporting. And while giving you the sense of the area, I'll continue to speak as this is the place where he kept on throwing body parts, because it is such a vast area. It would take some time for anybody to even get the stench of the foul smell over here. And as Tanisha, at the time when she was speaking to the locals, they have also very categorically mentioned that this is a vast forest and nobody really ventures inside, deep inside this particular forest. But the courageous person who chopped off his live-in girlfriend into 35 parts used to come here for 15 to 18 days consecutively
in the night, after midnight, around 2 a.m., he used to leave his place and come here, and in the dark he used to venture inside this dreadful deep forest. Requesting my camera person to show you around that there is not even a way to walk inside the forest. There is no proper way. It is a very narrow path that you have to take, cutting off the bushes and the trees if you want to dig in deep inside this particular forest, because it's an untouched area. It's not a touched area. There's no facility inside this forest. It's not a park, or it's not an area which is recognized by the people. Even the entry of this particular forest starts with a pile of garbage road for around 150 meters is just garbage, because nobody really comes inside it, and the brim of it is just covered with waste. And he used to first cross that wasteland. He could have first recceed this area, and then really chosen this area to commit this act and to hide these body parts. So as Madhurima is pointing out, obviously this was something that he did over a span of weeks, if not days. All three of you, Drew, stay with us. We'll come back to you. All right, news just coming in. We are now getting a reaction from a Union Minister, Giriraj Singh, who's alleged that this is a case of love jihad. Now, let's listen into what he said. काम का 2 मिनट में हम सबसे सलट लेते हैं। क्या बेटी के साथ कराके लेकिन विदाउट FIR अगर किसी से प्रेम विवाह करता हो तो उस लड़के को टुकड़े टुकड़े में परिवर्तित कर दिया जाता है, लेकिन नाम बदल के, शोला बदल करके, भेष बदल करके, फुसला बहला करके हिंदू लड़कियों को, जो मुंबई में घटना हुई है, उस मुस्लिम लड़कों ने अपने साथ विधिवत, जैसा उसके परिजन कह रहे हैं कि उन्होंने एक तरह से लिविंग रिलेशन नहीं बल्कि वैवाहिक रिलेशन के रूप में, और जब उसके बाद उसे टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश के अंदर में ये एक लव जिहाद, एक तरह से मिशन चल गया है मुस्लिम का, लव जिहाद, लोगों को ठगना, हिंदू लड़कियों को बहला फुसला करके अपने साथ जोड़ना और जोड़ करके और फिर उसे इस ढंग से या तो छोड़ देना या मौत के घाट उतार देना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। That's a reaction that we were getting from the Union Minister over there, seeming to suggest that this is another case of love jihad. Pictures on your screen are coming to you from the crime scene. Now, the police, of course, are still inside. It's been nearly a year, I think an hour and a half that the police have taken the accused inside the Mehrauli forest to be able to recover parts of Shraddha's dismembered body, which, according to the police and his confessional statement, he threw over a span of about 18 days. I'm going to go back on the ground to our reporters. Piyush Ori, as well as Madhurima and Tanisha, continue to be with us. We're going to go back to them in just a bit. We slip into a very short break here on Republic TV. Do stay on with us. ही हत्या झाली, ज्या निर्दयतेनं
त्या निष्पाप शरीराचे 35 तुकडे केले गेलेत, पूर्ण दिल्लीमध्ये फेकले गेलेत. त्यामुळे आज संपूर्ण देश या हत्येच्या बाबत दुःखी आहे. पण हे असं एकाएकी घडलेलं दिसत नाही. याच्या पाठीमागे लव जिहादचा काही संबंध आहे का? आणि जर लव जिहादचा याच्या पाठीमागे संबंध असेल तर त्याची देखील चौकशी दिल्ली पोलिसांनी करणं गरजेचं आहे. कारण ही एकटी दुकटी घटना नाही आहे. हे वारंवार देशाच्या विविध कानाकोपऱ्यात हे घडतंय. मग हे घडण्याच्या पाठीमागे कोणते ग्रुप कारणीभूत आहेत? कोणाचं हे षडयंत्र आहे? षडयंत्राच्या पाठीमागे कोणता ग्रुप आहे, कोणती गँग आहे? त्या गँगचा पर्दाफाश होणं हे गरजेचं आहे. म्हणून हे प्रकरण केवळ हत्या असं न गृहीत धरता या प्रकरणाची पाळंमुळं लव जिहादपर्यंत जात आहेत का याचा देखील शोध पोलिसांनी घेणं गरजेचं आहे. म्हणून आम्ही या ठिकाणी श्रद्धाच्या परिवाराला, श्रद्धाला न्याय मिळाला पाहिजे, तिच्यासोबत संपूर्ण देश उभा आहे, ही एक भूमिका आजच्या आंदोलनाची आहे. आणि आजच्या आंदोलनाची ही देखील भूमिका आहे की इथून पुढे अशा प्रकारचे लव जिहादची प्रकरणं होऊ नयेत. ती कायमची थांबली पाहिजेत. आणि ती कधी थांबतील? जर या प्रकरणाच्या मुळापर्यंत पोलीस गेले आणि कोण हे षडयंत्रकारी लोक आहेत, कोण आपल्या युवकांची माती भडकवत आहेत, ही माती भडकवण्याच्या पाठीमागे कोणत्या शक्ती आहेत, त्या शक्ती आपल्या शत्रू राष्ट्रातून ऐतायत का, अशा प्रत्येक गोष्टीची अगदी मुळापर्यंत जाऊन चौकशी झाली पाहिजे. पण या देशामध्ये ज्या प्रखरतेनं हे लव जिहादची प्रकरणं होत आहेत ही आता थांबली पाहिजे आणि ही थांबवावीच लागतील. आणि ती जोपर्यंत याच्या पाठीमागे असणारे लोक एक्सपोज होत नाहीत, त्यांचा उद्देश समोर येत नाही, तोपर्यंत ही प्रकरणं थांबणार नाहीत. म्हणून हिंदू संयमी आहे, हिंदू शांत आहे. याचा अर्थ हिंदूंना रस्त्यावर उतरून आपला राग व्यक्त करता येते असं कोणी समजण्याचं कारण नाही. घडलेली घटना प्रत्येक घराला दुःखी करणारी घटना आहे, देशाला दुःखी करणारी घटना आहे, मानवतेला काळिंबा फासणारी घटना आहे. तर त्याच्यामध्ये लव जिहादचं नेमकं काय याच्याशी नातं आहे याचाही शोध दिल्ली पोलिसांना घ्यावाच लागेल. या सगळ्या माध्यमात अधिकृतरित्या तुमच्याकडनं दिल्ली पोलिसांना काही पत्र लिहिलं जाणार आहे की त्या पद्धतीची मागणी? एक नागरिक या नात्यानं, एक आमदार या नात्यानं निश्चितपणे पत्र लिहिणार, पत्र लिहून पाठपुरावा करणार. श्रद्धाच्या कुटुंबासोबत आम्ही उभे आहोत आणि श्रद्धाला न्याय मिळालाच पाहिजे. याच्यामध्ये लव जिहादचं काय अँगल आहे याची चौकशी झाली पाहिजे, ही आमची मागणी आहे. सर हिंदी में हिंदी में बता दीजिए कि आज हम आंदोलन कर रहे हैं श्रद्धा की हत्या को लेकर एक बड़ा गंभीर सवाल उठा रहे हैं आप कि ये लव जिहाद का मामला तो नहीं, इस पर आप क्या कहें? देखिए, ये आज सारा देश श्रद्धा की जिस प्रकार से निर्ममता से, निर्दयता से हत्या हुई है, बर्बरता से हत्या हुई है, उससे सारा देश आज दुखी है. और श्रद्धा के परिवार के साथ सारा देश आज खड़ा है. श्रद्धा को, उसके परिवार को न्याय मिले, इसलिए देश खड़ा है, हमारी मांग है. पर साथ साथ में ये केवल इसे मर्डर केस करके इस मामले को देख करके नहीं चलेगा, क्योंकि जिस प्रकार के पुरजोर तरीके से सबूत सामने आ रहे हैं वे सबूत अपने आप में सुनिश्चित करते हैं कि इसमें दिल्ली पुलिस के द्वारा लव जिहाद का क्या एंगल है. इसकी भी जांच दिल्ली पुलिस के द्वारा हो, यह आवश्यक है. इसलिए दिल्ली पुलिस से हम मांग करते हैं कि इसके पीछे कोई एक व्यक्ति नहीं हो सकता. इसके पीछे कौन सा ग्रुप है, कौन सी गैंग है, इस षड्यंत्र के पीछे क्या कारण है, क्या हमारे दुश्मन मुल्क के लोग इस प्रकार की गैंग हमारे देश में चला रहे हैं? अगर चला रहे हैं तो उसका मकसद क्या है? क्योंकि एक के बाद एक लव जिहाद के मामले हमारे मुल्क में कई सारे प्रांतों में हो रहे हैं. यदि इसे
पूर्ण रूप से रोकना होगा, इसे विराम देना होगा। तो इस मामले में पुलिस को लव जिहाद के एंगल में इसकी तफ्तीश करनी होगी, इसे पूरी तरह से खंगालना होगा। खंगालने के पश्चात ही यह मामला क्या है ये सामने आएगा। पर श्रद्धा और उसके परिवार को न्याय मिले, लव जिहाद के इसमें क्या षड्यंत्र है, कौन से ग्रुप है, उनका जो पर्दाफाश हो, ये हमारी मांग है। आप सीबीआई की भी मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए ताकि और विस्तार से इस मामले की जांच की जा सके। देखिए, मूलतः श्रद्धा के परिवार को न्याय मिले और जरूर मिलेगा। श्रद्धा के साथ आज देश खड़ा है, उसके परिवार के साथ देश खड़ा है। पुलिस की तफ्तीश, क्या लव जिहाद के कारण ये मर्डर हुआ है, इस ओर पुलिस की जांच आवश्यक है। आप पत्र लिखने वाले हैं? दिल्ली पुलिस को पत्र लिख करके उसका फॉलोअप भी करेंगे और दिल्ली पुलिस से हमारा निवेदन है कि वे इस लव जिहाद के एंगल की भी जांच करें। क्या ये लव जिहाद का मामला जांच होनी चाहिए, होनी चाहिए। जिहाद का मामला जांच होनी चाहिए, होनी चाहिए। क्या ये लव जिहाद का मामला Ram Kadam, of course, talking about the gruesome Shraddha murder case. Now, this particular spine-chilling murder case has taken everybody by storm in the country. But talking about the particular incident, on one hand, he has stated that the whole nation is, of course, upset with the incident. He also called it a horrific incident. He also stated that they will keep protesting until Shraddha gets justice. He's also said that he will be writing a letter to Delhi police, and he stated that everybody wants... होनी चाहिए, होनी चाहिए। ओ रामबाऊ, रामबाऊ, समोर या ताई, ताई समोर या, हो ताई, हो, अरे मेरे प्रेम में तुम यार, अरे वो अनुभाई, अरे अनुभाई आगे, अनुभाई, अरे अनुभाई, अरे अनुभाई, अनुभाई क्या कर रहे हो भाई? लाइव चल रहे नेशनल ला कर, आजे आजे यार, यार वो रामबाऊ, वो रामबाऊ, अनु पीछे हिंदी हेलो देखिए, श्रद्धा के परिवार के साथ इस बर्बरता से, निर्ममता से उनकी हत्या सारा देश आज सारा देश श्रद्धा की जिस प्रकार से निर्ममता से, निर्दयता से हत्या हुई है, बर्बरता से हत्या हुई है, उससे सारा देश आज दुखी है। और श्रद्धा के परिवार के साथ सारा देश आज खड़ा है। श्रद्धा को, उसके परिवार को न्याय मिले, इसलिए देश खड़ा है, हमारी मांग है। पर साथ साथ में ये केवल इसे मर्डर केस करके इस मामले को देख करके नहीं चलेगा, क्योंकि जिस प्रकार के पुरजोर तरीके से सबूत सामने आ रहे हैं, वे सबूत अपने आप में सुनिश्चित करते हैं कि इसमें दिल्ली पुलिस के द्वारा लव जिहाद का क्या एंगल है, इसकी भी जांच दिल्ली पुलिस के द्वारा हो, यह आवश्यक है। इसलिए दिल्ली पुलिस से हम मांग करते हैं कि इसके पीछे कोई एक व्यक्ति नहीं हो सकता। इसके पीछे कौन सा ग्रुप है, कौन सी गैंग है, इस षड्यंत्र के पीछे क्या कारण है, क्या हमारे दुश्मन मुल्क के लोग
इस प्रकार की गैंग हमारे देश में चला रहे हैं। अगर चला रहे हैं तो उसका मकसद क्या है? क्योंकि एक के बाद एक लव जिहाद के मामले हमारे मुल्क हेल्थ को लेकर के एक बहुत ही उनका क्लोज टू द हार्ट ये एक टॉपिक रहा है। और जाहिर सी बात है, जब आज भी जब G20 के मंच पर उनका इंटरवेंशन रहेगा हेल्थ के वर्किंग सेशन के अंदर, तो ये कुछ बड़ी बातें निकल करके आ सकती हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, सबकी निगाहें भारत पर होंगी, प्राइम मिनिस्टर मोदी पर होगी, क्योंकि 2023 में जो प्रेसिडेंसी है G20 की वो प्राइमरीली भारत के पास में होगी। तो इस तरह से किस तरह से भारत का विजन रहता है तमाम चीजों को लेकर के, जैसे डेवलपिंग इकोनॉमीज और डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज के बीच में खाई जो एक है, जो उसको कैसे कम किया जा सकता है, इन तमाम चीजों पर फोकस रह सकता है। जैसे हेल्थ की अगर हम बात करते हैं अरुण, क्योंकि जो हमने पहला सत्र देखा जिसमें ऊर्जा सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा को लेकर बात की कही गई, साफ तौर पर उसमें यह था कि किस तरह से खाली खाद्य की सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं करना है बल्कि इसे जरूरतमंदों तक पहुंचाना है। कुछ इसी तरह की बात जो आपसे मैं सुन पा रही हूं और आप इशारा कर रहे हैं कि यही चीज स्वास्थ्य को लेकर भी हो सकती है, क्योंकि कोविड काल के बाद तमाम देश थे उन्होंने कहीं ना कहीं ये भुगता और भोगा है कि कैसे इस पूरे क्षेत्र में, अगर हम टेलीमेडिसिन की बात करते हैं, आयुष की बात करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने की बात करते हैं, तो भारत उसमें ध्वजवाहक की भूमिका निभा सकता है। और जो ये भी हम जानते हैं आजकल के जो आयुर्वेदिक सेंटर है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन में जो स्टैब्लिश किया गया है, वो भारत में किया गया है। तो दुनिया भारत के आयुष को या फिर आयुर्वेद की पावर को समझती है और जानती है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपना जो भारत का आयुर्वेद है, जो आयुष है, इसको शोकेस करते हुए नजर आ सकते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। लेकिन अगर आप हेल्थ के मोर्चे पर बात करें तो भारत ने एक तरह से टेक का इन्वॉल्वमेंट भी हेल्थ के सेक्टर के अंदर काफी ज्यादा किया है। आरोग्य सेतु ऐप, अगर आपको याद, आरोग्य सेतु ऐप भारत ने उस समय में डिजाइन किया था और इसको ओपन सोर्स कर दिया था। यानी कि अगर आप कोई भी देश अपने देश के अंदर एक ट्रैकिंग ऐप ढूंढना चाहता है जिससे हम लोग आरोग्य सेतु जैसा जो ऐप है जिससे कि आप हेल्थ के या फिर कोविड के मरीजों को Well, that is, of course, the visuals that we're getting of Prime Minister Modi attending the G20 summit, which is currently underway in Bali, in Indonesia. Now, of course, earlier as well, we were talking about the fact that he will be attending key sessions which include the food, energy security, digital as well as health sectors. In fact, Prime Minister Modi a while ago during one of the key sessions reiterated his call for a return to the path of ceasefire and diplomacy in Ukraine, saying members of the G20 should show concrete and collective resolve to ensure peace and security in the world. In fact, of course, talking about the G20 summit here, the G20 leaders have gathered for a two-day meeting in the Indonesian resort of Bali. On the other hand, of course, Prime Minister Modi is set to meet world leaders as well as a part of the G20 summit. Now, Modi also emphasized that finding a solution to the Ukraine crisis will be a focus of India's presidency of the G20, which of course India will be taking over in 2023. In fact, speaking about hosting that as well, Prime Minister Modi did state that the need of the hour is to show concrete and collective resolve to ensure peace, harmony and security in the world. He went on to add that he's confident that next year when the G20 meets in the holy land of Buddha and Gandhi, we all will agree to convey a strong message of peace to the world, is what Prime Minister Modi had stated. In fact, he will of course be discussing with other G20 leaders key issues including global concern such as reviving global growth, food and energy security, environment, health and digital transformation as well. In fact, Modi did speak about, or rather reiterated his call for a return to the path of ceasefire and diplomacy in Ukraine. Of G20 summit, and this is happening in Bali and Nusa Dua summit venue, and this particular session, which is post-lunch session, which is on health, is going to see comments by all the leaders concerned. Prime Minister taking his place next to the Indonesian President Joko Widodo. Of GDP, because
President Widodo would be passing on the chair to Prime Minister Modi ceremony, which is slated for around Indonesia time, which would be about 5:30 p.m. India time tomorrow. But today we are seeing comments being made by President Widodo as chair of G20 on the session which is going on health. It's a very important, crucial issue post the pandemic, how the world has behaved, conducted itself, contributed, and all those issues. That he made earlier when he was participating in the session on food and energy security. Prime Minister made it clear that these disruptions are not sustainable, that they are affecting the poor of the world. The war in Europe should not go on, must not go on. And as someone who comes from the holy land of Buddha and Gandhi, as he mentioned, it is an imperative that India underscore that this war has to stop. Also, he, in the same vein, mentioned that this insistence of the West to punish and in doing so, and we're seeing in the pictures, Prime Minister there engaging with President Joe Biden, that was earlier in the day, and of course, Emmanuel Macron shaking hands with Prime Minister, and as Olaf Scholz, the German Chancellor, looks on, and other leaders present there. So I think Prime Minister there doing some plain speaking in those brief comments that he made, intervening during the session on food and energy security, telling the West to not make sanctions a tool which ends up punishing the world community as a whole and disrupts the fragile global economy, and also that this war has to stop, otherwise the most. In the pictures we are also seeing Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman. He's very important there. Announced oil production against the wishes of the West, and particularly riling the Americans. And Mohammed bin Salman incidentally was to come to New Delhi and then to fly to Bali, but for some scheduling issues, he couldn't. Maybe coming next month sometime. But with that, energy security is doing large on leaders of G20. It's a very important organization with 85% of global trade, 75% of global GDP, and 2/3 and more of global population. Italy, of course, Nivedana. These pictures are coming in at the moment when world population has crossed the 8 billion mark. And in the pictures on the side, the Indian delegation led by Prime Minister Modi, which also has External Affairs Minister Dr. H.I. Shankar, National Security Advisor Ajit Doval, and briefly we saw in the picture the G20 Sherpa for India, Amitabh Kant, and all those people there, of course. And now the session going on health. From now we'll be getting the comments from the Prime Minister Modi in this session as well, and then we'll come back to the. That's the big breaking news coming in, where we're understanding that sources, now the police to write to Bumble app. Now this is with the fact that the police are seeking detail of Aftab's Bumble profile. Now remember, it is stated that Aftab and Shraddha met on this dating app. So the police are now seeking details of Aftab's partners as well. The police is also looking for a girl who came home after the murder. So that is the big breakthrough. That is the big news that is coming in right now, that we're understanding that the police has written to Bumble app. They're seeking details of Aftab's Bumble profile as well. In fact, sources were also suggesting that after he did murder Shraddha, he met another girl and he was in another relationship. Now those details, of course, we'll continue to get the latest on that once we have our correspondence. But the big breaking news coming in right now is the fact that the police have written to Bumble app to seek details of Aftab's Bumble profile. On the other hand, we do know that the Delhi police have taken the accused to the Meroli forest to recreate the entire spine-chilling
murder as well. Now we have Madhurima, who's continuously reporting on the story and getting us the latest. Madhurima, what can you tell us? Now we do know that initially these reports were suggesting that Aaftab and Shraddha had met on this dating app Bumble. Now Delhi police has written to the app as well. Can you give us more details on that front? Yes, absolutely. As we know, that the two met in on the social media on the social media dating app called the Bumble, and now the Delhi police will be writing to the head office of the Bumble to seek the details of Aaftab's profile and henceforth lead on to all the women he dated after committing the murder of Shraddha, because this is how the Delhi police is trying to create a trap for Aaftab to yield more information, because it's been around over 2 hours in this particular forest and the Delhi police has not been able to comb out any body part or any evidence that could further their case against Aaftab. And now this would be one diligent step on the part of the Delhi police, as they would be approaching Bumble to seek all the details of Aaftab as to what was his dating dating style, or to whom all did he message, or to whom all he was texting, and how many people was he dating, and how many people he dated, how many ladies he dated after committing the gruesome murder. Because according to the initial reports, he was dating a couple of girls even after committing this particular murder, this heinous act of chopping a body into 35 pieces. And now the Delhi police is taking this next step to track these digital prints and approach all these women who have dated Aaftab in the past to yield more information about his whereabouts, and if at all they have any information that could link to this Shraddha murder case. Back to you. Right, Madhurima, as you're pointing out, of course, this would be crucial digital evidence as well. Now, the police would, of course, be also looking at the possible role of a second partner, because if you do see the fact that the way this, crime has really panned out, the nature of the crime per se, it does not seem like it can be done by one person. So, the police, of course, on that particular front, would be looking at the role of someone else involved too. Well, absolutely. The police are not ruling out any angle at this particular moment. They are trying to comb out all the evidence as far as this particular investigation is concerned. They are trying to question each and every person linked to this particular case as to find out that if at all if there were any accomplices in this entire matter. Because yes, like you're rightly pointing out, that it is not easy to chop a body into 35 pieces and then dispose it without flinching at least the bit. But as of now, no accomplices have come out. The Delhi police, which is why is trying to even track the digital prints as well, and they are going to map out the entire movement of Aftab on the digital front as well, so as to make sure to pick out information that if at all he was involved in any conversation with anybody else who could have aided him in committing this heinous act. Right, as you're pointing out, okay, all right, Madhurima, I'll come with you. I'll come back to you. Stay with us. We also have Piyush Ori is also reporting on this particular story. Piyush, what is the latest that you can tell us? Of course, we do understand that the Delhi police is recreating this entire this scene at the Mehrauli forest as well. But what can you tell us in terms of where the investigation stands currently? So yes, as Madhurima pointed out, the main challenge right now for Delhi police is to unravel several layers that may be involved in this case. Now, as easy as it seems of Aftab first killing his live-in partner and then chopping her body into pieces, it may not seem that easy, and there are several layers that may be involved. To begin with, it is very important to note for the Delhi police that why actually did Aftab actually come from Mumbai to Delhi, and why actually did he try to take a flat which was very close to Aravali forest.
So was there a pre-planned move or was this a spontaneous act? All this first needs to be ascertained by the Delhi police. And then, as rightly pointed out by Madhurima, the most important aspect now is to understand that was Aaftab doing all these heinous crimes alone or was there an accomplice? And thereby the Delhi police now is trying to get the digital imprints of Aaftab, because as rightly pointed out by Madhurima, Aaftab was very active social media. In fact, there are some very interesting and very sick details that are coming in, that even after killing his live-in partner, he was getting in touch with several other girls through a dating app. So all these aspects would now have to be covered by the Delhi police, and the first step towards this has started by Delhi police by recreating that sick and horrific scene at the Aravali forest where the bodies and remains of Shraddha was dumped. Yes, back to you, the studio. Right, Piyush. Now, Madhurima, coming back to you, of course, talking about this entire spine-chilling murder that has taken place. This also raises questions about Aaftab's mindset. Number one, of course, the way this murder was panned out, because, on one hand, it is being stated that an argument led to the fact that he strangled her and then, of course, cut her body into 35 pieces and then disposed it. But on the other hand, it might also seem like a well-planned murder because of the fact that they were initially in Mumbai, and then we understand that they went to Himachal Pradesh for a trip, and later, of course, they started living in Chhatarpur. Well, yes, absolutely. And even the police are not ruling out any of these angles that this could be a pre-planned conspiracy that Aftab wanted to carry out. And because if you look at the depth of these jungles and the way this entire crime was committed, it is a very dense area. And like I have been pointing out, that the brim of this entire area is just covered with piles and piles of garbage. And it is around 100 to 150 meters that it is nothing but garbage. And look at the density of the area. To venture here around at 2 a.m. in the night is not a task for somebody who's faint-hearted. And now we are bringing you the visuals from the spot. And imagine Aftab coming here and venturing in these areas, trying to dispose the body parts at 2 a.m. What initially he said, the first statement that was given by Aftab was that she broke up with me and left, and only after a lot of grilling that he accepted the fact that the murder has been committed. Then he was brought here, and then the police officials combed out 12 to 14 body parts from this very dense forest over here, and this is how they have recovered. For as of now, the police have taken back Aftab from here. The search operation went on around over 2 hours, nearly 3 hours ever since he was brought here today morning. But what we are learning from his sources is nothing very fruitful has been found today. They have not been able to comb out any more body parts or any other evidence that could further their case, but the number of body parts they have already found are at the FSL, that is the forensic lab, and there the DNA testing will happen, and that DNA would be matched with Shraddha's father, and which will establish that it is all right, Madhurima, stay with us. Piyush as well. We're going to come back to you and track the latest on this, but we're going to slip into a short break and of course continue getting the latest coverage on this particular story. यहीं पर आफ्ताब पूना वाला आता था और रात के 2 बजे लगातार वो 20 दिनों तक यही करता था। अलग अलग जगहों पर उन कंकालों को फेंकता था, उन टुकड़ों को फेंकता था। यहीं से 50 मीटर की दूरी पर आफ्ताब मौजूद है इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के साथ, और वो बता रहा है कि कहां पर उसने उन टुकड़ों को दफनाया है, कहां पर फेंका है। Amity has been ranked India's #1 not-for-profit private university for 10 years, with top 10 ranked institutions in management, engineering, biotech, law, mass comm, telecom, hospitality, fashion and more. Yet another top ranking for Amity University, where the fire has engulfed several houses. This fire blaze took place today early in the morning. District administration along with the Jammu and Kashmir police, they are trying to douse the fire.
155 kgs of drugs was seized by police in Punjab's Pathankot. मौके पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर ब्लास्ट किया गया था। इन पटरियों के नीचे अब जो अधिकारी जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। हर छोटे बड़े पहलू पर जांच जो है वो चल रही है। There are the protesters and the supporters of Jitendra Award who have blocked the road. Not only this, but also the tires that was burned in the roads of Mumbra, where the supporters and the workers of Jitendra Award, they have been present right outside the police station where the FIR that has been registered. FIR that has been registered against NCP leader Jitendra Award. He huddled the woman's shoulder and also said that why are you standing in the middle, just move ahead. After which she went to file a complaint in Mumbra police station. Where a molestation case has been filed against Jitendra Award, and his supporters resorted to violence as well. Kharge has now issued an open statement to all the BJP cadres there, stating that no matter what, we will not let any BJP leaders to set foot into the constituency. Here are the protesters who are getting very much violent, and they are clearly demanding to withdraw the case that has been registered against Jitendra Award. The wife of Jitendra Award, she is now entering Mumbra police station, and she has also clearly mentioned is a fake case. Aaftab, the man who has brutally butchered Shraddha, was seen covering his face after that brutal act. I'm just reporting from the forest area where the body pieces of Shraddha, who was killed by her lover, Aftab, was dumped. 18th May reportedly. ये बैठा हुआ आफ्ताब, आफ्ताब, आफ्ताब जवाब दे। आफ्ताब जवाब देना पड़ेगा। आफ्ताब जवाब क्यों मारे श्रद्धा को? आफ्ताब जवाब देखिए, ये बैठा हुआ है आफ्ताब, और यहीं से पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। ये देखिए, सफेद रंग के गमछे से चेहरा ढका हुआ है, नीले रंग की इसने ये जैकेट पहनी हुई है, नीले रंग का ये पहना हुआ है टी शर्ट। ये देखिए आफ्ताब को निकाला जा रहा है। चलिए आगे। ये देखिए आफ्ताब निकलेगा यहाँ से। आफ्ताब बोल, आफ्ताब क्यों मारा? श्रद्धा का दोष क्या था? श्रद्धा का दोष क्या था? देखिए, कुछ भी बोलने से बचना है। आफ्ताब, श्रद्धा को क्यों मारा? आफ्ताब, क्या दोष था? आपने ऐसा क्यों किया? आपको कोई शर्म है? क्या प्यार का सिला यही दिया? There are the protesters and the supporters of Jitendra Award who have blocked the road. Not only this, but also the tires that was burned in the roads of Mumbra, where the supporters and the workers of Jitendra Award, they have been present right outside the police station where the FIR that has been registered. FIR that has been registered against NCP leader Jitendra Award. He huddled the woman's shoulder and also said that why are you standing in the middle, just move ahead. After which she went to file a complaint in Mumbra police station. Where a molestation case has been filed against Jitendra Award, and his supporters resorted to violence as well. Kharge has now issued an open statement to all the BJP cadres there, stating that no matter what, we will not let any BJP leaders to set foot into the constituency. Here are the protesters who are getting very much violent, and they are clearly demanding to withdraw the case that has been registered against Jitendra Award. The wife of Jitendra Award, she is now entering Mumbra police station, and she has also clearly mentioned is a fake case. Aaftab, the man who has brutally butchered Shraddha, was seen covering his face after that brutal act. I'm just reporting from the forest area where the body pieces of Shraddha,
who was killed by her lover, Aaftab, was dumped. 18th May, reportedly, Aaftab strangulated Shraddha to death, stored her body for few days, and later he reportedly cut her into 35 pieces, stored it in a carton box, dumped it in several parts of this large forest area of Maroli Chhatarpur Aravali forest. Where the fire has engulfed several houses. This fire blaze took place today early in the morning. District administration along with the Jammu and Kashmir police, they are trying to douse the fire. 155 kgs of drugs were seized by police in Punjab's Pathankot. मौके पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर ब्लास्ट किया गया था। इन पटरियों के नीचे अब जो अधिकारी जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। हर छोटे बड़े पहलू पर जांच जो है वो चल रही है। Thanks for tuning in this Tuesday afternoon. We are live and breaking. Our top focus, of course, the latest we are learning the horrific details coming in on the most shocking, brutal murder to have happened in the last 10 years. We'll get you all that and more over the next half an hour. First up, a look at the top headlines. 26-year-old Mumbai girl Shraddha murdered and cut into pieces. India's most grisly crime unravels in the national capital. Citizens demand justice for Shraddha. More horrific details emerge. Accused Aftab used same app to date another after killing. Delhi police recreates crime scene. Aftab taken to Mehroli forest to recreate the crime scene. Massive anger over Shraddha's murder. Protests break out in Mumbai. Delhi's Patiala House Court to pronounce verdict on Jacqueline Fernandez bail in 200 crore PMLA case. Prime Minister Modi attends the G20 summit. Multiple bilaterals lined up on the sidelines of G20. All right, we continue with our focus, getting you the leads that we are picking up on Shraddha murder case. The latest we understand is that the Delhi police has written, in fact, we understand that the Delhi police has written to the dating app Bumble, whose headquarters are in Texas, the United States, seeking more details into this murder case. Now, what we are given to understand is that Aaftab, the killer, was very much active on this dating app, and in fact, after the murder was committed, he continued to use these dating apps to date other girls as well. In fact, not just this, he used to get another girls in the very same room where the body parts of Shraddha was stored. So the details that are just coming in of how Bumble app was used by killer Aaftab at a stretch for a long period of time. The Delhi police has written to the Bumble app as well to get more details on Aaftab's profile on this dating app. That's what we're given to understand. So another angle that is being looked into. But we also spoke to Shraddha's father, who said that he demands nothing but death penalty for the accused. In fact, he's also suspected a love jihad angle in this particular case. Let's listen into that conversation we had with Shraddha's father. आपको कब पता चला कि श्रद्धा मिसिंग है? आपने कब पुलिस से कंप्लेन लिखवाई? किसने आपको जानकारी दी थी? मैं 14 अगस्त को मुझे पता चला। उसके दोस्त, श्रद्धा के दोस्त ने हमें बताया कि श्रद्धा का शायद ये ट्रैक नहीं हो पा रहा है मुझे, तो आप जरा कोशिश कीजिए। उसके बाद आपने पुलिस में श्रद्धा को? हाँ जी, नहीं श्रद्धा को नहीं, मैं पुलिस में फिर गया। आप पुलिस में गए? जी। अब जब पुलिस ने आफ्ताब से पूछताछ की, क्या उसने आपके सामने कबूला कि उसने श्रद्धा के बॉडी के टुकड़े किए, 35 टुकड़ों में उसकी बॉडी को काटा? जी जी। आप वहीं थे? पुलिस दिल्ली, जी मैं वही था, मेरे सामने उसने डिक्लेयर किया। जिस दिन वो केस यहाँ से ट्रांसफर हुआ, उसी दिन उसने डिक्लेयर किया कि मैंने ऐसे ऐसे श्रद्धा का किया।
आप अभी इस लड़ाई को कैसे लड़ रहे हैं? आप क्या चाहते हैं कि प्रशासन कैसी कार्रवाई करे, कैसी सजा मिले? क्योंकि यकीन से परे है कि कोई इस तरीके से मर्डर कर दे और इतनी बुरी तरीके से बॉडी के साथ करे। नहीं, ये इसकी सजा तो मतलब उसके फांसी के अलावा कोई हो ही नहीं सकती है। बस आप फांसी की सजा की मांग करते हैं? नहीं, उसने जो किया है मेरे बेटी के साथ, अगर वो इतना घिनौना है कि और कोई सजा हो ही नहीं सकती उसकी। क्या आप आफ्ताब से पहले मिले थे? आपको उसके बारे में ऐसी जानकारी थी कि, या फिर श्रद्धा ने कभी अपने बताया था कि उसकी जान को खतरा है या आफ्ताब उससे बुरा बिहेव करता है? नहीं, श्रद्धा ने कभी नहीं बताया। ये जब ये मिसिंग हुई तब उसके दोस्त लोग मुझे बताने लगे कि श्रद्धा का ऐसे वो तकलीफ देता था, मारपीट करता था। आपने क्या पहले कभी श्रद्धा को समझाने की कोशिश की थी? क्योंकि बहुत बार समझाने की कोशिश की कि ये ऐसा मत करो, इसके साथ मत रहो, हम लोग देखेंगे, तो वो माने ही नहीं था। Details that are just coming in of how this whole act was carried out by killer Aftab, how Shraddha was in fact strangulated to death. In fact, the body parts were not just kept in the fridge, they are also kept in the cupboard, in the kitchen. And not just this, what we are also given to understand that Aftab brought other girls as well in the very same room in which Shraddha's body parts were stored in the refrigerator. In fact, he even used incense sticks to dispel that foul odor that emanated from those body parts that were chopped by killer Aftab. The latest, of course, newsbreak coming in that the Delhi police has written to Bumble app to seek more details on Aftab's profile, because Aftab, we understand, was very much active on this dating app. In fact, even after he committed the murder, he continued with the dating other girls, as he was very much active on this app. The headquarters of this app, of course, located in Texas, the US. Delhi police now having sought more details on Aftab's profile on this Bumble app. We also have cyber expert NS Napinai joining us. Sir, thank you for speaking to Republic. Of course, more gruesome details that continue to pour in all these days. But what I would want to understand from you is, what do you make of Aftab's profile on Bumble app? He was very much active. In fact, he continued dating even after the murder was committed. What sort of an action do you think that probably cyber experts could probably push to be taken to get to the bottom of this case? There have been a lot of developments, particularly after the 2021 intermediary guidelines have come into play. So you mentioned earlier about how Bumble is not based out of India. Irrespective, thanks to the new intermediary guidelines, they are mandated under law to have a grievance officer and a nodal officer within India. You'll recollect when there were discussions on this, there were also issues about whether we really needed it or not. Here is a situation which highlights the necessity for these kind of protective measures. As far as Bumble app itself is concerned, recently I was informed that one of the protective measures they try to put in place is that only the women can choose and the men cannot choose. But even with that, that may not necessarily be sufficient. We will have to evaluate what are the checks and balances that can be put in place. Because, how do you stop somebody from putting their profile on a dating app? What are the kind of, the app by itself will not be able to do the reference checks of these people. So then what is the kind of cautionary notice that should be sent out to users so that they understand that merely because there is a profile on a particular platform, by itself, it does not guarantee the genuineness of that person or the safety in terms of meeting that person, etc. We have handled many cases where people put fake profiles. Married persons would either put up a profile as if they are single, or they would claim to be either divorced or on the verge of divorce. Later on, the victims would find out that this was just a means for them to initiate an affair. So there are many of these romance scams which even sometimes have financial consequences, where the person, it doesn't always have to be the man victimizing the woman. Sometimes it's the other way around too. And monies are siphoned out after a relationship is built, etc. Therefore, on one hand,
safety measures within the platform, which will also explain to the users what is the security that is available to them, and also from the user side, better awareness in terms of what is the level to which they can engage with the persons they meet on these kind of dating apps is very critical. And they have to know their remedies in law. Today you have a lot of remedies under the Information Technology Act and the new guidelines, intermediary guidelines. So I would urge all victims to take note of these and to take their remedies from that. Ma'am, what do you think is the reason why is Bumble answerable when it comes to this particular case? Also, do you think there's probably a need for stricter cyber laws to prevent any such all of these acts which have been happening where people have been misusing these dating apps for all the wrong reasons? On the first part of your question, Bumble is answerable to provide information about the users. It is not liable for acts done by two users to each other. That's the clarification I wanted to bring in. But yes, when law enforcement asks them for information, it does not matter which part of the world they are situated in. It does not matter which part of the world the data is stored. As long as the service is being offered in India, they are answerable to India and Indian law enforcement. On the latter part of it, there is always going to be a need for evolved cybercrime laws. But whatever we find as a protective measure, the criminals will find 10 different ways to violate it. Being a little bit more cautious, not throwing caution to the winds just because you are interacting on a digital platform. Knowing what is it that, I always tell users, would you share this information if you're one-on-one? Would you share an image if it had to go to a photo studio to be developed? If you would not be comfortable doing it in that instance, then think twice about doing it on a digital platform. Don't think you're speaking to a screen. You're speaking to a person on the other side and you don't even know who that person is. So we all have to become a little bit more cautious. We let go. We become disinhibited. But it doesn't always help. So ultimately, prevention is the best cure when it comes to the cyber domain. Yes, and just very briefly, one last question before we let you go. How do we make these apps accountable? Because as you mentioned earlier, there could be any criminal, any murderer who could be very much active on these apps. How do we make the app accountable for all that's happening in the app for the wrong reasons? There is a basic safe harbor which is built in for all intermediaries. So that safe harbor, however, comes with certain strings attached. And now those strings attached are what is captured in the intermediary guidelines. So the app cannot stop somebody from using their platform. However, the minute a report is given about somebody, then they have to take action. That is the lowest level of expectation that we can have from any app or a platform. Beyond that, law will still have to evolve to decide to what extent should the safe harbor be extended to platforms, and is it like an exception that a dating app should have? Because, imagine the kind of, which app will have the wherewithal to go and check the credentials of people? At best, they can only check the identity. Even that today is not, it's only voluntary, So beyond this, if you're asking the app to take responsibility for the actions of the users, it would be next to impossible. So we will have to balance out the necessities of a particular platform and the usage that it gives to us with protective and preventive measures. That's the balance we'll have to strike. If we exceed that remit, we will end up losing the service also. So we'll have to be a little balanced when we approach the requirement in terms of understanding the distinction between legal liability and responsibility. Yes. All right. Thank you for speaking to us, and very rightly mentioned by Naphinai that there needs to be a line that needs to be drawn. On that note, let's wait and watch the response that comes in from Bumble app as to the profile of killer Aaftab, who was very much active on this dating app even after that murder was committed by him of Shraddha. On that note, here's a quick report as to on the details that have been
again mentioned in the complaint that's been filed by Shraddha's father, which brings out the horrific details, how she was murdered, how she was chopped into 35 pieces, and how the body parts were stored not just in the refrigerator, in the cupboard, but in several parts of the kitchen as well. The spine-chilling murder in the national capital has shocked the entire nation. Some gruesome details have emerged in the crime. The father's complaint, on the basis of which Delhi police filed an FIR on 10th of November, has revealed some shocking details. As per the complaint, Shraddha spoke to her father a couple of times, where she revealed that Aftab would beat her up. Her friends Shivani and Lakshman to confirm that Shraddha and Aftab had a rocky relationship. And Shraddha's brother was informed that her phone was switched off for 2 months. Her father has said that he searched for Shraddha for months and suspected Aftab's role in the disappearance. मीन टाइम जो बचपन का जो उसका फ्रेंड था लक्ष्मण करके, वो हमेशा उनके टच में था, वो लड़की के। उसने पिताजी को बोला कि बेटी का मई महीने से कांटेक्ट नहीं हुआ, तो आप ज़रा उसके बारे में पूछताछ करो। और फिर उन्होंने फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में एक एप्लीकेशन दिया था। वो एप्लीकेशन जरिए अपन उसका पिताजी को बोला कि पूछताछ किया। वो लक्ष्मण के हिसाब से और वो स्टेटमेंट के हिसाब से पिताजी के वो दिल्ली रहती थी, लेकिन वो लोगों ने बोला कि दिल्ली में उनको बोला जाने के लिए, लेकिन अपन वो नहीं गए। तो Delhi police arrested Aftab based on the father's complaint, and after the interrogation, Aftab admitted to his crime. These are the remains of the very place. The clothes are still lying here. These are Aftab's clothes that you can see right now on the very stand. There is an incense stick that you see right now. Incense sticks that have been kept, and also the pot puree here. Police are basically indicating that he was constantly using the incense stick to ensure that the stench of the body does not go out, because remember the body would have got decomposed. The accused Aftab has now been sent to 5 days police custody for further interrogation. Bureau Report, Republic TV. And earlier in the day, we also spoke to Shraddha's father, who demands nothing less than capital punishment for killer Aaftab. Not just that, he is also suspected a love jihad angle, which could be one of the many reasons as to why killer Aaftab murdered Shraddha. आपको कब पता चला कि श्रद्धा मिसिंग है? आपने कब पुलिस से कंप्लेन लिखवाई? किसने आपको जानकारी दी थी? मैं 14 अगस्त को मुझे पता चला। उसके दोस्त, श्रद्धा के दोस्त ने हमें बताया कि श्रद्धा का शायद ये ट्रैक नहीं हो पा रहा है मुझे, तो आप जरा कोशिश कीजिए। उसके बाद आपने पुलिस में श्रद्धा को? हाँ जी, नहीं श्रद्धा को नहीं, मैं पुलिस में फिर गया। आप पुलिस में गए? जी। अब जब पुलिस ने आफ्ताब से पूछताछ की, क्या उसने आपके सामने कबूला कि उसने श्रद्धा के बॉडी के टुकड़े किए, 35 टुकड़ों में उसकी बॉडी को काटा? जी जी। आप वहीं थे? पुलिस दिल्ली, जी मैं वहीं था, मेरे सामने उसने डिक्लेयर किया। जिस दिन वो केस यहाँ से ट्रांसफर हुआ, उसी दिन उसने डिक्लेयर किया कि मैंने ऐसे ऐसे श्रद्धा का किया। आप अभी इस लड़ाई को कैसे लड़ रहे हैं? आप क्या चाहते हैं कि प्रशासन कैसी कार्रवाई करे, कैसी सजा मिले? क्योंकि यकीन से परे है कि कोई इस तरीके से मर्डर कर दे और इतनी बुरी तरीके से बॉडी के साथ करे। नहीं, ये इसकी सजा तो मतलब उसके फांसी के अलावा कोई हो ही नहीं सकती है। बस आप फांसी की सजा की मांग करते हैं? नहीं, उसने जो किया है मेरे बेटी के साथ, अगर वो इतना घिनौना है कि और कोई सजा हो ही नहीं सकती उसकी। क्या आप आफ्ताब से पहले मिले थे? आपको उसके बारे में ऐसी जानकारी थी कि, या फिर श्रद्धा ने कभी अपने बताया था कि उसकी जान को खतरा है या आफ्ताब उससे बुरा बिहेव करता है? नहीं, श्रद्धा ने कभी नहीं बताया। ये जब ये मिसिंग हुई तब उसके दोस्त लोग मुझे बताने लगे कि श्रद्धा का ऐसे ऐसे वो तकलीफ देता था, मारपीट करता था। आपने क्या पहले कभी श्रद्धा को समझाने की कोशिश की थी? क्योंकि बहुत बार समझाने की कोशिश की कि ये ऐसा मत करो, इसके साथ मत रहो, हम लोग देखेंगे, तो वो मानी ही नहीं था। आफ्ताब श्रद्धा को क्यों मारा? आफ्ताब श्रद्धा को क्यों मारा? आफ्ताब बता, देखो आफ्ताब दिख रहा है, देखो मुंह छिपा रहा है अपना, कुछ भी बोल नहीं रहा है।
मुंह छिपा रहा है, अभी से पछतावा हो रहा है आफ्ताब को, लेकिन कुछ बोलने से बच रहा है। FIR that has been registered against NCP leader Jitendra Awad. He huddled the woman's shoulder and also said that why are you standing in the middle, just move ahead. After which she went to file a complaint in Mumbra police station. Where a molestation case has been filed against Jitendra Awad, and his supporters resorted to violence as well. Priyank Kharge has now issued an open statement to all the BJP cadres there, stating that no matter what, we will not let any BJP leaders to set foot into the constituency. Here are the protesters who are getting very much violent, and they are clearly demanding to withdraw the case that has been registered against Jitendra Awad. The wife of Jitendra Awad, she is now entering Mumbra police station, and she has also clearly mentioned it's a fake case. Aaftab, the man who has brutally butchered Shraddha, was seen covering his face after that brutal act. I'm just reporting from the forest area where the body pieces of Shraddha, who was killed by her lover, Aaftab, was dumped. 18th May, reportedly, Aaftab strangulated Shraddha to death, stored her body for a few days, and later he reportedly cut her into 35 pieces, stored it in a carton box, dumped it in several parts of this large forest area of Maroli Chhatarpur Aravali forest. Where the fire has engulfed several houses. This fire blaze took place today early in the morning. District administration along with the Jammu and Kashmir police, they are trying to douse the fire. 155 kgs of drugs were seized by police in Punjab's Pathankot. मौके पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर ब्लास्ट किया गया था। इन पटरियों के नीचे अब जो अधिकारी जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। हर छोटे बड़े पहलू पर जांच जो है वो चल रही है। There are the protesters and the supporters of Jitendra Awad who have blocked the road. Not only this, but also the tires that was burned in the roads of Mumbra, where the supporters and the workers of Jitendra Awad, they have been present right outside the police station where the FIR that has been registered. Well, more details are just coming in. As per Delhi police sources, Aaftab has accepted to the crime that he committed, but certain indications are that he was not alone at the time of the act. In fact, he's also indicated that his close friends were aware that Shraddha is nowhere to be seen for a while. There are some details. दूर बहुत टाइम हो गया दूर चलो ठीक है ठीक है मान ली बात नहीं मान ली आ जाओ यार कर दो लो आफ्ताब आपने आप दूर रहे आप ठीक है आफ्ताब दूर रहे हैं चलो कोई नहीं चलो Here you can see that there is drama which is going on. आगे लगा टीम ने जंगल के अंदर इन्वेस्टिगेशन टीम आफ्ताब को लेकर यहाँ पर थाने के अंदर जा रही है। ये देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आफ्ताब Here you can see that Aftab is being taken and there are dramatic scenes that are being returned. The officials do not want to allow us to go, but there are people who are over here who is this thing, and this is the visuals which are being presented to you by my video journalist. And this is the dismembering her body, and now you can see the police पुलिस की टीम मैंने कैमरामैन रवीश पांडे आपको देखिए आफ्ताब की तस्वीरें आप देख पाएंगे। आफ्ताब इसी पुलिस की गाड़ी के अंदर You can see the visual that are being presented to you by my video journalist. Aftab has just been asked to come to this thing, and here you can see that officials now are trying to wade away the media people over here. So as you see, there is an in-depth investigation that people are trying to find out what exactly is happening. Yes.
All right, the visuals there coming in right now are from the police station where Aaftab has been brought back after he was taken to the same forest where the body parts were disposed in that particular forest. In fact, this visuals now coming in of killer Aaftab, who's been brought back to the police station. Delhi sources, of course, telling that Aaftab has accepted to have committed the crime, but the police is suspicious on whether he was alone at the time of this murder. So sources, Delhi police sources now saying that even as Aaftab has accepted to the crime that he committed, certain indications are there that Aaftab was not alone at the time of the murder. In fact, he also indicated that his close friends were aware that Shraddha was missing for a while. Here you can see that there is drama which is going on. ने जंगल के अंदर इन्वेस्टिगेशन पुलिस की टीम आफ्ताब को लेकर यहाँ पर थाने के अंदर जा रही है। ये देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आफ्ताब Here you can see that Aftab is being taken and there are dramatic scenes that are being returned. The officials do not want to allow us to go, but there are people who are over here who are just saying, and we are just, this is the visuals which are being present now. the police गाड़ी के अंदर You can see the visuals that are being presented to you by my video. Aftab, आपने आप दूर रहे आप ठीक है आफ्ताब दूर रहे हैं चलो कोई नहीं Here you can see that there is drama which is going on. ने जंगल के अंदर इन्वेस्टिगेशन पुलिस की टीम आफ्ताब को लेकर यहाँ पर थाने के अंदर जा रही है। ये देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आफ्ताब Here you can see that Aftab is being taken and there are dramatic scenes that are being returned. The officials do not want to allow us to go, but there are people who are over here who are just saying, and we are just, this is the visuals which are being present now. the police गाड़ी के अंदर You can see the visuals that are being presented to you by my So the breaking update coming in this hour is that the focus on role of more people in this murder. So the police, Delhi police is still suspicious on whether there was involvement of more people in this murder. Now what we understand is that even as Aaftab has accepted to have committed the crime, the possibility is very much there that there could be more people involved in this crime. So the Delhi police is still probing this angle as to whether there could be more people when this crime was committed by Aaftab. And also the fact that the police is probing the role of the second partner of Aaftab, is on a lookout for the second partner of Aaftab. In fact, the police has also written to Bumble to seek more details from the dating app on Aaftab's profile and to know more about this second partner of Aaftab, who he brought in the same room where the body parts of Shraddha was stored. And the visuals there on your screens are from the police station where Aaftab has been brought after he was taken to the jungle to recreate the crime scene. We have our executive editor for politics, Ishwara Kapoor, also joining us. Ishwara, the latest we understand is that the Delhi police is probing the role of more people in this crime. What more details can you share with us? Well, absolutely. At this point of time, though, we are being also told by the same sources that Aaftab has denied. And I repeat that this the man behind this monstrous crime has denied that he had any support from any individual, but there are certain leads on which Delhi police feel that this man who has committed this monstrous crime could not have been alone. And on that point now, with the complete investigation being handed over to Special CP Crime, we are being indicated that a lookout for partner number 2 of Aftab is also on. So when asked, he has denied to police that he had any kind of support, that he had any individual helping him, or for that matter, any individual even aware of this crime. But what the Delhi police, according to our sources, is looking into the fact that when there were people coming in, they have information of certain particular individual coming to this very residence where Shraddha and this individual used to live, and this Aftab used to live. And when Shraddha was completely absent, and when she was murdered in such a way
why didn't that individual who was supposedly coming to this residence and meeting both of them on regular basis inform the police or raise an alarm? And hence, we are being told, though no names are being given out by Delhi police according to our sources, but they are looking for not only an accomplice, for an individual who was aware about this, aware about absence of Shraddha, but did not inform the authorities and raise an alarm. That is a serious angle, and there are also different angles which are being looked into at this point of time, but the major one being that was there an accomplice of Aaftab, the man behind this monstrous crime. Yes. Aishwarya, stay with us. Talking about the various angles that are being looked into by the Delhi police, talk to us about this love jihad angle which has now emerged, with the father of Shraddha also saying that there could possibly be a love jihad angle in this case. Well, it's not only about the family of Shraddha, of the deceased. It's the central minister, Giriraj Singh. When asked, Giriraj Singh mentioned the angle of love jihad, and it's not about angle. It's about what is happening on ground. Giriraj Singh said this is not the first instance. Giriraj Singh said that I have details of at least 100 more such cases across the country, and it's a fact. Because whenever issue of love jihad is raised, the opposition tries to make it as if the government is trying to make a political angle to it. But it's reality. And now when the family of deceased Shraddha raising this issue and the central minister also raising this issue, it is a point which will be investigated. That is what we are being told. But yes, after Central Minister Giriraj Singh and the family members of deceased Shraddha raising this issue, it's a real point to look at, because love jihad is just not an angle. It's just not a facade. It is a reality. And it's just not one case. You have, when caught, more than 24 individuals accepting on camera that yes, how they were funded, what they were told, how they were being told what to do, how they were being given money, how they were being given motorcycles to travel on. So all of this is a reality. But whether love jihad was a reality in this very case, that is for the police to determine, and that investigation is still on. Yes, Aishwarya, just one last question before we let you go. Talking about all the information we've been able to gather all these days, does it look like from the face of it that it could have been the work of just a single person? Because getting all of this together, storing the body parts, getting the acid to clean the floor, does it look like a work of single person and nobody had a clue that all of this was happening in one room, where we understand that there was definitely foul odor that emanated from these body parts that were stored? Well, that is why we are being told that the police is looking into the matter. The police is investigating that was there another accomplice, because what we are being told by our sources, that there was not one but two individuals who used to come regularly to this residence. And if they were regularly coming, the stench, the smell, the odor cannot go unnoticed. An absence of Shraddha cannot go unnoticed. So all of this does not add up. But this is just preliminary investigation according to our sources. The police is looking into this angle as well, that were there other individuals who were aware, or were they part, or were they accomplice, or were they helping Aftab in hiding all of this? So all of this is being looked in. As we speak, the investigation is on. The Delhi police is looking at every possible angle at this point of time. Yeah. All right, Aishwarya, thank you for getting us all those details. So getting information on several aspects there, the visuals coming in of Aaftab, who's been brought back to Mehruli police station after he was taken to the crime scene at the Mehruli forest to recreate the crime scene. So several details that are coming in as to how there is very much a possibility that all of this was done with the involvement of more than one person. The Delhi police, of course, looking into this angle. Not just this, the Bumble profile is also being looked into by the Delhi police, as they've written to the Bumble dating app and have sought more details on Aaftab's profile. Remember, we understand that he was very much active on this dating app, which we used even after he committed the brutal act. And before we get more details and go across to our reporters, let's once again listen into what Giriraj Singh had to say on the love jihad angle, which could be very much a possibility or reality in this case. देश का दुर्भाग्य है जब दिल्ली के अंदर कोई गैर मुस्लिम, हिंदू हो या कोई और, अगर किसी से प्रेम विवाह करता हो
तो उस लड़के को टुकड़े टुकड़े में परिवर्तित कर दिया जाता है। लेकिन नाम बदल के, शोला बदल करके, भेष बदल करके, फुसला बहला करके हिंदू लड़कियों को, जो मुंबई में घटना हुई है, उस मुस्लिम लड़कों ने अपने साथ विधिवत, जैसा उसके परिजन कह रहे हैं कि उन्होंने एक तरह से लिविंग रिलेशन नहीं बल्कि वैवाहिक रिलेशन के रूप में, और जब उसके बाद उसे टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश के अंदर में ये एक लव जिहाद, एक तरह से मिशन चल गया है मुस्लिम का, लव जिहाद, लोगों को ठगना, हिंदू लड़कियों को बहला फुसला करके अपने साथ जोड़ना और जोड़ करके और फिर उसे इस ढंग से या तो छोड़ देना या मौत के घाट उतार देना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। They're saying that there is a possibility of love jihad. But on that note, let's listen in to what Shraddha's father had to say just a short while back while speaking to the Republic. He said that he demands nothing less than death penalty for the accused. आपको कब पता चला कि श्रद्धा मिसिंग है? आपने कब पुलिस से कंप्लेन लिखवाई? किसने आपको जानकारी दी थी? मैं 14 अगस्त को मुझे पता चला। उसके दोस्त, श्रद्धा के दोस्त ने हमें बताया कि श्रद्धा का शायद ये ट्रैक नहीं हो पा रहा है मुझे, तो आप जरा कोशिश कीजिए। उसके बाद आपने पुलिस में श्रद्धा को? हाँ जी, नहीं श्रद्धा को नहीं, मैं पुलिस में फिर गया। आप पुलिस में गए? जी। अब जब पुलिस ने आफ्ताब से पूछताछ की, क्या उसने आपके सामने कबूला कि उसने श्रद्धा के बॉडी के टुकड़े किए, 35 टुकड़ों में उसकी बॉडी को काटा? जी जी। आप वहीं थे? पुलिस दिल्ली, जी मैं वही था, मेरे सामने उसने डिक्लेयर किया। जिस दिन वो केस यहाँ से ट्रांसफर हुआ, उसी दिन उसने डिक्लेयर किया कि मैंने ऐसे ऐसे श्रद्धा का किया। आप अभी इस लड़ाई को कैसे लड़ रहे हैं? आप क्या चाहते हैं कि प्रशासन कैसी कार्रवाई करे, कैसी सजा मिले? क्योंकि यकीन से परे है कि कोई इस तरीके से मर्डर कर दे और इतनी बुरी तरीके से बॉडी के साथ करे। नहीं, ये इसकी सजा तो मतलब उसके फांसी के अलावा कोई हो ही नहीं सकती है। आप फांसी की सजा की मांग करते हैं? नहीं, उसने जो किया है मेरे बेटी के साथ, अगर वो इतना घिनौना है कि और कोई सजा हो ही नहीं सकती उसकी। क्या आप आफ्ताब से पहले मिले थे? आपको उसके बारे में ऐसी जानकारी थी कि, या फिर श्रद्धा ने कभी अपने बताया था कि उसकी जान को खतरा है या आफ्ताब उससे बुरा बिहेव करता है? नहीं, श्रद्धा ने कभी नहीं बताया। ये जब ये मिसिंग हुई तब उसके दोस्त लोग मुझे बताने लगे कि श्रद्धा का ऐसे ऐसे वो तकलीफ देता था, मारपीट करता था। आपने क्या पहले कभी श्रद्धा को समझाने की कोशिश की थी? क्योंकि बहुत बार समझाने की कोशिश की कि ये ऐसा मत करो, इसके साथ मत रहो, हम लोग देखेंगे, तो वो मानी ही नहीं था। यहीं पर आफ्ताब पूनावाला आता था और रात के 2 बजे लगातार वो 20 दिनों तक यही करता था। अलग अलग जगहों पर उन कंकालों को फेंकता था, उन टुकड़ों को फेंकता था। यहीं से 50 मीटर की दूरी पर आफ्ताब मौजूद है इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के साथ, और वो बता रहा है कि कहां पर उसने उन टुकड़ों को दफनाया है, कहां पर फेंका है। A very short break, but on the other side we'll get you all the latest protests now in Mumbai demanding probe into Shraddha's murder and probe into the love jihad angle. Here are
are the protesters who are getting very much violent, and they are clearly demanding to withdraw the case that has been registered against Jitendra Award. The wife of Jitendra Award, she is now entering Mumbra police station, and she has also clearly mentioned it's a fake case. Aaftab, the man who has brutally butchered Shraddha, who is seen covering his face after that brutal act. I'm just reporting from the forest area where the body pieces of Shraddha, who was killed by her lover, Aftab, was dumped. 18th May reportedly, Aftab strangulated Shraddha to death, stored her body for a few days, and later he reportedly cut her into 35 pieces, stored it in a carton box, dumped it in several parts of this large forest area of Maroli Chhatarpur Aravali forest. Where the fire has engulfed several houses. This fire blaze took place today early in the morning. District administration along with the Jammu and Kashmir police, they are trying to douse the fire. 155 kgs of drugs were seized by police in Punjab's Pathankot. मौके पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर ब्लास्ट किया गया था। इन पटरियों के नीचे अब जो अधिकारी जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। हर छोटे बड़े पहलू पर जांच जो है वो चल रही है। There are the protesters and the supporters of Jitendra Award who have blocked the road. Not only this, but also the tires that was burned in the roads of Mumbra, where the supporters and the workers of Jitendra Award, they have been present right outside the police station where the FIR that has been registered. Fire that has been registered against NCP leader Jitendra Award. He huddled the woman's shoulder and also said that why are you standing in the middle, just move ahead. After which she went to file a complaint in Mumbra police station. Where a molestation case has been filed against Jitendra Award, and his supporters resorted to violence as well. Priyank Kharge has now issued an open statement to all. श्रद्धा को क्यों मारा? आफ्ताब श्रद्धा को क्यों मारा? आफ्ताब पता देखो, आफ्ताब दिख रहा है, देखो मुंह छिपा रहा है अपना, कुछ भी बोल नहीं रहा है, मुंह छिपा रहा है, अभी से पछतावा हो रहा है आफ्ताब को, लेकिन कुछ बोलने से बच रहा है। All right, continuously tracking all the big leads coming in on the horrific murder of Shraddha, the killer Aftab, who was taken to the crime scene just a short while back to recreate the crime. Of course, he's been brought back now. But the details that are just coming in as to how the police is suspecting that there could be a role of more than one person. So the role of a person other than Aftab is very much a possibility, as the police is looking into this angle. In fact, a love jihad angle that is also being looked into by the police officials. Giriraj Singh, of course, also saying that there is very much a possibility that there could be a love jihad angle in this case. The visuals on your screens right now are of killer Aaftab, who was taken to the crime scene just a short while back. The third visual there that shows you Aaftab inside the lockup, and of course the visuals that are coming in from Mumbai of the protest being led by the BJP demanding proper probe into the murder case, and also a probe into the love jihad angle in this murder plot. The horrific details, the shocking details coming in is that the girl Shraddha was strangulated to death. In fact, the body parts were chopped into 35 pieces and were stored not just in the refrigerator but also in several areas in the kitchen. We also spoke to Shraddha's father, who demands capital punishment for killer Aftab, and also says that there is a probability of a love jihad angle in this case. आपको कब पता चला कि श्रद्धा मिसिंग है? आपने कब पुलिस से कंप्लेंट लिखवाई? किसने आपको जानकारी दी थी? मैं 14 अगस्त को मुझे पता चला। उसके दोस्त, श्रद्धा के दोस्त ने हमें बताया कि श्रद्धा का शायद ये ट्रैक नहीं हो पा रहा है मुझे, तो आप जरा कोशिश कीजिए।
उसके बाद आपने पुलिस में अपने पुलिस श्रद्धा में, को, हाँ जी, नहीं श्रद्धा को नहीं, मैं पुलिस में फिर गया। आप पुलिस में गए? जी। अब जब पुलिस ने आफ्ताब से पूछताछ की, क्या उसने आपके सामने कबूला कि उसने श्रद्धा के बॉडी के टुकड़े किए, 35 टुकड़ों में उसकी बॉडी को काटा? जी जी। आप जिस वहीं दिन थे पुलिस तभी? दिल्ली, जी मैं वहीं था, मेरे सामने ही उसने डिक्लेयर किया। जिस दिन वो केस यहाँ से ट्रांसफर हुआ उसी दिन उसने डिक्लेयर किया कि मैंने ऐसे ऐसे श्रद्धा का किया। आप अभी इस लड़ाई को कैसे लड़ रहे हैं? आप क्या चाहते हैं कि प्रशासन कैसी कार्रवाई करे, कैसी सजा मिले? क्योंकि यकीन से परे है कि कोई इस तरीके से मर्डर कर दे और इतनी बुरी तरीके से बॉडी के साथ करे। नहीं, ये इसकी सजा तो मतलब उसके फांसी के अलावा कोई हो ही नहीं सकती है। बस आप फांसी की सजा की मांग करते हैं? नहीं, उसने जो किया है मेरे बेटी के साथ, अगर वो इतना घिनौना है कि और कोई सजा हो ही नहीं सकती उसकी। क्या आप आफ्ताब से पहले मिले थे? आपको उसके बारे में ऐसी जानकारी थी कि, या फिर श्रद्धा ने कभी अपने बताया था कि उसकी जान को खतरा है या आफ्ताब उससे बुरा बिहेव करता है? नहीं, श्रद्धा ने कभी नहीं बताया। ये जब ये मिसिंग हुई तब उसके दोस्त लोग मुझे बताने लगे कि श्रद्धा का ऐसे ऐसे वो तकलीफ देता था, मारपीट करता था। आपने क्या पहले कभी श्रद्धा को समझाने की कोशिश की थी? क्योंकि बहुत बार समझाने की कोशिश की कि ये ऐसा मत करो, इसके साथ मत रहो, हम लोग देखेंगे, तो वो मानी ही नहीं था। And we have Deepti also joining us from the Delhi newsroom. Deepti, for our viewers also who are just tuning in, if you could once again give us a recap on the grotesque details that are known so far in the case and how, from what it appears, that this is definitely not the work of one person with no accomplice whatsoever in this case. Oh yes, and you know, Samiksha, I think the story has become far bigger than what we were reporting just about yesterday. Because look at the chilling details that have come forward. Now, I quickly want to recap for our viewers who've tuned into the broadcast to understand where we are right now as far as the focus on investigation goes. Now, right now, these 4 pictures tell you what the story has become all about. You know, it is Shraddha, who's in 35 pieces now, pieces scattered all over the Mehroli forest. That's exactly the place where Aaftab, the butcher, was taken to the crime scene. That is the image playing out on the second window from the left on your screens. Now the next image that you see on it is the Aaftab. That's a still, in fact, of Aaftab inside the lockup. You know, many people say, in fact, the father also, if you just heard that conversation that Republic has had with the father, who's distraught today, who's heartbroken, and our hearts go out to the family in this very, very difficult hour. Mr. Vikas Walker, they're actually saying that Aftab confessed to the crime right in front of me. And this man had zero remorse. This man behaves as if everything is normal, and exactly that's another detail that has stumbled out today, that he actually went on dating more women. In fact, he got a woman at the very same flat where he had hacked, slaughtered, and also then frozen Shraddha in 2 pieces. On the extreme right now, you're looking at images of the anger that is coming in from citizens across the country over this murder. Republic has also been able to speak to a friend very, very close to Shraddha. He has more details of what happened, when was the last time they spoke, and what he remembers of the relationship between the two. यहाँ तक कि एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज़ यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। ऐसा भी झगड़ा हुआ है उनके बीच में, और हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था और आफ्ताब को वार्निंग भी दी थी। यहाँ तक कि एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज़ यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। ऐसा भी झगड़ा हुआ है उनके बीच में, और हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था और आफ्ताब को वार्निंग भी दी थी।
So you just heard the friend there. In fact, he's Shraddha Walker's close friend who's spoken to Republic, and he recalls the gory details that Shraddha ever used to share of the relationship. The relationship had a lot of unease. She did complain of physical abuse at times, but at the end of it, she always said that I want to go back to Aaftab. And look at where Shraddha is today. In 35 pieces, she's scattered all over the Mehrauli forest. Right now, this image that's playing out in the extreme center of your screens is of Aaftab. Aaftab, all of 28. He's the man earlier who has been taken by the cops to the crime scene. They are attempting a reconstruction of not just the crime that happened at that flat in the Mehrauli Chhatarpur area, but right now what they're also trying to do is ensure that they're able to pick together whatever little evidence they can to ensure that it is a watertight case against him. यहीं पर आफ्ताब पूना वाला आता था और रात के 2 बजे लगातार वो 20 दिनों तक यही करता था। अलग अलग जगहों पर उन कंकालों को फेंकता था, उन टुकड़ों को फेंकता था। यहीं से 50 मीटर की दूरी पर आफ्ताब मौजूद है इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के साथ, और वो बता रहा है कि कहां पर उसने उन टुकड़ों को दफनाया है, कहां पर फेंका है। We're heading into a break right now, but when we come back, our non-stop rolling coverage continues on this one story that has shocked the entire country. There are more horrific details that continue to emerge on the modus operandi and what happened post the murder. And the Prime Minister, remember, is in Bali. This is India's big mission, G20. Remember, India takes up the presidency starting this December. We'll also have live coverage and insight into that big visit. Amity has been ranked India's #1 not-for-profit private university for 10 years. With top 10 ranked institutions in management, engineering, biotech, law, mass comm, telecom, hospitality, fashion and more. Yet another top ranking for Amity University. I'm just reporting from the forest area where the body pieces of Shraddha, who was killed by her lover, Aftab, was dumped. 18th May reportedly, Aftab strangulated Shraddha to death, stored her body for a few days, and later he reportedly cut her into 35 pieces, stored it in a carton box, dumped it in several parts of this large forest area of Mehrauli Chhatarpur Aravali forest. Where the fire has engulfed several houses. This fire blaze took place today early in the morning. District administration along with the Jammu and Kashmir police, they are trying to douse the fire. 155 kgs of drugs was seized by police in Punjab's Pathankot. मौके पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर ब्लास्ट किया गया था। इन पटरियों के नीचे अब जो अधिकारी जांच करते हुए नजर आ रहे हैं, हर छोटे बड़े पहलू पर जांच जो है वो चल रही है। There are the protesters and the supporters of Jitendra Award who have blocked the road. Not only this, but also the tires that was burned in the roads of Mumbra, where the supporters and the workers of Jitendra Award, they have been present right outside the police station where the FIR that has been registered. FIR that has been registered against NCP leader Jitendra Award. He huddled the woman's shoulder and also said that why are you standing in the middle, just move ahead. After which she went to file a complaint in Mumbra police station. Where a molestation case has been filed against Jitendra Award, and his supporters resorted to violence as well. Kharge has now issued an open statement to all the BJP cadres there, stating that no matter what, we will not let any BJP leaders to set foot into the. आफ्ताब श्रद्धा को क्यों मारा? आफ्ताब
श्रद्धा को क्यों मारा? आफ्ताब पता है, देखो आफ्ताब दिख रहा है, देखो मुंह छिपा रहा है अपना, कुछ भी बोल नहीं रहा है, मुंह छिपा रहा है, अभी से पछतावा हो रहा है आफ्ताब को, लेकिन कुछ बोलने से बच रहा है। And breaking news, these are more details as far as the probe and the investigation goes. We are learning now that the focus is going to be shifting on the role of possibly accomplices to the crime. Because there are sources now in the Delhi police who've not just studied the case, but they seriously believe that this man called Aaftab was not acting alone. They believe that there have to be more people helping him. Whether these were more local people, whether these were his friends, it is still not known. But the police now is going to be probing the role of more people is the first indication coming to the fact that there could be more accomplices to this horrific crime that has been reported. And in fact, what sources also do indicate that the police say that it is right now not possible for them to believe that he was acting alone, whether it's about the murder or whether it is also what he did post the murder. Were there people around not aware? Did someone help him clean the blood stains? All these, remember, are questions that are now going to be answered as far as the investigation goes. Also, our colleague Piyush has been getting us more insight into where the investigation stands till now. आप दूर रहे हैं। आप ठीक है आप दूर रहे हैं। चलो कोई नहीं चलो। Here you can see that there is drama which is going on. जंगल के अंदर इन्वेस्टिगेशन पुलिस की टीम आफ्ताब को लेकर यहाँ पर थाने के अंदर जा रही है। ये देखिए तस्वीर में आप देख सकते हैं कि आफ्ताब। Here you can see that Aftab is being taken and there are dramatic scenes that are being returned. The officials do not want to allow us to go, but there are people who are over here who is just saying, and we are just, this is the visuals which are being presented to you by my video journalist. And this is the now you can see the police पुलिस की टीम मैंने कैमरामैन रवि पांडे आपको देखिए आफ्ताब की तस्वीरें आप देख पाएंगे। आफ्ताब इसी पुलिस की गाड़ी के अंदर We are heading into a break right now. When we come back, we will get you more details of how there is massive anger over Shraddha's murder. And these are images of protests that broke out in Mumbai. Where the fire has engulfed several houses. This fire blaze took place today early in the morning. District administration along with the Jammu and Kashmir police, they are trying to douse the fire. 155 kgs of drugs were seized by police in Punjab's Pathankot. मौके पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर ब्लास्ट किया गया था। इन पटरियों के नीचे अब जो अधिकारी जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। हर छोटे बड़े पहलू पर जांच जो है वो चल रही है। There are the protesters and the supporters of Jitendra Award who have blocked the road. Not only this, but also the tires that was burned in the roads of Mumbra, where the supporters and the workers of Jitendra Award, they have been present right outside the police station where the FIR that has been registered. FIR that has been registered against NCP leader Jitendra Award. He huddled the woman's shoulder and also said that why are you standing in the middle, just move ahead. After which she went to file a complaint in Mumbra police station. Where a molestation case has been filed against Jitendra Award, and his supporters resorted to violence as well.
Priyank Kharge has now issued an open statement to all the BJP cadres there, stating that no matter what, we will not let any BJP leaders to set foot into the constituency. Here are the protesters who are getting very much violent, and they are clearly demanding to withdraw the case that has been registered against Jitendra Award. The wife of Jitendra Award, she is now entering Mumbra police station, and she has also clearly mentioned it's a fake case. Aaftab, the man who has brutally butchered Shraddha, was seen covering his face after that brutal act. I'm just reporting from the forest area where the body pieces of Shraddha, who was killed by her lover Aftab, was dumped. 18th May reportedly, Aftab strangulated Shraddha to death, stored her body for a few days, and later he reportedly cut her into 35 pieces, stored it in a carton box, dumped it in several parts of this large forest area of Maroli Chhatarpur Aravali forest. Where the fire has engulfed several houses. 26-year-old Mumbai girl Shraddha is murdered. She's cut into pieces. This is India's most grisly crime unraveling in Delhi. Citizens now demand justice for Shraddha. More horrific details emerged. The accused Aftab used the same app to date after having killed Shraddha. The Delhi police recreates a crime scene. Aftab taken to the Maroli forest. There is massive anger over Shraddha's murder. Protests now break out in Mumbai. Delhi's Patiala House Court to pronounce its verdict on Jacqueline Fernandez bail in the 200 crore PMLA case. And the Prime Minister attends the big G20 summit. Multiple bilaterals are lined up on the sidelines of the G20. A very good afternoon and thank you for staying with us here on Republic. Justice for Shraddha, that continues to be the war cry. This is exactly what people want in the country today. There is massive anger. Republic, remember, is reporting on the entire investigation. There are a lot of questions doing the rounds. Was Aftab doing this all alone? Were there more people? From where did he manage the weapon that was used in the crime? And to have answers to all those questions, remember, Republic through the day today is going to be piecing together every bit of important information. So let's get started and break the first exclusive detail that our colleague Tanisha has been able to get for you. In fact, she's speaking to a shopkeeper who has some important details about possibly the murder weapon that could have been used in the entire case. It is said that Aftab had confirmed that he bought a couple of knives from this very shop. Right now we have the shop's owner and we'll get to know what was the interrogation all about and what did the cops actually interrogate about. The incident dates back to day before yesterday, as you were telling me. What happened? The cops came, and what are the timeline of the events when the cops came, and what did they ask you? The cops came in the afternoon and they came with the accused. And the accused has confirmed the cops that he, 5 months back, he came and purchased some knives and garbage bags from the shop. And after, he actually was hurt by the knife. So just next to us, we have a hospital. So we recommended him to visit the hospital. So this, as per him, he has confirmed the cops that he came 5 months back and he purchased some knives and garbage bags. So we don't actually remember, but because it's now been more than 5 months, so we actually came across so many customers in a routine time, so we don't remember that. But he told the cops that he came.
So this incident dates back to day before yesterday. Could you or any of the workers who work here in the shop could recognize him or recognize a similar kind of face that had come like 4-5 months back to the same shop? See, I was not there at that time. My workers were there, and the worker who was, he left us 2 months back. He's not working with us. So there's nobody who confirmed that he visited, and we could not identify him. So when the cops asked him if this was the same shop that he bought the knife from, what was his exact words? He told the cops that he came 5 months back, and from this shop he purchased knife and some garbage bags. Did he quote the number of knives that he purchased? No, he just purchased one knife as per him. And soon after that, he went to a hospital nearby for his treatment because we get to learn that he got hurt in his hand. Is that? Yes, that is correct. So there we have the shop's owner confirming that the accused along with the Delhi police had come day before yesterday here, and the accused Aftab did confirm to the cops that he purchased knife from this very shop. Now the new information that we're getting to learn is that soon after he purchased the knife, it was noticed that he did get hurt in his knife, and he Okay, so you just saw that important detail that Tanisha has been able to bring forward. Now do remember again, as I said, the story is developing and we at Republic are continuously updating whatever we have as far as the investigation goes. But Shraddha today, who was all of 27, has ended up in 35 pieces. Those pieces scattered in an obscure forest. This is the Mehrauli Chhatarpur area in the national capital. So how and why did you have someone like an Aaftab who goes and dumps those pieces in that forest? Did he do this all alone? Were there more accomplices to the crime? He at the moment, remember, is in police custody. These are images that Republic has been able to access of this butcher, perhaps having a good sleep even in the jail. I mean, when you look at these images, that's the first thing that comes to mind. Is there any remorse? Does he even realize the gravity of what he has done? Butchering a live-in partner to 35 pieces. Who does that, and why would anyone do that? Even as we still don't have very, very clear answers to those questions, let's put out the other exclusive that Republic is putting out now for you. This is Tanisha in conversation with a doctor who does remember treating, murdering and chopping off his partner into 35 pieces, came here and took the garbage bag. And once we talked to the shop owner where he collected the garbage bag from, they told us that he came to this nearby hospital where he got his treatment done. Treatment for his hand, for his arm that was cut with a sharp weapon like that of a knife. Right now we are at the same hospital. We are with the doctor who had treated him, who had treated his wound. We're going to talk to him and find out what actually happened. Sir, परसों के करीब बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस आई थी accused आफ्ताब के साथ. क्या timeline of events था? वो लोग आए सुबह, उसके बाद क्या हुआ? दिल्ली पुलिस मेरे पास जब आई तो मैंने उसको आइडेंटिफाई किया कि आफ्ताब है ये. एक्चुअली फ्यू मंथ्स बैक मई में आया था मेरे पास वो, और उसके हैंड में लेसरेशन था, 4 आर्म लेसरेशन था. देयर वाज ए स्मॉल कट, 4 आर्म में था, छोटा सा कट. तो देन आई आस्क्ड कि हाउ दिस हैपेंड. तो ही टोल्ड मी दैट देयर वाज ए नाइफ, दिस वाज एक्सीडेंटल कट वाइल सम कटिंग ऑफ फ्रूट. तो मैंने उससे पूछा कि तो मेरी थोड़ी सी बात हुई तो मुझे लगा कि ये शायद दिल्ली का नहीं है. एंड वाइल टॉकिंग ही वॉज वेरी एरोगेंट, एग्रेसिव, और बातें बता रहा था. इसके बाद उसने खुद बोला कि एक्चुअली यू नो आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम मुंबई. देन आई सेड ओके फाइन. देन व्हाई डिड यू मूव टू दिल्ली? देन ही सेड बिकॉज यू नो द IT सेक्टर ऑफ दिल्ली इज़ वेरी गुड एंड आई एम गेटिंग वेरी गुड सैलरी हियर, सो आई मूव टू दिल्ली. फिर मैंने स्टिचिंग किया और उसको जो है ट्रीटमेंट देकर उसको भेज दिया. और दो दिन पहले दिल्ली पुलिस उसको लेकर आई तो मैंने उसको पहचान लिया कि ये तो वही आफ्ताब है.
बट दैट टाइम ही वॉज वेरी एरोगेंट, वेरी एग्रेसिव इन नेचर। तो मैंने उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ वही लड़का है ये। फिर मैं बाद में देखा न्यूज़ में कि ऐसे ऐसे किया, इसने जो है क्राइम किया हुआ है। तो ये जो आपको आफ्ताब ने बताया था कि ये जो कट है एक सिंपल वुंड था, एक फ्रूट काटने से हुआ, कि आप एक डॉक्टर हैं, आपको देखने से वो वुंड कितना डीप था? क्या आपको लगा वो सही में एक फ्रूट कट की वजह से हुआ है? बिकॉज अगर वो फ्रूट काट रहा होगा, व्हाई वुड अ नाइफ कट कम ऑन हिज आर्म? वो आर्म पे क्यों आएगा उसके? या तो वो उसके फिंगर्स पे आएगा या तो वो उसके दूसरे पाम के फिंगर्स पे आएगा। आर्म में एक फ्रूट कट होना, डू यू थिंक ये उसका रीजन जो है वो सही था? वो थोड़ा उसका ये था, वुंड वाज वेरी सुपरफिशियल, बहुत ही माइनर कट था, इट वाज वेरी सुपरफिशियल वुंड। तो ऐसा लग रहा था कि यस नाइफ की कोई फ्रूट कट करते समय ऐसा हो सकता है। इट वाज वेरी सुपरफिशियल, इट वाज नॉट वेरी डीप। और फोर आर्म में था, इट वाज इन द फोर आर्म हियर। तो उस टाइम तो अभी बाद में मालूम पड़ा कि वो नाइफ को बैग में लिया और वो उसको पहन रहा था बैग को, देन ही गॉट द इंजरी एंड इट वाज एक्सीडेंटल इंजरी। तो लग तो रहा था नाइफ का है कट। आप ये भी कह रहे थे कि उसका जो नेचर है वो बहुत एग्रेसिव था जब आपसे वो मिला था 6 महीने पहले। क्या क्या चीज़ें हैं जिससे आपको लगा कि वो बहुत एग्रेसिव है, एरोगेंट है? क्या क्या उसके जो बातें थी, किस बात से आपको वो लगा? एक्चुअली बातें जो कर रहा था वो काफ़ी जो है लगातार बोल रहा था और मेरी बात को सुन भी नहीं रहा था वो, और काफ़ी लाउड बोल रहा था वो लग रहा था, उसका बिहेवियर देख लग रहा था कि इज़ वेरी एरोगेंट। पेशेंट के जाने के बाद इन्होंने हम लोगों से भी कहा कि आज एक पेशेंट आया था जो कि बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि हम बॉम्बे से हैं, और बहुत ज़्यादा वो बोल रहे थे, सुनने को कुछ तैयार नहीं थे, अपनी ही बोलती जा रहे थे। तो इन्होंने हम लोगों से भी बल्कि ये चर्चा की। तो हाँ, तो मैंने बताया मैम जो एक्चुअली दिल्ली का IT सेक्टर काफ़ी अच्छा डेवलप्ड है, तो सैलरी जो दिल्ली में है इट इज़ मच बेटर दैन इन मुंबई। वहाँ का IT सेक्टर डेवलप नहीं उतना है, दिल्ली का है, इसलिए वो दिल्ली आया हुआ है। लेकिन आज मालूम पड़ा कि वो क्राइम के लिए कैसे क्राइम किया है वो तो मालूम। आप डॉक्टर साहब के एसोसिएट लगती हैं। जब वो यहाँ पे आए थे उस टाइम पे, आफ्ताब जब आए थे, उन बातों में कभी उन्होंने श्रद्धा नाम की कोई लड़की का जिक्र कभी किया था? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, श्रद्धा नाम की किसी कोई कुछ जिक्र, बल्कि हमें ये लगा भी नहीं कि ये कुछ करके आए हुए हैं, इन्होंने कुछ ऐसा किया है। बल्कि और पेशेंट से वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, बहुत अच्छी तरह बातें कर रहे थे कि उनके जाने के बाद हम लोग उनकी चर्चा कर रहे थे कि पेशेंट कितना बोल रहे थे, कोई घबराहट नहीं, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा एकदम अच्छी तरह वो थे। हिंदी नहीं बोल रहा था। हाँ। वो लगातार सिर्फ इंग्लिश बोल रहा था, हिंदी एक शब्द नहीं बोला। तो और काफ़ी बोल्ड लग रहा था, वो बातचीत में लग रहा था काफ़ी बोल्ड है। सोच ही नहीं सकता कि वो ऐसा कुछ करके आए हुए हैं। आम पेशेंट से भी ज़्यादा उनके अंदर कॉन्फिडेंस था, बहुत अच्छी तरह बात करना। हाँ, इंग्लिश में ही कर रहे थे लगातार। बॉम्बे का बता रहे थे, हम बॉम्बे से हैं, ये है वो है। हाँ। लग रहा था कि मैं बॉम्बे से हूँ, मुंबई से हूँ, और उसके मन में थोड़ा ये भी था कि जो है बिल्कुल एक शब्द भी हिंदी नहीं बोल रहा था, सिर्फ इंग्लिश बातें कर रहा था और किसी को समझ में नहीं रहा था, जैसे ऐसे लग रहा था मुझे इसका बिहेवियर से, जैसे यहाँ किसी को समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। हाँ, इस तरह था। There you have the doctor who had operated a small wound of Aftab just after he collected the garbage bags. He's confirming to Republic that yes, Aftab did look very aggressive, very arrogant in nature. He was not willing to even listen to the doctor. So this raises several queries on as to how was his behavior with Shraddha. Was he also violent, and did he assault on Shraddha? His friends, Shraddha's friends, have been claiming to Republic that he used to hit and assault Shraddha. So these are the few dots that Republic has been joining. First, it was the garbage, the knife and the garbage shop owner who had confirmed that yes, Aftab did come. Now we have the doctor confirming to Republic exclusively that yes, Aftab did come here 6 months back, and not just did he come, he seemed. So you just heard that big exclusive. Remember our colleague Tanisha there in conversation with the doctor. His name is Dr. Anil Kumar Singh. Now, how and why is this doctor so very important for you, the viewer, and for all of us to understand who Aaftab is, the entire timeline, the very fact that there are some remains. He has actually been able to destroy a lot of evidence in the last 6 months. But in the month of May, he happens to go and see a doctor who noticed a laceration. Now, what is a laceration? It's a deep cut. It's a deep cut that you have on your skin. So he goes to a nearby doctor, who remembers Aaftab very, very clearly.
Now, this is a conversation again that gives you the best insight, in all the information that is available so far for us to understand what kind of a person was he. Now, how and why did you have Aaftab who injures himself? Did he injure himself after having chopped Shraddha into 35 pieces? Because he did get stitches on his... Yes, he did get stitches on his arm is what that doctor exactly said. And in fact, we are just going to get that doctor live here on Republic answering a lot more questions here. So do not go anywhere. Let's quickly recap once more what we've heard from the doctor. We are playing out that exclusive excerpt once more. The doctor who said, yes, I treated Aftab for a laceration in the month of May. करीब करीब बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस आई थी अक्यूज्ड आफ्ताब के साथ। क्या टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स था? वो लोग आए सुबह, उसके बाद क्या हुआ? दिल्ली पुलिस मेरे पास जब आई तो मैंने उसको आइडेंटिफाई किया कि आफ्ताब है ये। एक्चुअली फ्यू मंथ्स बैक मई में आया था मेरे पास वो, और उसके हैंड में लेसरेशन था, 4 आर्म लेसरेशन था। देयर वाज अ स्मॉल कट, 4 आर्म में था छोटा सा कट। तो देन आई आस्क्ड कि हाउ दिस हैपेंड। So he told me that there was a knife. This was accidental cut while some cutting of fruit. तो मैंने उससे पूछा कि तो मेरी थोड़ी सी बात हुई, तो मुझे लगा कि ये शायद दिल्ली का नहीं है। And while talking he was very arrogant, aggressive, और बातें बता रहा था। इसके बाद उसने खुद बोला कि actually I am not from Delhi, I am from Mumbai. Then I said okay fine. Then why did you move to Delhi? Then he said, because the IT sector of Delhi is very good and I am getting very good salary here, so I moved to Delhi. फिर मैंने स्टिचिंग किया और उसको जो है ट्रीटमेंट देकर उसको भेज दिया, और दो दिन पहले दिल्ली पुलिस उसको लेकर आई तो मैंने उसको पहचान लिया। All right, so let's in fact get that doctor. He is joining us live right now. This is Dr. Anil Kumar Singh. We see him live there. He's the doctor who treated Aftab. Now, it's very, very important for viewers to understand that why this interview, why what the doctor says is so very important. Because he's taking you back in the month of May, and this is the doctor that Aftab viewers went to. Anil Kumar ji, हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपने ये खबर कब देखी? आपको कब पता चला कि ये वही आफ्ताब है जिसको आपने मई के महीने में ट्रीट किया था? जब दिल्ली पुलिस आपके पास पहुंचती है, या उससे पहले आपने मीडिया में ये खबर देख ली थी और आपने आफ्ताब को पहचाना? एक्चुअली मैं 2 दिन पहले पुलिस आई इसको लेकर के, तो 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस मेहरौली थाने से आई थी और उसको लेकर आई, तो मैं उसको आइडेंटिफाई कर गया कि ये तो आफ्ताब है। और मई के मंथ में मैंने उसको स्टिचेस लगाए थे। तो उस टाइम पे मैंने देखा कि एक जो है एक यंग सा लड़का जो लेटा हुआ कैजुअल्टी में, एंड वो उसको छोटा सा लेसरेशन था एक्चुअली, राइट 4 आर्म में छोटा लेसरेशन था। मैंने उससे पूछा कि ये कैसे हुआ आपको? तो मुझसे बोला कि मैं फ्रूट कट कर रहा था और ये एक्सीडेंटली कट हो गया, छोटा सा कट लग गया है, फ्रूट कट कर रहा था। तो मैं एक्चुअली वो देखकर उसको लग नहीं रहा था कि ये कोई क्राइम करके मर्डर करके आया, क्योंकि वो काफ़ी बोल्ड लग रहा था। बातचीत में काफ़ी जो है ओवर कॉन्फिडेंट भी था, काफ़ी बोल्ड भी था, और थोड़ा एग्रेशन था उसके बातचीत करने में। ऐसा लग रहा था काफ़ी एग्रेसिव है, मतलब हमारी नहीं सुनेगा ये, खाली अपनी कह रहा है। तो मैंने स्टिचेस लगाया उसको। तो फिर इसके बाद वो बोलते बोलते खुद बोल रहा था, और हिंदी नहीं बोल रहा था, सिर्फ इंग्लिश बोल रहा था। तो मैं आई वॉज क्यूरियस कि क्यों, कहाँ का है ये, दिल्ली का है, कहीं बाहर से कहीं आया हुआ है। मुझे डाउट हुआ शायद बाहर का है ये। तो बात करते करते बोलता है कि मैं डॉक्टर एक्चुअली आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम मुंबई। तो मुझे लगा कि ये मुंबई से दिल्ली क्यों आया ये। मैंने पूछा उससे कि आप इधर क्यों आए दिल्ली में? तो उसने बोला कि ही सेड कि द IT सेक्टर ऑफ दिल्ली इज़ वेरी वेल डेवलप्ड, सो आई एम गेटिंग वेरी गुड सैलरी हियर, सो आई केम हियर। तो मैंने कहा चलो अच्छा है कि इधर अपना गुड़गांव का, दिल्ली का IT सेक्टर काफ़ी अच्छा है और लोग बॉम्बे से आ रहे हैं जॉब करने।
तो लेकिन वो काफ़ी उसका बिहेवियर थोड़ा सा काफ़ी अग्रेसिव था वो, मतलब ऐसा वो बैठ भी नहीं रहा था। काफ़ी पेशेंट भी थे उस टाइम, काफ़ी भीड़ भी थी, तो वो बैठ नहीं रहा था। और मैंने उसको प्रायोरिटी बेसिस पे उसको स्टेशन लगाया, ट्रीटमेंट दिया और उसको भेज दिया। और 2 दिन पहले जब पुलिस उसको लेकर आई तो मैं तो पहचान गया उसको कि ये तो आफ्ताब वही है, बॉम्बे वाला लड़का है ये। तो फिर बाद में दिल्ली पुलिस जो है मेरोली ब्रांच ने बताया कि सर इसने मर्डर किया हुआ है। तो मुझे लगा कि जिस दिन आया था शायद मर्डर करके आया होगा, उस दिन बता रहे थे वो डेट जो थी। और ये बिल्कुल उसको देखने से नहीं लग रहा था कि कोई नर्वस हो या उसकी बातचीत से लग रहा था कि इसकी कॉन्फिडेंस कम उसका हो रहा हो, बट ही वॉज ओवर कॉन्फिडेंट। और बस इतना था मैम, और कुछ तो इन्फॉर्मेशन नहीं मेरे पास। लेकिन मैंने मेरे वाइफ से बोला, मेरी वाइफ बैठी है बगल में, मैंने को बोला कि एक लड़का आया था और उसको इंजरी था ऐसा ऐसा, और वो बॉम्बे से आया हुआ था। एक्चुअली ये मेरी वाइफ भी बॉम्बे से हैं, माटुंगा से हैं ये जो है। तो मैंने उनको बताया कि लोग जो है बॉम्बे से दिल्ली जॉब करने आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ का IT सेक्टर काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छी सैलरी मिल रही है उनको। तो ये बातें वाइफ को मैंने बताई थी। जी, मेरी वाइफ रेखा सिंह जी। डॉक्टर सिंह साहब, एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं मैम के पास आऊँ इससे पहले इस पूरे वाक्य को मैम हूँ एपेक्स हॉस्पिटल की। जी बोलिए मैम, आप बताइए। जी बताइए। हाँ, MD हूँ। और वो पेशेंट इतना कॉन्फिडेंट था कि उसके जाने के बाद हम लोग सब उनकी चर्चाएं कर रहे थे, सब लोग बातें कर रहे थे कि इतना कॉन्फिडेंस हमने कट लगे पेशेंट का देखा नहीं था अभी तक। जब से हम हॉस्पिटल चला रहे हैं, किसी भी मतलब इंजरी वाले पेशेंट को इतनी बात करते, चेहरे पे इतना कॉन्फिडेंस, और किसी को अपने आगे कुछ ना समझना, खुद को ही सारा कुछ समझना, ऐसा पेशेंट हमने पहली बार देखा था। जो कि स्टिच लगवाने आया हो पर वही लगातार बोल रहा है और गजब का कॉन्फिडेंस उसके अंदर। उसके जाने के बाद हम लोग उसकी बातें कर रहे थे, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है किसी के अंदर? मर्डर करने के बाद भी कॉन्फिडेंस, मतलब हम लोग कोई शक नहीं कर सकते थे कि ये कुछ करके आए हुए हैं। बिल्कुल, और आम पेशेंट से ज्यादा कॉन्फिडेंस। और ये सिर्फ कोई नर्वस और डॉक्टर सिंह एंड मैम, दिस इज जस्ट नॉट अ मर्डर सर। आई मीन अगर आप आज उसकी डिटेल्स देखें जो पब्लिक डोमेन में आए हैं, नहीं था, कुछ नहीं। पूरा देश इस समय सख्ते में है। जी मैम, एवरीवन इज शॉक। डॉक्टर सिंह, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, आप ये कहते हैं कि मई के महीने में आफ्ताब आपके पास आया। अब जो आपके पास आता है सर, आप कहते हैं फोर आर्म पे ये कट था, ये लैसरेशन था। आप एज अ डॉक्टर मुझे ये बताइए कि कितना डीप था ये, मतलब किस तरह का ये पूरा कट था, आपको कितने स्टिचेस लगाने पड़े, वाज ही ब्लीडिंग? और आपका अस्पताल और आफ्ताब का जो घर है, क्या आपको उसके बीच की दूरी पता है सर? कितना समय लगा होगा इस डिस्टेंस को कवर करने में? एक्चुअली मैम, जो मालूम पड़ा कि हमारे पास में हमारे जो नियर बाय शॉप से उसने अपनी नाइफ ली थी और वो बैग में रख रहा था। इसके बाद जो है उसको इंजरी हुई, और इंजरी जो थी ये सुपरफिशियल थी, कोई डीप नहीं थी, सुपरफिशियल। यानी जस्ट लग रहा था जस्ट जैसे कि स्किन और आपका जो फैट दिख रहा था। कोई उसके अंदर कोई डीप इंजरी से मसल वगैरह है या डीप फेशिया वगैरह होती है, वो सब नहीं थी। जस्ट सिंपल इंजरी, जस्ट स्किन एंड फैट। एंड मैंने उसमें देखा भी था उसको, कोई डीप वुंड नहीं था, कोई मसल कट नहीं था। तो ऐसा लग रहा था कि ये एक्सीडेंटल हुआ है, यानी जो है कहीं से नाइफ लग गई फ्रूट काटते समय, या फिर जैसे हुआ बता रहा कि बैग में डाल रहा था उसको, और बैग जो उसने पहना तो उसको इंजरी हुई। तो ऐसा कोई डाउट नहीं हुआ, और जो कॉन्फिडेंस था उसको देख के कहीं नहीं लगा ये जो इंजरी थी सिंह साहब कि मर्डर करके आया हुआ, ये क्या किसी डोमेस्टिक नाइफ से हुई होगी? क्या ये डोमेस्टिक नाइफ था या कोई प्रोफेशनल नाइफ था? क्योंकि आज जब ये पूरे केस को आप देखते हैं, इसने श्रद्धा की बॉडी को 35 पीसेस में चॉप किया है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी बॉडी को इस तरह चॉप करता है, ऑब्वियसली किसी डोमेस्टिक नाइफ का उसमें इस्तेमाल नहीं किया गया होगा। तो क्या ये जो पूरा कट था जो आपने देखा और ट्रीट किया, क्या वो किसी डोमेस्टिक नाइफ का कट था? मैम एक्चुअली ये जो वुड था बिल्कुल क्लीन वुड था, जो कट था क्लीन था, यानी कोई उसमें कोई जैसे मार्जिन्स होती हैं, बड़ी क्लियर मार्जिन्स होती हैं, उसमें कोई रैग्ड मार्जिन नहीं होती कि कटने में जैसे होता है रैग्ड मार्जिन्स होती हैं, ऐसा नहीं, पर क्लीन था। इट वॉज वेरी क्लीन, और ऐसा लग रहा कोई शार्प वेपन जैसे नाइफ की तरह लगा था, कोई नाइफ यूज हुआ है। और लेकिन कोई ऐसा मार्जिन ऐसा नहीं था कि कोई रैग्ड मार्जिन्स होती हैं या कोई इरेगुलर मार्जिन्स होती हैं। तो सिंपल लग रहा था कि यस नाइफ से हुआ है बस। जी, और कहीं पर कोई चोट या कोई खरोच आपने नोटिस की हो? क्योंकि अभी
पुलिस ये भी नहीं पता लगा पाई है कि क्या किसी तरह का कोई ऑल्टरकेशन हुआ था आफ्ताब और श्रद्धा के बीच में। अब अभी बहुत सारे तार डॉक्टर सिंह जुड़ने बाकी हैं। ऐसे में अगर आपने उस मरीज को देखा है, आपने उसको आइडेंटिफाई किया है, आपने ये बताया कि वो लगातार इंग्लिश में बोल रहा था, बहुत रेस्टलेस लग रहा था, इम्पेशेंट था, और उसके बॉडी पर कहीं कोई खरोच, उसके कपड़ों पर आपने कुछ भी अलग सा नोटिस किया हो? नहीं, उसके और कोई इंजरी नहीं थी मैम, सिर्फ सिंगल इंजरी थी, वो लेसरेशन था। इसके अलावा कोई और भी कोई जैसे कोई कंट्यूजन या हेमेटोमा या कोई भी और कोई एब्रेजन वगैरह कहीं कुछ नहीं था। बस सिर्फ एक इंजरी थी, वो लेसरेशन था, क्लीन लेसरेटेड वुंड था, और वो लग रहा था नाइफ से हुआ है, मतलब कोई नाइफ से कट लग गया है। और जो बता रहा था मुझे कि कोई फ्रूट कट कर रहा था, सडनली लग गया मुझे, तो नाइफ से लग रहा था, क्लियर कट, और कोई इंजरी नहीं था। कोई और भी कोई ब्रूजेज वगैरह, एब्रेजन, हेमेटोमा या कंफ्यूजन और कुछ नहीं था, कोई ऐसा नहीं दिखा मुझे, कुछ भी नहीं था। और क्या कपड़ों पे किसी तरह के कोई निशान, आपने कुछ भी अनयूजुअल और सर उस दिन आफ्ताब के बारे में नोटिस किया था? और किस समय का वक्त होगा ये, मतलब सुबह का वक्त था, दोपहर का वक्त था, शाम का वक्त था, एग्जैक्टली आपको कुछ याद है? क्या अकेले आया था, उनके साथ कोई था, क्या पैदल वापस गया है? हाँ, नहीं, ये अकेले आया हुआ था, कोई साथ में इसका था नहीं, जो मैंने देखा इसको जो है, और अकेले आया था, अकेले चला गया था, और बाकी मेरे ज़्यादा से पूछताछ नहीं की। पर ये था कि हाँ, ये मालूम पड़ गया, वो खुद ही बताया उसने कि मैं बॉम्बे से आया हूँ, और बात करते करते जो है वो एक्चुअली हिंदी नहीं बोल रहा था, सिर्फ इंग्लिश बोल रहा था वो। तो बात करते करते मुझे डाउट हुआ, पता नहीं ये दिल्ली का है, बॉम्बे कहाँ का है, कहीं बाहर से आया हुआ है। तो उसने खुद ही बोला कि एक्चुअली आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम मुंबई। सो आई आस्क्ड कि व्हाई डिड यू मूव टू दिल्ली? तो उसने बोला कि आईटी सेक्टर काफ़ी अच्छा है, अच्छी सैलरी मिल रही, तो मैं यहाँ मूव कर गया हूँ। हमने कहा वेरी गुड। तो फिर वो बैठा भी नहीं, बहुत ही रेस्टलेस था, जैसे लग रहा कि पता नहीं रेस्टलेस था, जैसे वॉक कर रहा था, कॉरिडोर में वॉक कर रहा था वो। और फिर इसके मैंने उसको प्रायोरिटी बेसिस पे मेडिसिन लिखी और उसको मैंने फिर कट चले जाओ, ओके। जी, और क्या इसको वापस आना था आपके पास? क्या आपने इसको इस तरह की कोई दवाई या स्टिचेस अगर आपने लगाए थे, क्या वो स्टिचेस ऐसे थे जिसको खुलवाने के लिए उसको वापस अस्पताल में आना था? क्या वो आया वापस? हाँ मैम, 1 हफ्ते बाद आया था वो, आफ्टर 7 डेज 8 डेज बाद आया था वो, स्टेशन निकाले भी। 1 हफ्ते बाद वापस आता है आप ही के पास? बस स्टेशन, मैडम मुझे एग्जैक्टली मुझे याद नहीं कर पा रहा हूँ, पर मुझे लग रहा है शायद आया था वो, मतलब स्टिच निकलवाने के लिए आया था या हमारे स्टाफ ने निकाला होगा वो, मुझे लग रहा है आया था, ज़्यादा मुझे याद आ रहा है कि स्टिच निकालने के लिए आया था, शायद मैंने देखा भी था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। मैं एक्चुअली मैं मैडम इस एरिया में मैं अकेला सर्जन हूँ यहाँ पे छतरपुर में, तो ट्रॉमा केसेस काफ़ी आते हैं मेरे पास, और बहुत ज़्यादा आते हैं केसेस, तो एकदम से याद करना मुश्किल होता है, क्योंकि मैं डेली 4-5 कर जाता हूँ, मतलब लेसरेशन ट्रामा करता रहता हूँ, सर्जरी। तो सर किसी को कुछ याद है जब ये दूसरे टाइम भी आया था, क्या तब भी अकेला था, और तब इसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? कुछ भी आप लोगों को याद हो, आपने सुना हो, डिस्कस किया हो? मैम सेकेंड टाइम तो ज़्यादा बात नहीं कर पाए, क्योंकि पहली बार में काफ़ी बातें इससे हुई थी, और उस टाइम का मुझे अच्छी तरह याद है कि इसका जो है बिहेवियर, इसका जो है बात करने का तरीका, सब कुछ उस टाइम था, लग रहा था। लगाते समय हम लोग ज़्यादा समय तक एक दूसरे के साथ होते हैं। हाँ, उस टाइम पूछते हैं कैसे लगा, कहाँ से आया। में तो स्टाफ भी कर देता है या हम भी कर देते हैं, 1-2 मिनट का बस टाइम लगता है, ज़्यादा समय नहीं होता है। जी। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट सवाल है डॉक्टर सिंह, आप मुझे ये बताइए कि अगर ये एक नॉर्मल कट था, आप कह रहे हैं कि नॉर्मल कट था, बहुत डीप नहीं था, तो क्या ज़रूरी था कि आफ्ताब एक सर्जन के पास आए? मतलब क्या वो ऐसा वुंड नहीं था जो अपने आप ठीक हो जाता, या इतना डीप था कि उसको इस तरह के स्टिचेस की ज़रूरत थी? एक्चुअली मैम हीलिंग तो वैसे हो जाती है, अगर मान लें विदाउट स्टिच भी होती है हीलिंग हो जाती है, पर स्कारिंग रहती है, थोड़ा इसमें स्कार आता है, अगर स्टिच लगाता हूँ तो इसमें स्कार नहीं आती, तो वो अपने आप भी पट्टी कर सकता था, ड्रेसिंग कर लिया और वो हीलिंग हो जाती। पर वो आया था मेरे पास, तो मैंने देखा, हमने कहा बेटर कि मैं स्टिच लगा दूँ, कोई स्कारिंग ना हो आपको, और हीलिंग विल बी बेटर। तो वो एग्री कर गया था, और जब स्टिच लगाया तो उस टाइम बिल्कुल उसके अंदर कोई ऐसा नहीं, कोई उफ भी बोला कोई उसको पेन नहीं हुआ, बिल्कुल पेनलेस, उसे लग रहा कोई पेन उसको महसूस नहीं हो रहा है, वो काफ़ी बोल्ड आदमी है।
कोई मतलब कोई शोर शराबा भी नहीं कर रहा है कि डॉक्टर साहब को दर्द हो रहा है, कुछ चीख रहा हो, ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल पेनलेस, कोई पेन उसको नहीं हुआ, बिल्कुल आराम से था, कंफर्टेबल। अच्छा, और डॉक्टर सिंह साहब, कई बार क्या होता है कि आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपके कुछ वाइटल्स चेक करते हैं, जिसमें आपका ब्लड प्रेशर और बाकी कुछ चीज़ें, आपकी पल्स रेट चेक की जाती है। आमतौर पे साइकोलॉजी में ये कहा जाता है कि ये इंडिकेटर्स होते हैं कि इफ़ यू हैव कमिटेड अ क्राइम, तो कई बार यू सी एन अनयूजुअली हाई पल्स रेट, अ हायर ब्लड प्रेशर। क्या आपको याद है कि इसका ब्लड प्रेशर, इसका पल्स, कुछ भी और इसके वाइटल्स चेक हुए थे? क्या वो अबनॉर्मल थे? और मैं आपसे इसलिए सवाल पूछ रही हूँ सर, क्योंकि दिस क्राइम इज एक्सट्रीमली गोरी, दैट इज वाई सर। एक्चुअली मैम बस इसका ये था कि जो बिहेवियर था काफ़ी अग्रेसिव था और ओवर कॉन्फिडेंट। बातें कर रहा था तो लगातार बात करता जा रहा था, कुछ सुन नहीं रहा था, हमारी बात को भी नहीं सुन रहा था, और खुद बोलते बोलते बता भी रहा कि मैं बॉम्बे से आया हूँ और ये है, वैसा बोल रहा था, और कुछ किसी को समझ भी नहीं रहा था। बस जल्दी जल्दी करो, मेरे जाना है, हु इज़ द डॉक्टर, और काफ़ी अग्रेसिव बिहेवियर था। तो मैंने सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस को मैंने किया, उसको स्टिच किया और मेडिसिन लिखी, इसके बाद वो फिर चला गया फिर वो। लेकिन लग रहा था कि देखने से लग नहीं रहा था। अच्छा कि सर, कोई क्राइम करके आया हुआ है, मैम कुछ कहना चाहती है कोई जैसे कोई नर्वस हो। हाँ, कुछ देखने से मैम कुछ जैसे नर्वस नहीं लग रहा था। बिल्कुल नर्वस नहीं था, बिल्कुल भी आपको नहीं लगा कि किसी तरह डरा हुआ है या स्टिचेस के दौरान डर रहा है? सर ये स्टिचेस में क्या आप एनेस्थीसिया देते हैं? क्या एनेस्थीसिया में ये हुआ, या इस पर्सन ने बोला कि एनेस्थीसिया के बिना ये स्टिचेस लेंगे? मैम इसको लोकल एनेस्थीसिया दिया तो कोई पेन कंप्लेन नहीं किया कि मुझे पेन हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं, एकदम साइलेंट था वो। काफ़ी जैसे कि उसका एनर्जी लेवल काफ़ी हाई था और काफ़ी एनर्जेटिक लग रहा था, ओवर कॉन्फिडेंट। कोई पेन की कोई कंप्लेन नहीं किया कि मुझे पेन हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, डॉक्टर कुछ नहीं बोला। इस चीज़ लगाने के बाद जो है आराम से चला गया, यहाँ से फिर वॉक करके गया, और मुझे कोई डाउट भी नहीं हुआ कि ये मर्डर करके आया हुआ है। अच्छा, अब कोई डाउट नहीं था बिल्कुल कि इतना बड़ा क्राइम करके आदमी आया हुआ है। हाँ, यही मैं आपसे पूछना चाहती थी कि शायद अगर मर्डर के बाद सबसे पहले वो किसी के पास आया हो, शायद वो आप लोग ही हो। तो आमतौर पर व्यक्ति जब इस तरह का एक क्राइम कर आता है तो बहुत सारे आपके इमोशंस होते हैं, शायद आपकी बॉडी लैंग्वेज वो चीज़ इंडिकेट करती है। अब सर मुझे विस्तार से ये बताइए कि आप नॉर्मल किसी पेशेंट को ट्रीट करते हैं वर्सेस आपने आफ्ताब को ट्रीट किया, तो क्या फ़र्क लगा आफ्ताब में वर्सेस अ नॉर्मल पेशेंट? आपको क्या लगा कि कुछ गड़बड़ हो सकता है? अच्छा मैम, एक्चुअली देखने से उसका जो आई टू आई कॉन्टैक्ट था वो बिल्कुल सही था, बिल्कुल मेरी आंखों में देख रहा था, हमें भी देख रहा था, और उसको देख के नहीं लग रहा था कि ये कुछ डर रहा है, कुछ एंक्सस लग रहा है इसका, या बॉडी लैंग्वेज का अलग लग रही है, कुछ मतलब डरा सहमा लग रहा है मुझे। बिल्कुल मेरे आंखों में देख रहा था, आई टू आई कॉन्टैक्ट हमारा था उसका, और बात करने से एकदम फ्लुएंट था, मतलब फ्लुएंट था, बिल्कुल तेज़ी से बोलता जा रहा था और बिल्कुल नॉन स्टॉप बोल रहा था। तो कहीं से कोई डाउट नहीं लग रहा था कि ये इतना बड़ा क्राइम करके आया हुआ है, बल्कि आम पेशेंटों से ज़्यादा कॉन्फिडेंस था उसके अंदर, ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था, एकदम अलग लग रहा था वो कि उनके जाने के बाद हम लोग आपस में बातें कर रहे थे कि मतलब कितना इसके अंदर वो था कि ना कोई पेन होना, कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई। और खुद बता भी रहा मैं बॉम्बे से आया हूँ, मैंने पूछा भी नहीं कहाँ से हो, खुद बोलते बोलते कह रहा है कि मैं बॉम्बे से हूँ, और हिंदी बात कर रहा हूँ तो इंग्लिश बोल रहा है। तो मैंने इससे पूछा खुद बोला कि एक्चुअली यू नो आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम मुंबई। So I asked him why did you move to Delhi? Then he said because you know the IT sector of Delhi is very well developed and I am getting very good salary here, so I moved to Delhi. Okay fine, लेकिन ऐसा मैंने पूछा नहीं कि अकेले रहते हो या कोई आपके साथ ज़्यादा बात करो तो बुरा मान जाता है कि इतना सवाल क्यों कर रहे हो डॉक्टर आप मेरे से। तो ये मुझे नहीं लगा कि ये मैरिड है या कोई साथ लड़की कोई रहती है, क्या इसका है। हम ये पूछ भी नहीं सकते लोगों से, ज़्यादा पूछें तो बुरा मानते हैं कि आप इतना सवाल क्यों कर रहे हो, आप डॉक्टर हो, आप ट्रीट करो। तो ज़्यादा नहीं, लेकिन बातों में लग रहा था कि ये जो है कि लड़का नया है इस शहर में, यहाँ दिल्ली में। अच्छा, और डॉक्टर सिंह साहब जब ये आपके पास बैठा था कितना समय आपके पास ये बैठा होगा? क्या उस दौरान इसका कोई फ़ोन आया, इसने अपना फ़ोन चेक किया, या और कुछ आपने ऐसा इसकी और कोई मूवमेंट नोटिस की हो, या हर समय वो आप ही से बात कर रहा था?
हाँ मैडम, मेरे को जैसे मैं देख रहा हूँ आंखों में बिल्कुल आई टू आई कांटेक्ट था इसका, और बात करने से कहीं रुक नहीं रहा था, कहीं नर्वस हो रहा था, कुछ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फिडेंट। और फिर मैंने बोला अपने स्टाफ को, देखो ये लड़का बॉम्बे से आया हुआ है, दिल्ली जॉब, मैंने इसलिए बताया कि देखो बॉम्बे से आया है, दिल्ली आया जॉब करने के लिए, क्योंकि यहाँ का IT सेक्टर काफ़ी अच्छा है, उसको अच्छी सैलरी मिल रही है। अब देखो लोग बॉम्बे से दिल्ली भी आते हैं जॉब करने के लिए, मतलब ऐसा नहीं लोग कि मतलब मोस्टली लोग दिल्ली से बॉम्बे जाते हैं, पर काफ़ी लोग दिल्ली से बॉम्बे से दिल्ली आते हैं, और सिटी से भी, हैदराबाद से भी आते हैं, ताकि अच्छी सैलरी मिले यहाँ पे दिल्ली में। तो इस पर मैं बोल रहा था कि देखो ये लड़का आया हुआ है ये, लेकिन ये नहीं पता था कि ये इतना बड़ा न्यूज़ बनेगा और ये सब चीज़ें थी, तो बिल्कुल नहीं लगा था। मैं तो उसको बड़े पॉजिटिव ले रहा था, देखो ये लड़का जॉब करने आया है और अच्छी सैलरी इसको मिल रही है यहाँ पे दिल्ली में। और डॉक्टर सिंह, आपको याद है इसने पेमेंट कैसे की थी? क्या कैश था इसके पास, इसके वॉलेट में आपने या आपकी टीम में से किसी ने कुछ नोटिस किया हो, या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की थी? मैडम मोड ऑफ पेमेंट तो मुझे याद नहीं है, देखना पड़ेगा उसको। उसने जो है आई थिंक बहुत पुरानी बात, बहुत बड़ी पुरानी बात याद नहीं है, लेकिन पेमेंट किया था इसने, पेमेंट करके गया था। पेमेंट में कोई इसने कोई हमसे डिस्काउंट भी नहीं मांगा कि आप पैसे कम कर दो, कुछ भी बोला नहीं था, पर पेमेंट किया था इसने जो है। जी मैम। अच्छा, अब डॉक्टर सिंह साहब एक आखिरी सवाल, आप लोगों का हमने बहुत समय लिया, बट ये कॉन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी इस बातचीत से आई थिंक देश आफ्ताब और उसके पूरे बिहेवियर को एक अलग तरह से समझ पा रहा है। फर्स्ट हैंड अकाउंट सर आप आफ्ताब को लेकर दे पा रहे हैं। मुझे अब ये बताइए सर, वापस अगर हम मई के महीने में जाते हैं, जिस तरह का कट आफ्ताब के फोरआर्म पर, राइट फोरआर्म पर आपने देखा, अगर किसी व्यक्ति ने, अगर हम ये माने कि आफ्ताब आपके पास तब आया जब वो श्रद्धा का मर्डर कर चुका था, जब वो श्रद्धा को 35 पीसेस में बुचर कर चुका था, क्या ये उस तरह का वुंड भी हो सकता है या नहीं सर? मैडम ये एक्चुअली जो वुंड था जो है, मुझे लगता है कि ये जो नाइफ़ ख़रीदा है पास के दुकान से, मेरे बगल में है, तो वहाँ से नाइफ़ लेने के बाद जो इसने इसको बैग में रखा, और बैग वो पहन रहा था, उसको पीछे डाल रहा था, तो उस टाइम उसको इंजरी हुई है। क्योंकि इसके ऊपर अगर पीसेस में कट करता तो उसके ऊपर जो है कुछ उस पर स्पॉट्स आने चाहिए, ब्लड की स्टेन होनी चाहिए, और उसके हाथ पे कहीं कुछ होता, और बहुत चीज़ें होती हैं, दिखाई पड़ती कि हाँ कुछ दिख रहा है, ब्लड कहीं और भी दिख रहा है, कुछ इसके बॉडी में या फिर कहीं पे, तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा था बिल्कुल। मैंने देखा उसको अच्छी तरीके से, सिर्फ एक कट था, सिर्फ एक कट था और कुछ नहीं था। कोई एब्रेजन या कोई मारपीट, जैसे मारपीट हुई है तो उसमें एब्रेजन्स होती है, उसमें जो है स्क्रैचेज होते हैं, और कुछ कंट्यूजन वगैरह, हेमेटोमा वगैरह होता है, ऐसा बॉडी में से कुछ नहीं था, बिल्कुल बॉडी ठीक लग रही थी देखने से, उसके सिर्फ लेसरेशन था और कुछ नहीं था। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो नाइफ खरीदा है पास से, जी, और डॉक्टर सिंह साहब मैं जानती हूँ आपके पेशेंट्स वेट कर रहे हैं, बस मैं सिर्फ 30 सेकंड और लूंगी सर, 30 सेकंड और। जब ये व्यक्ति आपके पास आया सर, जब आफ्ताब आपके पास आया, कोई बैग या कुछ और सामान था इसके पास या खाली हाथ था? मैडम एक्चुअली मैम क्या होता है ना कि उस टाइम काफ़ी पेशेंट होते हैं, और लोग ना काफ़ी यहाँ पे शोर शराबा करते हैं, डॉक्टर साहब जल्दी करो। थोड़ा सा दिल्ली का आपको मालूम है कि यहाँ पेशेंट बिल्कुल ज़्यादा वेट नहीं करते, और थोड़ा सा लेट होने पे लोग लगते हैं करने की क्या बात है, इतना लेट क्यों हो रहा है, तो वो थोड़ा सा उस पर मैं नहीं कर पाया, पर उस पर फोकस पूरा था कि ये लड़का बॉम्बे से दिल्ली आया है और क्या करने आया, यहाँ पे आया है और क्या हुआ इसको, जो है थोड़ा मेरा फोकस उस पर था, उसको मैं देख रहा था बराबर। और देखने से मैम लग नहीं रहा था कि ये आदमी जो है ये क्राइम कर सकता है, क्योंकि देखने से लग रहा था ठीक ठाक, मतलब देखने भी ठीक था, और ऐसा लग नहीं रहा था कि ये मतलब कि कर सकता है, ये ठीक ठाक लग रहा था, अच्छे घर से लग रहा था, वो ठीक ठाक घर से है वो। जी मैम, थैंक यू मैम। जी थैंक यू मैम। एंड डॉक्टर अनिल कुमार सिंह सर, we thank you sir, we thank you for your time, and apologies we've kept you waiting, we've kept your patients waiting, but I think this is an interview that will give you a first hand insight into what Aaftab is all about. Did he see this doctor post the murder of Shraddha? What kind of an injury was this? The reason why the Delhi police, remember, has visited this doctor, the doctor has identified Aaftab. On the other side of this quick break, we continue with our non-stop rolling coverage on a story that continues to unravel by the moment, and a story that has shocked the entire country. After
आफ्ताब श्रद्धा को क्यों मारा? आफ्ताब श्रद्धा को क्यों मारा? आफ्ताब बता, देखो आफ्ताब दिख रहा है, देखो मुंह छिपा रहा है अपना, कुछ भी बोल नहीं रहा है, मुंह छिपा रहा है, अभी से पछतावा हो रहा है आफ्ताब को, लेकिन कुछ बोलने से बच रहा है। There are the protesters and the supporters of Jitendra Award who have blocked the road. Not only this, but also the tires that was burned in the roads of Mumbra, where the supporters and the workers of Jitendra Award, they have been present right outside the police station where the FIR that has been registered. FIR that has been registered against NCP leader Jitendra Award. He huddled the woman's shoulder and also said that why are you standing in the middle, just move ahead. After which she went to file a complaint in Mumbra police station. Where a molestation case has been filed against Jitendra Award, and his supporters resorted to violence as well. Priyank Kharge has now issued an open statement to all the BJP cadres there, stating that no matter what, we will not let any BJP leaders to set foot into the constituency. Here are the protesters who are getting very much violent, and they are clearly demanding to withdraw the case that has been registered against Jitendra Award. The wife of Jitendra Award, she is now entering Mumbra police station, and she has also clearly mentioned is a fake case. Aftab, the man who has brutally butchered Shraddha, was seen covering his face after that brutal act. I'm just reporting from the forest area where the body pieces of Shraddha, who was killed by her lover, Aaftab, was dumped. 18th May reportedly, Aaftab strangulated Shraddha to death, stored her body for few days, and later he reportedly cut her into 35 pieces, stored it in a carton box, dumped it in several parts of this large forest area of Maroli Chhatarpur Arabli forest. Where the fire has engulfed several houses. This fire blaze took place today early in the morning. District administration along with the Jammu and Kashmir police, they are trying to douse the fire. 155 kgs of drugs was seized by police in Punjab's Pathankot. मौके पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर ब्लास्ट किया गया था। इन पटरियों के नीचे अब जो अधिकारी जांच करते हुए नजर आ रहे हैं, हर छोटे बड़े पहलू पर जांच जो है वो चल रही है। And breaking news, what you are in fact now going to be looking at on your screens is a part of the reel that was posted by Shraddha from Himachal. Now this is dated somewhere in the month of April or March of 2022. This is Shraddha's only reel posted from Himachal. Remember, this is a trip that both Aftab and Shraddha took to the hills. And we are given to understand it's post this entire trip that they decided to come and settle in the national capital. So this is what Shraddha had posted, and this is again, like I said, in 2022, where she traveled to Himachal with Aaftab, and she says traveled 1500 kilometers for this. Security forces have busted a major plot of the terror groups to carry out a major terror strike within the Jammu city, and 2 IDs have been busted by the Jammu police. IT department is conducting search in Greater Kailash 2, which is in the national capital. Now, rupees 1 crore cash has been seized. First pictures of Aftab inside the prison in connection with the horrific murder that took place in the national capital.
FIR that has been registered against NCP leader Jitendra Awad. He huddled the woman's shoulder and also said that why are you standing in the middle, just move ahead. After which she went to file a complaint in Mumbra police station. Where a molestation case has been filed against Jitendra Awad, and his supporters resorted to violence as well. Kharge has now issued an open statement to all the BJP cadres there, stating that no matter what, we will not let any BJP leaders to set foot into the constituency. Here are the protesters who are getting very much violent, and they are clearly demanding to withdraw the case that has been registered against Jitendra Awad. The wife of Jitendra Awad, she is now entering Mumbra police station, and she has also clearly mentioned is a fake case. Aaftab, the man who has brutally butchered Shraddha, was seen covering his face after that brutal act. I'm just reporting from the forest area where the body pieces of Shraddha, who was killed by her lover, Aftab, was dumped. 18th May reportedly, Aftab strangulated Shraddha to death, stored her body for a few days, and later he reportedly cut her into 35 pieces, stored it in a carton box, dumped it in several parts of this large forest area of Maroli Chhatarpur Arabli forest. Where the fire has engulfed several houses. This fire blaze took place today early in the morning. District administration along with the Jammu and Kashmir police, they are trying to douse the fire. 155 kgs of drugs were seized by police in Punjab's Pathankot. मौके पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर ब्लास्ट किया गया था। इन पटरियों के नीचे अब जो अधिकारी जांच करते हुए नजर आ रहे हैं, हर छोटे बड़े पहलू पर जांच जो है वो चल रही है। There are the protesters and the supporters of Jitendra Awad who have blocked the road. Not only this, but also the tires that was burned in the roads of Mumbra, where the supporters and Welcome back. You're with us here on Republic, and this is our non-stop rolling coverage of the Shraddha murder case. Even as people want justice, right now we are piecing together what we know about the story so far. The man in question, the man who butchered Shraddha, was earlier taken to the crime scene, later brought back to the police station, and this is where Republic confronted him. Sit back and watch what happened. आप दूर रहे आप ठीक है आप दूर रहे हैं चलो कोई नहीं Here you can see that there is drama which is going on. ने जंगल के अंदर इन्वेस्टिगेशन पुलिस की टीम आफ्ताब को लेकर यहाँ पर थाने के अंदर जा रही है। ये देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आफ्ताब Here you can see that Aftab is being taken, and there are dramatic scenes that are being returned. The officials do not want to allow us to go, but there are people who are over here who is just saying, and we are just, this is the visuals which are being presented to you by my video journalist. And this is the now. We're heading into a break right now. When we come back, we'll also get you live coverage from the Prime Minister's big G20 visit. There are multiple bilaterals lined up on the sidelines of this summit. Amity has been ranked India's #1 not-for-profit private university for 10 years, with top 10 ranked institutions in management, engineering, biotech, law, masscom, telecom, hospitality, fashion and more. Yet another top ranking for Amity University. Here are the protesters who are getting very much violent, and they are clearly demanding to withdraw the case that has been registered against Jitendra Awad. The wife of Jitendra Awad, she is now entering Mumbra police station, and she has also clearly mentioned is a fake case. Aaftab, the man who has brutally butchered Shraddha, was seen covering his face after that brutal act.
I'm just reporting from the forest area where the body pieces of Shraddha, who was killed by her lover, Aaftab, was dumped. 18th May reportedly, Aaftab strangulated Shraddha to death, stored her body for few days, and later he reportedly cut her into 35 pieces, stored it in a carton box, dumped it in several parts of this large forest area of Mehrauli Chhatarpur Aravali forest. Where the fire has engulfed several houses. This fire blaze took place today early in the morning. District administration along with the Jammu and Kashmir वक्त तस्वीरों का है। So you were just looking at these live images. Remember right now coming in of the Prime Minister who's in Bali at the G20. He's trying his hands at that drum, but it's important that the Prime Minister right now is meeting with the diaspora. Do remember, meeting with the diaspora is a very, very important event as far as the Prime Minister goes. Remember, as a part of his itinerary, he does take out time to interact with the diaspora, and the diaspora is, as always, too eager to meet and greet the Prime Minister. He's been given a traditional welcome that you can see on your screens. He's going to be spending the next few hours in Bali. It's a jam-packed schedule for the Prime Minister. As India gets its place at the high table, and India is going to be, remember, chairing the presidency of this big G20, there are a lot of key issues that the Prime Minister is also going to be touching forward with the world leaders who are part of this G20. As the Prime Minister right now is interacting with the diaspora. Let's also see if we can get in Abhishek with us on the phone line for more insight into the Prime Minister's program in the day. इस वक्त कम्युनिटी इवेंट के लिए पहुंच चुके हैं बाली में, और ये तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। उनका स्वागत करने के लिए बाजे गाजे के साथ में घंटे की ध्वनि ये सुनाई पड़ रही है आपको, और प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत करने के लिए देखिए दो लोग देव स्वरूप वस्त्र धारण करके यहाँ पर खड़े हैं, और प्रधानमंत्री, ये तस्वीरें देखिए। प्रधानमंत्री ने स्वयं इस वाद्य यंत्र को बजाया, और उनके स्वागत में ये वाद्य यंत्र बजाए जा रहे थे, और प्रधानमंत्री ने स्वयं खुद उनके हाथ से ये लेकर के इस वाद्य यंत्र को बजाया। ये प्रवेश के साथ ही प्रधानमंत्री का ये जो जेस्चर था निश्चित तौर पर काबिल। As we head into a break right now, but on the other side, we'll get you more details and the highlights of the Prime Minister's day at the G20 summit. He, remember, right now is meeting with the diaspora. Amity has been ranked India's #1 not-for-profit private university for 10 years. With top 10 ranked institutions in management, engineering, biotech, law, masscom, telecom, hospitality, fashion and more. Yet another top ranking for Amity University. I'm just reporting from the forest area where the body pieces of Shraddha, who was killed by her lover, Aftab, was dumped. 18th May reportedly, Aftab strangulated Shraddha to death, stored her body for few days, and later he reportedly cut her into 35 pieces, stored it in a carton box, dumped it in several parts of this large forest area of Mehrauli Chhatarpur Aravali forest.
where the fire has engulfed several houses. This fire blaze took place today early in the morning. District administration along with the Jammu and Kashmir police, they are trying to douse the fire. 155 kgs of drugs were seized by police in Punjab's Pathankot. मौके पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर ब्लास्ट किया गया था। इन पटरियों के नीचे अब जो अधिकारी जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। हर छोटे बड़े पहलू पर जांच जो है वो चल रही है। There are the protesters and the supporters of Jitendra Award who have blocked the road. Not only this, but also the tires that was burned in the roads of Mumbra, where the supporters and the workers of Jitendra Award, they have been present right outside the police station where the FIR that has been registered. Fire that has been registered against NCP leader Jitendra Award. He huddled the woman's shoulder and also said that why are you standing in the middle, just move ahead. After which she went to file a complaint in Mumbra police station. Where a molestation case has been filed against Jitendra Award, and his supporters resorted to violence as well. Kharge has now issued an open statement to all the BJP cadres there, stating that no matter what, we will not let any BJP leaders to set foot into the constituency. Here are the protesters who are getting very much violent, and they are clearly demanding to withdraw the case that has been registered against Jitendra Award. The wife of Jitendra Award, she is now entering Mumbra police station, and she has also clearly mentioned it's a fake case. Aaftab, the man who has brutally butchered Shraddha, who is seen covering his face after that brutal act. I'm just reporting from the forest area where the body pieces of Shraddha, who was killed by her lover, Aftab, was dumped. 18th May reportedly, Aftab strangulated Shraddha to death, stored her body for few days, and later he reportedly cut her into 35 pieces, stored it in a carton box, dumped it in several parts of this large forest area of Maroli Chhatarpur Aravali forest. Where the fire has engulfed several houses. This fire blaze took place today early in the morning. District administration along with the Jammu and Kashmir police, they are trying to douse the fire. 155 kgs of drugs were seized by police in Punjab's Pathankot. Let's get you a quick check of our top stories right now. Aaftab was taken to the Maroli forest by the Delhi police for recreating the crime scene. The police right now, remember, is looking for Shraddha's dumped phone also, as her last location is also being traced. Prime Minister Modi and the British Prime Minister Rishi Sunak have been in conversation during the first day of the big G20 summit. This is a picture that you see on your screens that was also shared by the Prime Minister's office and the bilateral talks between the two. देखिए प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। उनका स्वागत करने के लिए बाजे गाजे के साथ में घंटे की ध्वनि ये सुनाई पड़ रही है आपको, और प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत करने के लिए देखिए दो लोग देव स्वरूप वस्त्र धारण करके यहाँ पर खड़े हैं, और प्रधानमंत्री, ये तस्वीरें देखिए। Where the fire has engulfed several houses. This fire blaze took place today early in the morning. District administration along with the Jammu and Kashmir police, they are trying to douse the fire. 155 kgs of drugs were seized by police in Punjab's Pathankot. मौके पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर ब्लास्ट किया गया था। इन पटरियों के नीचे अब जो अधिकारी जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। हर छोटे बड़े पहलू पर जांच जो है वो चल रही है। There are the protesters and the supporters of Jitendra Award who have blocked the road. Not only this, but also the tires that was burned in the roads of Mumbra, where the supporters and the workers of Jitendra Award, they have been present right outside the police station
where the FIR that has been registered. FIR that has been registered against NCP leader Jitendra Awad. He huddled the woman's shoulder and also said that why are you standing in the middle, just move ahead. After which she went to file a complaint in Mumbra police station. Where a molestation case has been filed against Jitendra Awad, and his supporters resorted to violence as well. Kharge has now issued an open statement to all the BJP cadres there, stating that no matter what, we will not let any BJP leaders to set foot into the constituency. Here are the protesters who are getting very much violent, and they are clearly demanding to withdraw the case that has been registered against Jitendra Awad. The wife of Jitendra Awad, she is now entering Mumbra police station, and she has also clearly mentioned it's a fake case. Aaftab, the man who has brutally butchered Shraddha, was seen covering his face after that brutal act. I'm just reporting from the forest area where the body pieces of Shraddha, who was killed by her lover, Aftab, was dumped. 18th May reportedly, Aftab strangulated Shraddha to death, stored her body for a few days, and later he reportedly cut her into 35 pieces, stored it in a carton box, dumped it in several parts of this large forest area of Maroli Chhatarpur Aravali forest. भाइयों और बहनों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी का इंडोनेशिया में रह रहे भारतीय, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी का इंडोनेशिया में रह रहे भारतीय और भारतीय मूल के लोगों की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। श्रीमान, आपने अपने अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर इस मुलाकात में हमारे साथ आए, इसके लिए हम आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, यहाँ हर कोई आपसे मिलने को उत्सुक है, क्योंकि हम सबको यहाँ मालूम है कि हाल में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास और विश्व में उसकी बढ़ती साख के पीछे आपके बनाए हुए दूरदर्शी नीतियों और उनके सफल कार्यान्वयन का कितना भाग रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस भारतीय समुदाय की बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन उसमें मैं एक का आपके सामने उल्लेख करना चाहूंगा। इंडोनेशिया में हमारा यह भारतीय समुदाय बहुत आदर और सम्मान से देखा जाता है, क्योंकि इंडोनेशिया में हर भारतीय एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला माध्यम माना जाता है। ये सारे लोग, हर आदमी जो यहाँ हैं, कुछ न कुछ स्थानीय नागरिकों को एम्प्लॉयमेंट प्रदान करते हैं। हम यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए जाने जाते हैं, न कि एम्प्लॉयमेंट खोजने के लिए। ये हमारे लिए एक बहुत गर्व का विषय है। हम सब ये समुदाय आपको सुनने के लिए बहुत बेताब हैं। हम सबसे पहले
दोनों देशों के राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होंगे। तत्पश्चात मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हम सबको संबोधित करें। धन्यवाद। नमस्ते, वणक्कम। आप सबको नमस्कार। इंडोनेशिया आने के बाद, बाली आने के बाद हर हिंदुस्तानी को एक अलग ही अनुभूति होती है, एक अलग ही एहसास होता है। और मैं भी वही वाइब्रेशंस फील कर रहा हूं। जिस जगह के साथ भारत का हजारों वर्षों का रिश्ता रहा हो और जिसके बारे में सुनते रहते हो कि हजारों साल में अनेक पीढ़ियां आई चली गई, लेकिन उस परंपरा को कभी
ओझल नहीं होने दिया। हजारों साल से उस परंपरा को जीना, पीढ़ी दर पीढ़ी उस परंपरा को जानना और हर पल उस परंपरा से जुड़े रहना, वहां के लोग, उस धरती एक अलग ही आनंद देती है, अलग ही आनंद की अनुभूति कराती है। आप कल्पना कर सकते हैं, आज जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, हम यहां बाली में बैठे हैं, बाली की परंपराओं के गीत गा रहे हैं। उसी समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसी पल बाली से 1,500 किलोमीटर दूर भारत के कटक शहर में महानदी के किनारे बाली यात्रा का महोत्सव चल रहा है, जिसे बाली यात्रा कहते हैं। और ये बाली यात्रा है क्या? ये महोत्सव भारत और इंडोनेशिया के बीच हजारों वर्षों के ट्रेड रिलेशंस को सेलिब्रेट करता है। इंडोनेशिया के लोग इस बार की बाली यात्रा के फोटो इंटरनेट पर देखेंगे तो उन्हें वाकई गर्व होगा, आनंद होगा, उत्साह से भर जाएंगे। और कई वर्षों बाद, बीच में कोरोना के कारण जो दिक्कतें आई, उसके कारण कुछ रुकावटें आई थी, और अब कई वर्षों बाद बाली यात्रा, ये महोत्सव उड़ीसा में बहुत ही बड़े स्केल पर भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ, लाखों लोगों की भागीदारी के साथ, मास पार्टिसिपेशन के साथ अभी मनाया जा रहा है। मुझे बताया गया कि वहां के लोग ये बाली यात्रा के स्मरण में एक स्पर्धा चला रहे हैं। कहते हैं कि कागज के नाव बना करके बहाए जाएंगे, और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड करने के मूड में है। इसका मतलब ये हुआ कि उड़ीसा में आज जो लोग इकट्ठा हुए हैं, उनका शरीर वहां है, लेकिन मन बाली में है, आप लोगों के बीच में है। साथियों, हम लोग अक्सर बातचीत में कहते हैं, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, ऐसा ही शब्द है, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को देखें तो ये शब्द नहीं है, ये हमें सच्चाई नजर आती है, सटीक बैठता है। समंदर की विशाल लहरों ने भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को लहरों की तरह ही उमंग से भरा है, जीवंत रखा है। कभी थकान महसूस नहीं हुई, वो लहरें जैसे चलती रहती हैं, हमारा नाता भी वैसा ही जीवंत रहता है। एक समय था जब कलिंग, मेदांग जैसे साम्राज्यों के माध्यम से भारत का दर्शन, भारत की संस्कृति इंडोनेशिया की धरती तक पहुंची। आज एक ये समय है जब भारत और इंडोनेशिया 21वीं सदी में विकास के लिए एक दूसरे के साथ
कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। इंडोनेशिया की जमीन ने भारत से आए हुए लोगों को प्यार से एक्सेप्ट किया, उन्हें अपने समाज में सम्मिलित किया। इसी वजह से आज आप सभी इंडोनेशिया के विकास और समृद्धि में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे बहुत सिंधी परिवार यहां रहते हैं और भारत से आए हुए हमारे सिंधी परिवार के भाई बहनों ने यहां के टेक्सटाइल सेक्टर में, स्पोर्ट्स गुड सेक्टर में, इतना ही नहीं फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में भी काफी कुछ कंट्रीब्यूट किया है। गुजरात से जुड़े हुए काफी लोग यहां हैं। जेम्स, डायमंड्स, माइंस, इवन खेती, किसानी, उसमें भी वो लोग नजर आते हैं। भारत से आए हुए इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, प्रोफेशनल्स इंडोनेशिया के विकास के सहयात्री बने हुए हैं। कितने ही तमिल भाषी कलाकार यहां की संस्कृति, यहां के आर्ट्स को और समृद्ध करने में अपना योगदान दे रहे हैं। मुझे याद है जब 3-4 साल पहले इंडोनेशिया के बप्पा नयोमान न्यू आर्टा जी को भारत ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। उस समय भारत का राष्ट्रपति भवन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता ही रहता था। उनकी बनाई कलाकृति गरुड़ विष्णु केनकाना का कोई शायद हिंदुस्तानी ऐसा नहीं होगा जो उसकी प्रशंसा न करता हो। ऐसे ही इंडोनेशिया के वायन दिव्या और आगुस इंदिरा उदयन जी, उनको जब पद्म सम्मान मिला था तो मुझे उनके बारे में काफी कुछ जानने का, निर्णय करने से बड़ा मुझे काफी कुछ उनके विषय में जानने का मौका मिला। आगुस इंदिरा उदयन जी, आप भली भांति परिचित हैं उनसे और आज यहां मौजूद भी हैं। वो बाली में महात्मा गांधी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। मैंने कहीं उनका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें वो कह रहे थे कि भारत की सबसे बड़ी विशेषता अतिथि देवो भव की है। यानी अतिथि देवो भव, ये भावना जो है ये हर भारतीय के रगों में है। अपनत्व का ये भाव प्रकट होता है। मुझे इंटरव्यू पढ़ के अच्छा लगा, लेकिन मुझे एक ही बात और भी बतानी चाहिए। अपनत्व के विषय में भारत की तारीफ हो रही होगी, लेकिन इंडोनेशिया के इंटरव्यू पढ़ के अच्छा लगा, लेकिन मुझे एक ही बात और भी बतानी चाहिए। अपनत्व के विषय में भारत की तारीफ हो रही होगी, लेकिन इंडोनेशिया के लोगों का भी अपनत्व कम नहीं है। जब मैं पिछली बार जकार्ता में आया था, इंडोनेशिया के लोगों ने जो स्नेह दिया, जो प्यार दिया, मैंने उसे करीब से देखा था, महसूस किया था। इतना मान, सम्मान, प्यार, स्नेह, अपनापन, क्या कुछ नहीं था। और मुझे याद है राष्ट्रपति जोको विडोडो जी के साथ पतंग उड़ाने में मुझे जो मजा आया था,
हम दोनों पतंग उड़ाने चले गए थे। वो अद्भुत था। और मेरी तो गुजरात में संक्रांति पर पतंग उड़ाने की बड़ी ट्रेनिंग रही है। और मुझे पता है यहां इंडोनेशिया में भी संक्रांति पर खूब पतंग उड़ाई जाती है। यहां पास में, और ऐसा नहीं है कि भारत और इंडोनेशिया का साथ सिर्फ सुख का है, आनंद का है, अच्छा है तब नाता है, ऐसा नहीं है। हम सुख दुख के साथी हैं। अगर सुख में साथी हैं तो हम दुख में भी उतने ही साथी हैं। हम सुख दुख में एक दूसरे के सुख दुख को बांटने वाले लोग हैं। जब 2018 में इंडोनेशिया में इतना बड़ा भूकंप आया तो भारत ने तुरंत ऑपरेशन समुद्र मैत्री शुरू किया था। इसलिए ही उस साल में जकार्ता आया था और तब मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था कि भारत और इंडोनेशिया में 90 नॉटिकल मील का फासला भले हो, लेकिन हकीकत तो ये है हम 90 नॉटिकल मील दूर नहीं है, हम 90 नॉटिकल मील पास है। साथियों, जीवन के पग पग पर, क्षण क्षण में ऐसा कितना कुछ है जिसे भारत और इंडोनेशिया ने मिलकर के अब तक सहज कर रखा है। बाली की ये भूमि महर्षि मार्कंडेय और महर्षि अगस्त्य के तप से पवित्र है। भारत में अगर हिमालय है तो बाली में आगुंग पर्वत है। भारत में अगर गंगा है तो बाली में तीर्था गंगा है। हम भी भारत में हर शुभ कार्य का श्री गणेश करते हैं। यहां भी श्री गणेश घर घर विराजमान है। सार्वजनिक स्थानों पर शुभता फैला रहे हैं। पूर्णिमा का व्रत, एकादशी की महिमा, त्रिकाल संध्या के जरिए सूर्य उपासना की परंपरा, मां सरस्वती के रूप में ज्ञान की आराधना, अनगिनत चीजें हम कह सकते हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें जोड़े रखती हैं, जोड़ती रहती हैं। बाली का जन जन महाभारत की गाथाओं के साथ बड़ा होता है। और मैं तो द्वारकाधीश भगवान कृष्ण की धरती गुजरात से यहां पला बड़ा हूं। मेरा तो जीवन वहीं बीता हुआ है। बाली के लोगों की जैसी आस्था महाभारत के लिए है, भारत में लोगों की वैसी आत्मीयता बाली के लोगों के लिए भी है। आप यहां पर भगवान विष्णु और भगवान राम की आराधना करते हैं, और हम जब भारत में भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर की नींव रखी जाती है तो इंडोनेशिया की रामायण परंपरा को भी गर्व से याद करते हैं। कुछ साल पहले जब भारत में रामायण फेस्टिवल का आयोजन हुआ था तो इंडोनेशिया के भी कई कलाकार, यहां से कई कलावृंद भारत आए थे, और अहमदाबाद में, हैदराबाद में, लखनऊ में, अनेक शहरों में वो अपना
कार्यक्रम करते करते वो अयोध्या आए थे। उनका आखिरी समापन कार्यक्रम अयोध्या में हुआ था और बहुत वाहवाही हुई थी। हिंदुस्तान में जहां गए अखबार भरे पड़े रहते थे। भाई और बहनों, बाली में ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसकी अभिलाषा नहीं होगी कि अपने जीवन में एक बार अयोध्या या द्वारिका के दर्शन न करे, ऐसा शायद कोई भी इंसान नहीं होगा। भारत में भी लोग प्रम्बानन मंदिर और गरुड़ विष्णु केनकाना की भव्य प्रतिमा के दर्शन करने के लिए बहुत ही इच्छुक रहते हैं। कोरोना काल से पहले एक साल में ही 5 लाख से ज्यादा भारतीयों का अकेले बाली आना ही इसकी गवाही देता है। साथियों, जब विरासत साझा होती है, जब मानवता के प्रति आस्था समान होती है, तो प्रगति के लिए भी समान रास्ते बनते जाते हैं। कुछ महीने पहले ही 15 अगस्त को भारत ने अपनी स्वतंत्रता के 75 साल पूरे किए हैं। इंडोनेशिया का इंडिपेंडेंस डे भारत के स्वतंत्रता दिवस के 2 दिन बाद 17 अगस्त को आता है, लेकिन इंडोनेशिया को भारत से 2 साल पहले स्वतंत्र होने का सौभाग्य मिला हुआ था। इंडोनेशिया से सीखने के लिए भारत के पास बहुत कुछ है और अपनी 75 वर्षों की विकास यात्रा से भारत के पास भी इंडोनेशिया को देने के लिए बहुत कुछ है। भारत का टैलेंट, भारत की टेक्नोलॉजी, भारत का इनोवेशन, भारत की इंडस्ट्री, आज इन सारी बातों ने दुनिया में अपनी एक पहचान बनाई है। आज विश्व की अनगिनत कंपनियां ऐसी हैं, कई बड़ी कंपनियां ऐसी हैं जिसके सीईओ भारतीय मूल के हैं। आज दुनिया में जितने यूनिकॉर्न बनते हैं ना, 10 में से 1 यूनिकॉर्न भारत का होता है। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। आज भारत डिजिटल लेन देन में दुनिया में नंबर 1 है। आज भारत ग्लोबल फिनटेक के मामले में दुनिया में नंबर 1 है। आज भारत आईटी बीपीएन के लिए आउटसोर्सिंग में दुनिया में नंबर 1 है। आज भारत स्मार्टफोन डेटा कंजम्पशन में दुनिया में नंबर 1 है। आज भारत कितनी ही दवाइयों की सप्लाई में, अनेकों वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में नंबर 1 है। साथियों, 2014 के पहले और 2014 के बाद के भारत में बहुत बड़ा फर्क जो है, वो जो बहुत बड़ा फर्क है वो मोदी नहीं है, वो बहुत बड़ा फर्क है स्पीड और स्केल में।
आज भारत अभूतपूर्व स्पीड पर काम कर रहा है और अप्रत्याशित स्केल पर काम कर रहा है। अब भारत छोटा सोचता ही नहीं है। स्टैच्यू बनाएगा तो दुनिया में सबसे बड़ा, स्टेडियम बनाएगा तो दुनिया में सबसे बड़ा। 2014 के बाद से भारत ने 320 मिलियन से अधिक बैंक अकाउंट खोले हैं, बैंक में खाते खोले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका की कुल जनसंख्या जितनी है उतने हमने बैंक खाते खोले हैं। दो 2014 के बाद से भारत ने करीब 3 करोड़ गरीब नागरिकों के लिए मुफ्त घर बनाए हैं। घर और घर ऐसे नहीं बनता है, जब घर मिल जाता है ना तो इंसान रातों रात लखपति बन जाता है। और जब मैं 3 करोड़ घर की बात करता हूं, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ऑस्ट्रेलिया के परिवार को नहीं, ऑस्ट्रेलिया के हर नागरिक को घर मिल जाए, इतने घर बनाए हैं। पिछले 7-8 साल में भारत ने 55,000 किलोमीटर 55,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए हैं। यानी स्केल बता रहा हूं मैं, पूरी धरती के लगभग 1.5 चक्कर लगाने के बराबर है। आज भारत आयुष्मान भारत योजना के तहत जितने लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दे रहा है, 5 लाख रुपए तक अगर उसका मेडिकल बिल 1 साल का बनता है तो जिम्मा सरकार उठाती है। इसका बेनिफिट कितना लोगों को मिलता है? 5 लाख रुपए तक की मेडिकल सुविधा जो मिलती है वो पूरे यूरोपियन यूनियन की कुल आबादी से ज्यादा लोगों को मिलती है। कोरोना काल में भारत ने जितनी वैक्सीन डोज अपने नागरिकों को लगाई और मुफ्त में लगाई, वो जो वैक्सीन डोज है ना, उसकी अगर मैं संख्या का हिसाब लगाऊं तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, उन दोनों की कुल आबादी जो है उससे 2.5 गुना ज्यादा डोज हमने हिंदुस्तान में लगाए। ये जब सुनते हैं तो आपका सीना चौड़ा होता है कि नहीं होता है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपका माथा ऊंचा होता है कि नहीं होता है? और इसलिए मैं कहता हूं कि भारत बदला है। साथियों, आज का भारत अपनी विरासत पर गर्व करते हुए, अपनी विरासत को समृद्ध करते हुए, जड़ों से जुड़े रह करके
आसमान छूने के लक्ष्य के साथ विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को लेकर के अब निकल पड़ा है। लेकिन भारत का ये लक्ष्य सिर्फ अपने लिए नहीं है, हम स्वार्थी लोग नहीं, हमारे संस्कार नहीं है। 21वीं सदी में आज विश्व की भारत से अपेक्षाएं हैं, जो आशाएं हैं, भारत उसे अपनी एक जिम्मेवारी समझता है, एक दायित्व के रूप में देखता है, और हम दुनिया की भलाई के लिए अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मक्कम है, संकल्पबद्ध है। आज अपने विकास के लिए भारत जब अमृत काल का रोडमैप तैयार करता है, तो उसमें दुनिया की आर्थिक राजनीतिक आकांक्षाओं का भी समावेश है। आज जब भारत आत्मनिर्भर भारत का विजन सामने रखता है, तो उसमें ग्लोबल गुड की भावना भी समाहित है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत ने वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड का मंत्र दिया है। वैश्विक स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए भारत ने वन अर्थ, वन हेल्थ इसका अभियान चलाया है। क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौती से निपटने के लिए, और जो आइलैंड कंट्रीज होते हैं उनके लिए तो भारत एक वरदान के रूप में काम कर रहा है। क्लाइमेट चेंज की जो मुसीबतें हैं उसको निपटने के लिए भारत ने विश्व को मिशन लाइफ का समाधान दिया है। मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। मिशन लाइफ यानी पृथ्वी के प्रत्येक नागरिक द्वारा ऐसी लाइफस्टाइल को आत्मसात करना जो पर्यावरण के अनुकूल हो, जो क्लाइमेट चेंज की चुनौती से हर पल निपटती हो। आज जब पूरा विश्व एनवायरमेंट फ्रेंडली और होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ आकर्षित हो रहा है, तो भारत का योग, हमारा आयुर्वेद, ये पूरी मानवता के लिए तोहफा है। और साथियों, जब आयुर्वेद की बात आई है तो मुझे भारत इंडोनेशिया के एक और जुड़ाव का ध्यान आ रहा है। मुझे याद है जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो गुजरात आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी और यहां की यूनिवर्सिटीज हिंदू इंडोनेशिया इसके बीच समझौता हुआ था। मुझे खुशी है कि इसके कुछ ही वर्ष बाद यहां की इस यूनिवर्सिटी में आयुर्वेद हॉस्पिटल की भी स्थापना हुई। साथियों, वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरे विश्व को एक परिवार मानने की भारत की यही भावना, यही संस्कार विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कोरोना काल में हमने देखा है भारत ने दवाइयों से लेकर वैक्सीन तक जरूरी संसाधनों के लिए आत्मनिर्भरता हासिल की और उसका लाभ पूरी दुनिया को मिला। भारत की सामर्थ्य ने कितने ही देशों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम किया। इंडोनेशिया जैसे हमारे पड़ोसी और मित्र देशों के लिए हम विशेष रूप से कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। इसी तरह आज भारत
अंतरिक्ष में, स्पेस के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, तो उसका लाभ साउथ एशियन देशों को विशेष रूप से मिल रहा है। रक्षा के क्षेत्र में भी जो भारत दशकों तक केवल विदेशी आयात पर निर्भर था, वो आज अपनी क्षमताएं बढ़ा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल हो या तेजस फाइटर प्लेन, इनका आकर्षण विश्व में लगातार बढ़ रहा है। आज भारत बड़े लक्ष्य तय कर रहा है और उन्हें प्राप्त करने के लिए भी पूरी मेहनत कर रहा है। संकल्प से सिद्धि का यही मंत्र आज 21वीं सदी के नए भारत की प्रेरणा बना हुआ है। आज इस अवसर पर मैं आप सबको अगले प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए भी निमंत्रण देता हूं। जनवरी महीने में 9 जनवरी को यह कार्यक्रम होता है। इस बार यह आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में होगा और इंदौर वो नगर है जो पिछले 5-6 बार से देश में स्वच्छ शहर के नाम पर हिंदुस्तान में नंबर 1 रहता है। और इसलिए आप इंदौर के प्रवासी भारतीय कार्यक्रम में जरूर जुड़िए। अपने निजी काम से लिए आ रहे हैं तो भी तारीख उसके साथ एडजस्ट कीजिए। और जब आप इंदौर आएंगे तो उसके 1-2 दिन के बाद ही अहमदाबाद में काइट फेस्टिवल होता है। इंडोनेशिया वाले काइट फेस्टिवल में न जाए ऐसा हो सकता है क्या? और जब आप आए अकेले मत आना, सिर्फ अपने परिवार को ही लेकर के आकर के रुक मत जाना। कुछ इंडोनेशियन परिवारों को भी साथ ले आइए। मुझे विश्वास है भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को मजबूत करने में आपका सहयोग और सक्रिय योगदान निरंतर बना रहेगा। आप सब पूरी मेहनत से आपकी इस कर्मभूमि के कल्याण के लिए, आपकी इस कर्मभूमि में जितना ज्यादा योगदान दे सके देते ही रहेंगे। ये भारत के संस्कार है और देने भी चाहिए, ये हमारा दायित्व बनता है। और मैं देख रहा हूं हमारे बोहरा समाज के बहुत साथी यहां आए हैं और ये मेरा सौभाग्य रहा है कि सैयदना साहब के साथ मेरा बड़ा निकट संबंध रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, दुनिया में कहीं पर भी जाओ, कोई मिले या न मिले, मेरे बोहरा परिवार के लोग तो आएंगे ही। साथियों, आप इतनी बड़ी तादाद में यहां आए, समय निकाल करके आए और उमंग और उत्साह से भरे हुए हैं। और मैं देख रहा हूं कि उड़ीसा में बाली यात्रा में जितना उमंग है उतना ही उमंग यहां नजर आ रहा है मुझे। आपके इस प्यार के लिए, आपके इस स्नेह के लिए, भारत के प्रति आपकी ये श्रद्धा के लिए हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद साथियों।
So, Prime Minister Modi there addressing a community program in Bali and hailing the accomplishments of the Indian diaspora in Bali. Slipping into a very short break for now, but news breaks to continue on the other side of this very short break. And more leads and updates on the probe into Shraddha's murder as chorus grows for justice. And horrific details emerge in Shraddha's murder. All those details coming up on the other side. There are the protesters and the supporters of Jitendra Award who have blocked the road. Not only this, but also the tires that was burned in the roads of Mumbra, where the supporters and the workers of Jitendra Award, they have been present right outside the police station where the FIR that has been registered. FIR that has been registered against NCP leader Jitendra Award. He huddled the woman's shoulder and also said that why are you standing in the middle, just move ahead. After which she went to file a complaint in Mumbra police station. Where a molestation case has been filed against Jitendra Award, and his supporters resorted to violence as well. Has now issued an open statement to all the BJP cadres there, stating that no matter what, we will not let any BJP leaders to set foot into the constituency. Here are the protesters who are getting very much violent, and they are clearly demanding to withdraw the case that has been registered against Jitendra Award. The wife of Jitendra Award, she is now entering Mumbra police station, and she has also clearly mentioned it's a fake case. Aaftab, the man who has brutally butchered Shraddha, was seen covering his face after that brutal act. I'm just reporting from the forest area where the body pieces of Shraddha, who was killed by her lover, Aftab, was dumped. 18th May reportedly, Aftab strangulated Shraddha to death, stored her body for a few days, and later he reportedly cut her into 35 pieces, stored it in a carton box, dumped it in several parts of this large forest area of Maroli Chhatarpur Aravali forest. Where the fire has engulfed several houses. This fire blaze took place today early in the morning. District administration along with the Jammu and Kashmir police, they are trying to douse the fire. 155 kgs of drugs were seized by police in Punjab's Pathankot. मौके पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर ब्लास्ट किया गया था। इन पटरियों के नीचे अब जो अधिकारी जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। हर छोटे बड़े पहलू पर जांच जो है वो चल रही है। There are the protesters and the supporters of Jitendra Award who have blocked. Earlier in the day, killer Aaftab was taken to Maroli forest by the Delhi police to recreate the crime. The police, meanwhile, is looking for Shraddha's dumped phone as the last location is being traced for retrieval. Prime Minister Modi and British Prime Minister Rishi Sunak in conversation during the first day of G20 summit in Bali, as pictures shared by PMO on bilateral talks between the two leaders. Meanwhile, the Enforcement Directorate has rejected Jharkhand Chief Minister Hemant Soren's request to prepone his questioning date to November 16th instead of November 17th, which was earlier fixed in the agency's second summon. And more shocking details emerge. Accused Aaftab used same app to date after killing. Amity has been ranked India's #1 not-for-profit private university for 10 years, with top 10 ranked institutions in management, engineering, biotech, law, masscom, telecom, hospitality, fashion and more. Yet another top ranking for Amity University.
FIR that has been registered against NCP leader Jitendra Awad. He huddled the woman's shoulder and also said that why are you standing in the middle, just move ahead. After which she went to file a complaint in Mumbra police station, where a molestation case has been filed against Jitendra Awad, and his supporters resorted to violence as well. Kharge has now issued an open statement to all the BJP cadres there, stating that no matter what, we will not let any BJP leaders to set foot into the constituency. Here are the protesters who are. Well, the update that is just coming in right now, that bail has been granted to actor Jacqueline Fernandez in the 200 crore scam. So a big relief of sorts coming in for actor Jacqueline Fernandez, who's been granted bail in the 200 crore scam. We'll go across to Piyush as well, who's been tracking all the latest on that. But this is a relief coming in for the actor, as it is in relation to the 200 crore scam, which is also linked to conman Sukesh Chandrasekhar. It's bail that's been granted, of course an anticipatory bail that's been granted to actor Jacqueline Fernandez in connection with the scam. This is of course after ED filed its charge sheet in this case, in which it made arguments including the gifts, the expensive gifts that were received by actor Jacqueline Fernandez by conman Sukesh Chandrasekhar. So the update coming in at this hour is that the court has granted an anticipatory bail to actor Jacqueline Fernandez. Alright, we try and connect with Piyush as well, who's tracking the latest on that, but it is a relief coming in for actor Jacqueline Fernandez. The case relates to the ED charge sheet in this case, in fact, that has details of the expensive gifts that were received by actor Jacqueline Fernandez by conman Sukesh Chandrasekhar, while Jacqueline has said that she has no idea about the criminal record of the conman Sukesh Chandrasekhar. But what we are given to understand is that several gifts, including Gucci bags and several other such expensive gifts, were received by the actor from conman Sukesh Chandrasekhar. So this relief that's been granted to actor in connection with the 200 crore scam. And we try and go across to Piyush as well, who will get us more details as to what were the ED's basic arguments in this case. Remember, ED in its charge sheet in this case has maintained that expensive gifts were received by actor Jacqueline Fernandez, and that her involvement and her links with conman Sukesh Chandrasekhar should be probed. Well, that was something that is being investigated by the Enforcement Directorate Agency, and this matter, of course, the court that was hearing has granted a relief and bail to the actor. And those are the first visuals also coming in right now of actor Jacqueline Fernandez arriving at the court. The court, we understand, has granted a bail to actor Jacqueline Fernandez. This is, of course, after that gift scandal that erupted in this whole 200 crore scam. Jacqueline has received several gifts from actor Jacqueline. We have Piyush is joining us, who's tracking all the latest on that. Piyush, that's a relief of sorts coming in for actor Jacqueline Fernandez, but help us understand what have been the basic arguments of the ED in this case against Jacqueline. Alright, we try and connect with Piyush. There seems to be a network problem there, but that's the update coming in. Remember, the actor has said that she has no involvement in this case of money laundering, which amounts to 200 crore case. The case, remember, made headlines because of the celebrity status of Jacqueline and the very fact that she received gifts from the conman. We have Sambhav also joining us, tracking all those updates from the court. Sambhav, help us understand what have been the arguments of the ED against actor Jacqueline Fernandez in this 200 crore scam.
Okay, so actor Jacqueline Fernandez has got a bail from Delhi's Patiala House Court, and in the last hearing, serious arguments were made by Enforcement Directorate, alleging that if she gets a bail, she would she would run away from the country. She is a flight risk. Among the other arguments made by Enforcement Directorate were that she can speak to other fellow people who are involved in the case and can hamper the investigation. And she is a flight risk, and bail must not be granted to actor Jacqueline Fernandez was a major argument made by the Enforcement Directorate inside the court. Apart from it, actor Jacqueline Fernandez's lawyer made the submission in front of the court that she will not leave the country without the permission of the court, and she will cooperate in the probe. To this, the court has seriously questioned the Enforcement Directorate that when you have all the, proofs, why haven't you arrested Jacqueline Fernandez at the first place? And to this, Enforcement Directorate said, we are requesting that the actor must not be given the bail. However, today, actor Jacqueline Fernandez got the bail from Delhi's Patiala House Court with 2 lakhs as a bail bond, and a submission made inside the court that she will not leave the court, she will not leave the country before the prior permission of the court. All right, Samar, thank you for those details. So, an update coming in that actor Jacqueline has been granted bail. Remember, the ED in its charge sheet has maintained that actor Jacqueline was a beneficiary of the extorted money of conman Sukesh Chandrasekhar. We're slipping into a very short break for now, but news breaks to continue on the other side of this very short break. Here are the protesters who are getting very much violent, and they are clearly demanding to withdraw the case that has been registered against Jitendra Award. The wife of Jitendra Award, she is now entering Mumbra police station, and she has also clearly mentioned is a fake case. Aaftab, the man who has brutally butchered Shraddha, was seen covering his face after that brutal act. I'm just reporting from the forest area where the body pieces of Shraddha, who was killed by her lover Aftab, was dumped. 18th May reportedly, Aftab strangulated Shraddha to death, stored her body for few days, and later he reportedly cut her into 35 pieces, stored it in a carton box, dumped it in several parts of this large forest area of Maroli Chhatarpur Aravali forest. Where the fire has engulfed several houses. This fire blaze took place today early in the morning. District administration along with the Jammu and Kashmir police, they are trying to douse the fire. 155 kgs of drugs were seized by police in Punjab's Pathankot. मौके पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर ब्लास्ट किया गया था। इन पटरियों के नीचे अब जो अधिकारी जांच करते हुए नजर आ रहे हैं, हर छोटे बड़े पहलू पर जांच जो है वो चल रही है। There are the protesters and the supporters of Jitendra Award who have blocked the road. Not only this, but also the tires that was burned in the roads of Mumbra, where the supporters and the workers of Jitendra Award, they have been present right outside the police station where the FIR that has been registered. Fire that has been registered against NCP leader Jitendra Award. He huddled the woman's shoulder and also said that why are you standing in the middle, just move ahead. After which she went to file a complaint in Mumbra police station. Where a molestation case has been filed against Jitendra Award, and his supporters resorted to violence as well. Kharge has now issued an open statement to all the BJP cadres there, stating that no matter what, we will not let any BJP leaders to set foot into the constituency. Here are the protesters who are getting very much violent, and they are clearly demanding to withdraw the case that has been registered against Jitendra Award. The wife of Jitendra Award, she is now entering Mumbra police station, and she has also clearly mentioned is a fake case.
Aaftab, the man who has brutally butchered Shraddha, was seen covering his face after that brutal act. I'm just reporting from the forest area where the body pieces of Shraddha, who was killed by her lover, Aftab, was dumped. 18th May reportedly, Aftab strangulated Shraddha to death, stored her body for a few days, and later he reportedly cut her into 35 pieces, stored it in a carton box, dumped it in several parts of this large forest area of Maroli Chhatarpur Aravali forest. Where the fire has engulfed several houses. This fire blaze took place today early in the morning. District administration along with the Jammu and Kashmir police, they are trying to douse the fire. 155 kgs of drugs was seized by police in Punjab's Pathankot. मौके पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर ब्लास्ट किया गया था। इन पटरियों के नीचे अब जो अधिकारी जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। हर छोटे बड़े पहलू पर जांच जो है वो चल रही है। There are the protesters and the supporters of Jitendra Award who have blocked the road. Not only this, but also the tires that was burned in the roads of. 26-year-old Mumbai girl Shraddha murdered and cut into pieces. India's most grisly crime unravels in Delhi. Citizens demand justice for Shraddha. More horrific details emerge. Accused Aaftab used same app to date after killing. Delhi police recreated the crime scene. Aaftab was taken to Mehroli forest. There's massive anger over Shraddha's murder. Protests break out in Mumbai. Delhi's Patiala House Court to pronounce verdict on Jacqueline Fernandez's bail, where she has been granted bail in the 200 crore PMLA case. Prime Minister Modi attends the G20 summit. Multiple bilaterals lined up on the sidelines of G20. Very good afternoon and thank you for staying with Republic. You're watching the news at 4 p.m. I'm Suesha Sawant and a non-stop focus on the chilling details that are emerging in the Shraddha murder case as the investigation continues. Now remember, Aftab is in 5-day police custody. He's putting out details of how he committed the crime and many angles that are emerging on day 2 after this story first broke, and the Delhi police now looking into further details, catching on to more leads of who all was he in touch with, and also suspecting if there was an accomplice that Aftab had who helped him out to carry this crime. Now just the way in which he conducted this crime and also how he was completely nonchalant after killing Shraddha, cutting her body parts into 35 pieces. Details emerged of how he started dating other women through the same app, and he was behaving as if nothing had happened. Now, Republic is also on the investigation trail. We are trying to get in touch with as many people who could put out leads in this investigation, and earlier this afternoon, Republic spoke to the doctor who had treated Aftab. Now, when he met Aftab, he said that there were absolutely no signs of any nervousness or the fact that he may have committed a crime. It looked like a normal cut from a knife on his forearm, and he behaved unperturbed. Listen in to what he said. This is Dr. Anil Kumar Singh,
We see him live there. He's the doctor who treated Aaftab. Now, it's very, very important for viewers to understand that why this interview, why what the doctor says is so very important. Because he's taking you back in the month of May, and this is the doctor that Aaftab viewers went to. Anil Kumar ji, हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया. सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपने ये खबर कब देखी, आपको कब पता चला कि ये वही आफताब है जिसको आपने मई के महीने में ट्रीट किया था? जब दिल्ली पुलिस आपके पास पहुंचती है या उससे पहले आपने मीडिया में ये खबर देख ली थी और आपने आफताब को पहचाना? एक्चुअली मैं 2 दिन पहले पुलिस आई इसको लेकर के, तो 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस मेहरौली थाने से आई थी और उसको लेकर आई, तो मैं उसको आइडेंटिफाई कर गया कि ये तो आफताब है। और मई के मंथ में मैंने उसको स्टिचेस लगाए थे, तो उस टाइम पे मैंने देखा कि एक जो है एक यंग सा लड़का जो लेटा हुआ कैजुअल्टी में, एंड वो उसको छोटा सा लेसरेशन था एक्चुअली, राइट फोर आर्म में छोटा लेसरेशन था। मैंने उससे पूछा कि ये कैसे हुआ आपको, तो मुझसे बोला कि मैं फ्रूट कट कर रहा था और ये एक्सीडेंटली कट हो गया, छोटा सा कट लग गया है, फ्रूट कट कर रहा था। तो मैं एक्चुअली वो देखकर उसको लग नहीं रहा था कि ये कोई क्राइम करके मर्डर करके आया, क्योंकि वो काफ़ी बोल्ड लग रहा था। बातचीत में काफ़ी जो है ओवर कॉन्फिडेंट भी था, काफ़ी बोल्ड भी था और थोड़ा एग्रेशन था उसके बातचीत करने में। ऐसा लग रहा था काफ़ी एग्रेसिव है, मतलब हमारी नहीं सुनेगा ये, खाली अपनी कह रहा है। तो मैंने स्टेशन लगाया उसको, तो फिर इसके बाद वो बोलते बोलते खुद बोल रहा था और हिंदी नहीं बोल रहा था, सिर्फ इंग्लिश बोल रहा था। तो मैं आई वॉज क्यूरियस कि क्यों, कहाँ का है ये, दिल्ली का है, कहीं बाहर से कहीं आया हुआ है। मुझे डाउट हुआ शायद बाहर का है ये। तो बात करते करते बोलता है कि मैं डॉक्टर एक्चुअली आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम मुंबई। तो मुझे लगा कि ये मुंबई से दिल्ली क्यों आया ये। मैंने पूछा उससे कि आप इधर क्यों आए दिल्ली में, तो उसने बोला कि ही सेड कि द IT सेक्टर ऑफ दिल्ली इज़ वेरी वेल डेवलप्ड, सो आई एम गेटिंग वेरी गुड सैलरी हियर, सो आई केम हियर। तो मैंने कहा चलो अच्छा है कि इधर अपना गुड़गांव का दिल्ली का IT सेक्टर काफ़ी अच्छा है और लोग बॉम्बे से आ रहे हैं जॉब करने। तो लेकिन वो काफ़ी, उसका बिहेवियर थोड़ा सा काफ़ी अग्रेसिव था वो, मतलब ऐसा वो बैठ भी नहीं रहा था। पेशेंट भी थे उस टाइम, काफ़ी भीड़ भी थी, तो वो बैठ नहीं रहा था। और मैंने उसको प्रायोरिटी बेसिस पे उसको स्टेशन लगाया, ट्रीटमेंट दिया और उसको भेज दिया। और 2 दिन पहले जब पुलिस उसको लेकर आई तो मैं तो पहचान गया उसको कि ये तो आफताब वही है, बॉम्बे वाला लड़का है ये। तो फिर बाद में दिल्ली पुलिस जो है मेहरौली ब्रांच ने बताया कि सर इसने मर्डर किया हुआ है। तो मुझे लगा कि जिस दिन आया था शायद मर्डर करके आया होगा, उस दिन बता रहे थे वो डेट जो थी। And well, let's now understand that Aaftab is in police custody for the next 5 days, where he is being questioned and he's putting out details of the crime that he committed as the police is questioning him. Also, earlier this afternoon, he was taken to Mehroli Forest, where the police asked him to recreate the crime scene. Every night at 2 a.m. after he committed the crime, he would go to the Mehroli Forest in the dark of the night and dispose 1 to 2 body parts of Shraddha in the dense forest so that no one would know. Take a look at this report. आप दूर रहे हैं, आप ठीक है आप दूर रहे हैं, चलो कोई नहीं चलो। Here you can see that there is drama which is going on. ने जंगल के अंदर इन्वेस्टिगेशन, पुलिस की टीम आफताब को लेकर यहाँ पर थाने के अंदर जा रही है। ये देखिए तस्वीर में आप देख सकते हैं कि आफताब, Here you can see that Aftab is being taken and there are dramatic scenes that are being returned. The officials do not want to allow us to go, but there are people who are over here who is just saying, and we are just, this is the visuals which are being presented to you by my video journalist. And this is the dismembering her body, and now you can see the police पुलिस की टीम, मैंने कैमरामैन रवि पांड्या आपको देखिए आफताब की तस्वीरें आप लोग पाएंगे। आफताब इसी पुलिस की गाड़ी के अंदर बैठ करके यहाँ पहुंच रहा है। That Aaftab was a professional chef, and this is how he went on to dispose of the body parts after cutting it into 35 pieces. Our team has managed to get in touch with the meat cleaver
from where the shop, I beg your pardon, from where the meat cleaver was purchased, and this is what the man had to say. The cops came in the afternoon and they came with the accused, and the accused has confirmed the cops that he 5 months back he came and purchased some knives and garbage bags from the shop, and after he actually was hurt by the knife. So just next to us we have a hospital, so we recommended him to visit the hospital. So this as per him, he has confirmed the cops that he came 5 months back and he purchased some knives and garbage bags. So we don't actually remember, but because it's now been more than 5 months, so we actually came across so many customers in a routine time, so we don't remember that, but he told the cops that he came. So this incident dates back to day before yesterday. Could you or any of the workers who work here in the shop could recognize him or recognize a similar kind of face that had come like 4-5 months back to the same shop? See, I was not there at that time. My workers were there, and the worker who was, he left us 2 months back. He's not working with us. So there's nobody who confirmed that he visited, and we could not identify him. So when the cops asked him if this was the same shop that he bought the knife from, what was his exact words? He told the cops that he came 5 months back and from this shop he purchased knife and some garbage bags. Did he quote the number of knives that he purchased? No, he just purchased one knife as per him. And soon after that, he went to a hospital nearby for his treatment because we get to learn that he got hurt in his hand. Is that? Yes, that is correct. So there we have the shop's owner confirming that the accused Aftab did confirm to the cops that he purchased knife from this very shop. And the family really put out a red flag after a friend of Shraddha had gotten in touch with Shraddha's brother and said that her phone had been switched off for several weeks, after which the father got in touch with the police, filed a missing complaint, and the investigation started. Republic has managed to speak to one of Shraddha's friends who was also privy to the relationship and knew of the tension that was ongoing between Aaftab and Shraddha. This is what he has revealed. बताएंगे कि कब से जो है वो आप श्रद्धा के संपर्क में थे और श्रद्धा कैसी लड़की थी बेसिकली? श्रद्धा मेरी फ्रेंड है फॉर पास्ट 1 decade. हम लोग जूनियर कॉलेज में साथ में एक ही कॉलेज में हमारा एडमिशन हुआ था एंड सिंस देन वी वर फ्रेंड्स. एंड एज अ गर्ल शी वाज वेरी एम्बिशियस, very caring, a good person, good kind person from heart, always used to be there for her friends. And बस उसके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स थे, फॉर एग्जांपल फैमिली में उसको कभी तो देयर वाज नो यूनिटी इन द फैमिली, दैट फादर एंड मदर स्प्लिट हो गए थे एंड वो मदर भी उनकी डेथ हो गई कपल ऑफ इयर्स बैक. So she was alone for quite some time, and that is when she moved in with Aftab as well. Okay. So to summarize how what Shraddha is, she is a very good person, good by heart, kind person, caring, and very ambitious, career oriented as well. Okay. So how was her behavior like with friends and with the Aftab also, and when did Aftab came into her life? So with friends, she was a very happy, jolly person. She used to always, she was the person who will always have fun with us and, be a very jolly kind of person. Improve the complete lighting of the room when she enters the room. Okay. She's that kind of a person. And with Aftab, when I first met them together, Aftab was in relationship since 2019. I met Shraddha and Aftab for the first time after the first COVID lockdown, somewhere around 2020 August or I don't know the timeline exactly. But first time I met them as a couple was after the first lockdown of COVID. Okay,
Okay. So was she mentally like depressed or stressed after she lost her mother in COVID? She didn't lose her mother to COVID. She lost her mother during COVID to a heart ailment. Okay. Right. And before that, she was quite well. She had problems with, normal, everybody day-to-day problems, basic problems in life. Okay. But after mother, she lost the biggest support in her life. Like, अभी माँ के साथ उसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, so वो फिर उनके जाने के बाद टूट सी गई थी. And she had nowhere to go after that. Mom नहीं है तो dad से something थी उसकी, so she was like कि अभी मैं घर में रह के क्या करूँगी. And finally Aftab was also there in relationship, so they would to move together. So when her mom was alive, did she ever wanted to go back to her mom and live with her? I'm not sure about that, but I'm sure when her mom was alive, Aftab was in relationship and she did have problem back then as well. But I was not aware about Aftab that time because उसने मुझे 2020 में इंट्रोड्यूस कराया था and 2019 से ही उसको रिलेशन स्टार्ट हुआ. उसके 2-3 महीनों से ही उसने बोला था कि she is not that happy with this person. Okay. ये कभी when did she said that she is not happy? एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं पता है मुझे, बट वो मतलब स्टार्ट से ही वो लोग इतना ज्यादा मतलब उसका बंदा नहीं था. बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम लिव इन में आ गए, थोड़ा शायद से जमने लग गया था. बट एज फार एज आई नो, मेरी फर्स्ट मीटिंग में वो लोग का सब अच्छा ही दिखा. बट आफ्टर 1 year, that is 2021, I actually got to know what is the actual dynamics of the relationship. उसने मुझे जिक्र करके बताया था that things are not going good, and one day even she texted me saying that hey Lakshman, please come here and pick me up because if I stay back today, Aftab might kill her. Okay. So did you tried like connecting her back or like asking her to move back to Bombay? Right. So come back to Bombay. This is we were talking 2022, right? Yeah. So to continue with my last part that I mentioned, 2021 में जब उसने बोला मुझे टेक्स्ट करके कि मुझे बोला this that करके, उस टाइम पे मैंने me and some of friends, we went there and we removed her from our house, saying that Aftab, if you are hitting her like this is not justifiable. You are a very violent person and I'm going to take you to the authorities. And I took her away from that house for that night and made her stay somewhere else for a couple of days. This guy used to blackmail and do negative influence on her, saying that I'll commit suicide if you don't come. And I don't know, he had some weird grip on her, some weird influence on her, and that is why she, after a couple of days, even after knowing he's hitting her, she went back with him. And when did this happen? In 2021, you mean to say? July 2021. Okay. So, and बात आपने नेक्स्ट करी थी वो दिल्ली से मुंबई आने वाली थी या नहीं? So दिल्ली में जब थी, I spoke with her. उन्होंने यही बताया था कि उसका रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया है, आफ्ताब के साथ ऑलमोस्ट हो गया है. And secondly, she is going to find her own place very soon. When I last spoke to her, somewhere in middle of May somewhere. Okay. And वो ये भी बोली थी कि उसको अभी जॉब पे फोकस करना है, इंटरव्यूज उसके लाइंड अप है, तो वो उसकी रिगार्डिंग भी मेरे से बात करेगी. बिकॉज वी यूज्ड टू डिस्कस अबाउट जॉब्स एंड आई हैड टू हेल्प हर विद हाउ टू अपडेट योर रेज्यूमेस, हाउ शुड यू क्रैक इंटरव्यूज एक्सेट्रा. ओके. सो वो सब डिस्कशंस हमारे चल रहे थे एंड उसने सीधा मुझे कम्युनिकेट कर दिया था दैट आई एम ऑलमोस्ट ब्रोकन अप विद आफ्ताब. I am just trying to move out of the house now. I mean, not out of the house. She just mentioned कि मैं एक नया फ्लैट देख रही हूँ दिल्ली में. And I asked her, why are you staying in Delhi? So उसने यही बोला था
कि एट द मोमेंट मुझे मुंबई में ऑफिस नहीं आना है, वैसे में ऑफिस नहीं आना है, बिकॉज देयर आर हाई चांसेस आई माइट रन इनटू आफ्ताब अगेन, बिकॉज उनका प्लान था दिल्ली से ऑफिस आने का इधर. ओके. This is what she said. I don't know what the actual reality was, but this is what she said to me. I'm just saying what she had communicated to me. So you mean to say they were living separately in Delhi? That's what you mean to say? No. So कैसा है, देखो एक चीज मुझे कॉप से पता चली है और एक चीज जो उसने बताई है, तो वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपको समझ. तो मैं आपको उतना ही चीज बता रहा हूँ जितना उसने मुझे बताई. उसने मुझे यही बताई थी कि शी इज फाइंडिंग हर प्लेस, अ सेपरेट प्लेस इन दिल्ली टू स्टे. ओके. तो वो तब तक दिल्ली में कहा थी, आफ्ताब के साथ ही थी या आफ्ताब की अपार्ट थी, वो मुझे क्लियरिटी नहीं है. बट आफ्ताब की और इसकी किस बात को लेकर के झगड़ा होती थी ज्यादा, मतलब वो उनका बेसिकली नेचर ही कंफर्टेबल नहीं था एक दूसरे के लिए. फर्स्ट. सेकेंड, आफ्ताब हैड अ पर्टिकुलर वे ऑफ लिविंग. वो इतना मतलब क्लीनलीनेस पे इतना मतलब फोकस नहीं होता था, या फिर ऑर्गेनाइजिंग द रूम्स पे इतना फोकस नहीं रहता था. एंड श्रद्धा वाज अ वेरी क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड पर्सन. उसको सब एक जगह पे चाहिए. टिपिकल गाय एंड गर्ल वाला प्रॉब्लम. अगर रिलेशनशिप में आते तो आई वांट थिंग्स इन सर्टेन वे एंड ही डजंट वांट थिंग्स इन सर्टेन वे. फिर वहां से कॉन्फ्लिक्ट चालू हो जाती थी. उनका नेचर ही थोड़ा एक दूसरे के खिलाफ ही था, बट ऑपोजिट अट्रैक्ट बोल सकते हैं, वैसा हो गया था इनके केस में. एंड श्रद्धा कैसे उसके लाइफ में मदर भी नहीं थी. देयर वाज नो गुड लविंग पार्टनर इन अ लाइफ, एंड आउट ऑफ ऑप्शन नहीं था. वो देखती हूँ शायद से आफ्ताब के साथ इतने टाइम तक रही, इवन आफ्टर नोइंग हिटिंग कर फिजिकल वायलेंस करते हैं, उसके बाद भी उसके साथ रही, जस्ट बिकॉज दैट. एंड ऊपर से दैट पर्सन यूज्ड टू ब्लैकमेल हर हस्बैंड, सेइंग कि अगर तू नहीं आई तो मैं नस काट दूंगा, मैं मर जाऊंगा. रो के लिखा था फोन पे दिस दैट. इसके आफ्ताब के लाइफ में कोई दूसरी लड़की थी या कुछ था ऐसा? आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट मे बी आप अलग सोचने की वजह से पूछ सकते हो. देयर कैन बी. आई एम श्योर कोई ना कोई तो होगी. ये और श्रद्धा और किसी को भी पसंद करती थी? नहीं, श्रद्धा ने कभी किसी का जिक्र नहीं किया कि किसी और को पसंद करती. तो मेरे को एक और बात बताइए कि जब ये सारी चीजें हुई तो आपके इनके पिता ने कब संपर्क किया या आपने कब संपर्क किया इनके पिता को? ठीक है. सो मिड में मैंने उसके साथ बात करी थी, तभी लास्ट मुझे यही अपडेट आया था दैट शी इज मूविंग आउट. शी वांट्स टू बी इन टच विद मी. जस्ट उसने मुझे ये भी बोला था यू हैव अ रेगुलर चेक ऑन मी. मेरे से बीच में थोड़ा बात करना, मुझे जॉब के रिलेटेड थोड़ा हेल्प करना, मोटिवेट करना, गाइड करना. ये बातें हुई थी मेरी लास्ट उसके साथ. एंड उसके बाद मैं हर 2 दिन में कॉल करने को ट्राई करता था, व्हाट्सएप पे मैसेज डालता था. ना कॉल पे रिप्लाईज आते थे, ना व्हाट्सएप का कोई मैसेज उसको डिलीवर होता. सो आई स्टार्टेड रीचिंग आउट टू हर ओवर इंस्टाग्राम एज वेल. कुछ अपडेट नहीं आ रहा. सो आई वाज लाइक कि मे बी अभी इनका ब्रेकअप हो गया है, तो जस्ट टू काइंड ऑफ फील हरसेल्फ को थोड़ा भी आइसोलेट होना चाहती है, किसी के कांटेक्ट में नहीं आना चाहती है. ठीक है. So I checked for the month of June, I checked for the month of July as well. 2 महीना उसका कोई कांटेक्ट आया नहीं. तो I was little worried. तो मैंने अगस्त में दूसरों से बात करना चालू कर दी. कॉमन फ्रेंड्स के भी फ्रेंड्स, सबसे बात करना चालू किया. And understood lately nobody had spoken to her. Okay. ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी बात नहीं हुई है, ऐसा था कि किसी की भी बात नहीं हुई श्रद्धा की. ये टाइम पीरियड क्या था? ये अगस्त में जब मैंने सबसे बात करना चालू कर दिया था इन माय फ्रेंड सर्कल एंड इन माय फ्रेंड्स की भी फ्रेंड सर्कल. ओके राइट. और जब मुझे कोई रिस्पांस आया नहीं, सो फाइनली आई रीच्ड आउट टू श्रद्धा's लिटिल ब्रदर. एंड वो ब्रदर ने बुका एंड देन दैट फाइनली कंप्लेंट करने का सोचा दैट my daughter is missing and I need cops help to find her because she is not in contact with anyone. तो ऐसा इस दौरान कभी भी ऐसा लगा कि आफ्ताब ने आपको मैसेज किया हुआ उसके इंस्टाग्राम आईडी से?
कभी मैसेज नहीं किया. इनफैक्ट आई रीच्ड आउट टू हिम बिकॉज जब लास्ट 2021 में मैंने सुना कि आफ्ताब इज डेटिंग हर, उस दिन से मैंने आफ्ताब से बात करना ही बंद कर दिया था. So Aftab was the last person I will speak to if there is anything regarding Shraddha. Okay. So अगस्त में ऐसा हो गया, सारे फ्रेंड्स को पूछने के बाद कुछ अपडेट नहीं मिला. So आउट ऑफ ऑप्शन मैं आफ्ताब को फाइनली कॉल किया एंड आफ्ताब ने यही बताया कि वो ब्रेकअप करके चली गई यहाँ से एंड ही ऑल्सो हैज नो आइडिया वेयर शी वेंट एंड उसके ब्लॉक करके रखा. तो ये आपको ब्लॉक किसने किया? आफ्ताब ने ब्लॉक किया कि श्रद्धा ने ब्लॉक किया था? उसने ऐसा बोला था कि श्रद्धा ने आफ्ताब को ब्लॉक करके रखा है. अच्छा. So Aftab told you this that he's been blocked by Shraddha. Yes. And there is no way he can contact her and he will also try to reach out to a couple of friends to check वो किधर है क्या है. And he also mentioned he is also concerned, उसको भी वरी है कि किधर है पता नहीं करके. So I was like, ठीक है, if you get something you let me know. Meanwhile I am also searching and if I don't find anything then it's better I reach out to the parents and tell them to file a complaint. ऐसा मैंने आप सबको बता दिया. ठीक है लक्ष्मण, और कुछ आप शेयर कर पाएंगे अभी? मतलब जिस प्रकार की घटना हुई है, जैसे इतनी मतलब इट इज वेरी बार्बरिक द काइंड ऑफ. वेरी बार्बरिक. तो आप व्यक्तिगत रूप से हाउ तो मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि आफ्ताब जब हमारे सामने था तभी कुछ ऐसे रिवील नहीं करता था कि यू नो ही इज अब्यूसिव या इज इवन हैविंग टेम्परामेंट इश्यू. ऐसा कभी कुछ दिखाया नहीं उन्होंने उसने हमारे सामने. बट श्रद्धा से पता चलता था मुझे कि वो उसको मारता है ऐसा भी करता है. एंड वन टाइम जैसे मैंने आपको बोला जो जुलाई 2021 में उसने लिटरली मुझे एक बार मैसेज करके घर पे ही बुला लिया ये बोल के कि आफ्ताब इज हिटिंग मी एंड आई फियर फॉर माई लाइफ और आज रात को मैं अगर यहाँ रही तो ये मुझे मार डाले. अच्छा ये कभी की बात है ये? जुलाई 2021. अच्छा. एक मेरे को बात बताइए ना कि ये आफ्ताब जो है वो किसी प्रकार का नशा करता था क्या? ड्रग्स या किसी प्रकार के नशे में था? मैंने कभी उसको करते वक्त नहीं देखा है बट तो कर. श्रद्धा ने कुछ बताया हो? श्रद्धा नहीं बताया था, तो श्रद्धा से सुना है मैंने कि वो करता है करके. ड्रग्स करता है करके? वीड बोला था मुझे बट ड्रग्स भी कभी कभार किया रहेगा. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट एंड आइडियली मैं इस पे कमेंट भी नहीं करना चाहिए. अच्छा. तो मेरे को एक बात बताइए ना कि ये मतलब कभी ऐसा उसने कहा है कि लाइक ही इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइक एनी ड्रग्स और अल्कोहल एंड उसके बाद ऐसे मारपीट करता हो, ऐसा कुछ? नहीं, कभी नहीं. ऐसा शराब पी के मारता ऐसा कभी बोला ही नहीं, या नशे करके मारता ऐसा कभी बोला ही नहीं. सीधा यही बोला कि जब आर्ग्यूमेंट बढ़ जाता है तो वो वर्बली आर्ग्यू करना छोड़ के फिजिकल हो जाता है सीधा. एक मेरे को ये भी बताइए कि इस दौरान कभी भी उसके ऊपर मतलब रिलीजन चेंज करने का प्रेशर डाला गया था क्या आफ्ताब द्वारा? कभी ऐसा कुछ बोला था आफ्ताब ने कि लाइक? कभी नहीं, मैंने ऐसे कभी उसके मुंह से कभी नहीं सुना. अच्छा, तो मतलब वो जो लव जिहाद वाला लोग एंगल दे रहे हैं वो गलत है आपके हिसाब से बेसिकली? ओके. जहाँ तक मुद्दा है न्यूज में ऐसा भी बोला जा रहा है कि श्रद्धा वाज फोर्सिंग आफ्ताब टू गेट मैरिड. This is not the reality. In fact, Shraddha was trying to get rid of him. आफ्ताब श्रद्धा को क्यों मारा? आफ्ताब श्रद्धा को क्यों मारा? आफ्ताब बता, देखो आफ्ताब दिख रहा है, देखो मुंह छिपा रहा है अपना, कुछ भी बोल नहीं रहा है, मुंह छिपा रहा है. अभी से पछतावा हो रहा है आफ्ताब को, लेकिन कुछ बोलने से बच रहा है. I'm just reporting from the forest area where the body pieces of Shraddha, who was killed by her lover Aaftab, was dumped. 18th May reportedly, Aaftab strangulated Shraddha to death, stored her body for few days, and later he reportedly cut her into 35 pieces, stored it in a carton box, dumped it in several parts of this large forest area of Maroli Chhatarpur Aravali forest.
where the fire has engulfed several houses. This fire blaze took place today early in the morning. District administration along with the Jammu and Kashmir police, they are trying to douse the fire. 155 kgs of drugs were seized by police in Punjab's Pathankot. मौके पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर ब्लास्ट किया गया था। इन पटरियों के नीचे अब जो अधिकारी जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। हर छोटे बड़े पहलू पर जांच जो है वो चल रही है। There are the protesters and the supporters of Jitendra Award who have blocked the road. Not only this, but also the tires that was burned in the roads of Mumbra, where the supporters and the workers of Jitendra Award, they have been present right outside the police station where the FIR that has been registered. Fire that has been registered against NCP leader Jitendra Award. He huddled the woman's shoulder and also said that why are you standing in the middle, just move ahead. After which